because आज fire on the board is an understatement. Bhai, I am absolutely so excited for this specific matchup क्योंकि Magnus ने काफी बार कहा है कि Prag is the player that जिसको उन the player who affects him like in some way. I don't know if that's like the right way to say it. So just based on that, I think it'll be a very 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 fun match. Bilkul bhai and Sahaj, we are all set for this epic matchup. You can see Magnus Carlsen in his suit, Prag in his suit, setting up, adjusting their pieces. What a crucial match here for Praggnanandhaa. It's a chance to create history. कल उन्होंने Ding से classical में draw किया. That would have increased his rating a little bit. But tie breaks में he couldn't make it and he lost the game. But today, Sahaj, he has the white pieces. आज सफेद कलर उनके हाथ में है. क्या कर पाएंगे आज वो सहज? अगर को probability देनी होती of Prag victory, a draw या Carlsen in the classical alone, क्या probability आप तीनों को देंगे? And welcome chat. I think it's a bit difficult to say, पर लेकिन यहाँ पे especially कल जो हमारे जो last 15 मिनट में हुआ ना, I feel like I'm doubting my abilities, but I really want to see a result here, and I think 1-0 would just be fantastic. This would be amazing. And chat, just because आपने मुझे ट्विटर पे टैग किया, it doesn't mean कि आपको मेंबरशिप मिलेगी. फर्स्ट बंदा कोई और होगा. So somebody else must have won in that case, and हमने मेंबरशिप दे दी है. You can see Prag drinking water already. Moves start with bottle khuli nahi. And we have liftoff in the game of Praggnanandhaa versus Magnus Carlsen. What an important match for the youngster to play the greatest of all time. And what would he play, Saj? Oh, we have e4 on the board. Oh, this is not the women's section. Let's go. Prag against Magnus. What first move will he choose, Saj? E4, D4, C4, anything? What do you think? मुझे लगता है 1e4. I think that's like the safest option that I can think of. आपको क्या लगता है? What are your thoughts? I think E4 bhai, E4, he has to go gung ho, and E4 on the board. He is not backing down, Sahaj. Sahil bhai, let's just dig a bit deeper also, and मुझे लगता है Italian. Sicilian defense. Oh. Sahaj, yesterday you said this. Top players don't play the Sicilian unless they're sure they want a very sharp game themselves. 1E4, 1C5. Sahaj, पानी की bottle खुल रही है और यहाँ पे बहुत, we're going to open a can of worms here of a crazy attack from both sides. क्या saying, a can of worms. I like that. And I think this could also be Prag's way of just deciding कि आगे क्या करना है, because already I feel like this is pretty obvious that he's a bit surprised with this. आपको लगता है कि maybe we will see some type of Sveshnikov, like Pelican type की position, या फिर are you expecting E6? E6 on the board, Sahaj. And let's stick to this camera angle for, let's say, the first 5-6 moves, and then we'll go to other games and also look at everything else. Kya camera angle hai yaar? Wah yaar. Yes, absolutely right. Sahil bhai, I'm thinking we're going to see Sicilian 4 knights maybe, yeah? What about knight f6, knight c3, knight c6? Wouldn't that be absolutely insane? Yeah. Totally possible. Totally possible. And we have the friend angle. Ye kaun sa board aa gaya? Can we go back to the Carlsen? Yes, thank you. And ye kya mast hai bhai. Oh, A6 on the board, Sahaj. What can you tell us about this? So this is known as Sicilian Khan. यहाँ पे definitely हमें air gambit use करनी होगी at some stage. Sahaj, ये तो already हमारी तरफ जा रहा है. कान का इस्तेमाल किया है भाई. हमारे weapon का इस्तेमाल हमारे खिलाफ. हम बदला लेके रहेंगे. We'll be back. असली कान गैम्बिट कार्लसन को पता नहीं है यार. तो आराम से वो आराम से हम यूज करेंगे, but I feel like this is Magnus taunting us, वो हम अपनी कान की गैम्बिट यूज करते हैं and he's using his own. And just to explain, just a bit about this position, यहाँ पे दो main options हैं white के पास. There is knight c3 and bishop d3. Of course, you can also play the move c4, which is more of this Maroczy structure कहते हैं इसको. I feel this is less played though, as in comparison to bishop d3 or knight c3. So that would be more expected. And bishop d3 on the board. Absolutely, Sahaj. And Maroczy bhai khatana structure hota, but I've not seen it recently too much, ये c4 वाला structure. And bishop d3 आपने खेला है. And Sahaj, based on your experience, यहाँ पे who has a more comfortable position? And looking at Carlsen, जिन्होंने कहा कि maybe Sahaj, by the way, very important, maybe Carlsen की secret का success भी कान ही है. That's why he's the GOAT. That's why he's the GOAT. Oh my God, क्या वो game में अपने कान लाते हैं? It is possible, Sahaj. It is possible. That might be secret. So we are going to see you in the next candidate, Sahaj, most likely.
Absolutely, absolutely. But you know, I don't remember ever seeing Magnus play Khan before. आपने कभी आपको कभी याद है क्या ये? I feel like I have to check this, but I don't Hmm. remember Magnus ever playing the Sicilian Khan before. At least इस level पे मैंने मतलब बहुत rarely देखते हैं इसको. I can't remember if the last time I've seen a 2800 play Sicilian Khan, for example, like I in agree, a man. classical game, you know. I agree. It's not common. बहुत टाइम से खेला नहीं गया, but luckily for us, Prag ने immediately Bishop D3 खेल दिया है. That is the best part. He is not surprised by this. That to me is a very good sign. And Carlsen not at the board. Sahaj bhai, such an important question. अभी Carlsen मैगी खा रहे हैं कि पास्ता? I feel like it is pizza. It's neither. It's pizza. So I just checked. Actually, he has played Khan 17 times before. So it has happened before, but I don't think he has played it recently. I'm just doing a quick check of that as well. Yep. Niri bhai is Niri also bhai bhi saying kar that. raha hai. By chat, by the way, jaldi se ek baar sab log hi likh do bhai. We are all set for this crucial game of Praggnanandhaa versus Carlsen. Man, kya hi matchup. We know कि आज क्या तहलका मच सकता है if he defeats Carlsen in a classical game over the board. And Sahaj, maybe I'm mistaken, but Prag ने Carlsen को क्लासिकल गेम में ओवर द बोर्ड कभी नहीं हराया है. I think that is true. I think that is true. That is absolutely true. True. Also, I'm just checking, and जो last time जो इसने classical में खेला था, this was in some 2003 when Carlsen was 2279 rating. उसके बाद उन्होंने कान खेली है, but it was in blitz or rapid formats. The last time being against Saric Ivan, a grandmaster from Croatia, I believe, and in 2022, and that was some super bet event. या अनिल भाई, आई थिंक चेस कॉम इंडिया पे जो स्ट्रीम है वो दूसरी स्टार्ट हो गई है, तो प्लीज उसका वो थंबनेल चेंज करके उसी को स्टार्ट कर दे, पुरानी वाली अनलिस्ट कर दे, वो प्लीज चेंज कर दीजिएगा. चेस कॉम इंडिया में चक्कर है. सो चैट, वी आर ऑल सेट. प्रग वर्सेस जॉन सीना. भाई साज भाई, कार्लसन इज बैक. सो कितना टाइम यहाँ लेंगे कार्लसन, क्या लगता है, एज वी कैन स्लोली मूव टुवर्ड्स अ फुल बोर्ड? निरंजन भाई. I'm a bit hello क्या बात है साहिल भाई, अच्छे लग रहे हो. थैंक यू यार, पता है मैं I love this angle also, you know, हाँ ये जो ऊपर वाला ये जो कैमरा एंगल है ना प्रग और हाँ. मैग्नस का, I think it's beautiful. Also, good point that you asked, you know, कि why is Magnus thinking, क्योंकि A6 उनकी choice थी and Bishop D3 I believe is the most popular move. तो ऐसा हो या सकता है maybe he was expecting Maroczy या फिर Knight C3, you know, something like that, and Bishop D3 से वो थोड़ा surprise हो गए. बिल्कुल पॉसिबल तो है, या फिर आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज वो खाना थोड़ा डाइजेस्ट हो रहा है पेट में, यू नो, ही जस्ट एट समथिंग, केम बैक, सो थोड़ा टाइम लगता है. यू नो, कार्लसन हैज अ sensitive tummy, so hopefully he will quickly move. And Sahaj, from your perspective, यहाँ पे क्या लगता है, will we see a classical result or are we going into Armageddon? यार, because it's Sicilian Khan, I'm a bit, you know, ये बहुत aggressive line है, I would say. So, and you know, Bar always loves white here, you know, until move मतलब 15-20 तक ना the bar will love white. ऐसी जाती है हाँ मतलब, but it's not, it doesn't necessarily mean white is better, पर ये position हाँ. बहुत dynamic हो सकती है, तो I think we might just see a classical result. सहज भाई, मेरा ना हमेशा एक सवाल था, तो मैं ना नाइट ऑफ प्लेयर हूं, मैंने ये वाला सीजन बहुत कम खेला है लाइफ में. यूजुअली कहते हैं कि भाई क्वीन को गेम में जल्दी मत निकालो, भाई घर पे रखो, फिर ब्लैक अपना पहला पीस जो डेवलप करता है वो क्वीन C7 खेलता है, तो ऐसा क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि जो क्वीन C7 पे है, इट्स प्रोटेक्टिंग दिस E5 स्क्वायर. तो अगर ब्लैक को नाइट F6 खेलना है, तो ब्लैक को ये भी अवॉइड करना है कि व्हाइट E5 से रिस्पॉन्ड ना कर सके. एक्चुअली नाइट F6 आप डायरेक्टली भी खेल सकते थे क्योंकि E5 वहां पे पॉसिबल नहीं था. इफ वी कैन जस्ट गो बैक फॉर अ सेकंड, या जैसे नाइट F6 अगर यहाँ पे खेला तो E5 पे क्वीन F5 चेक है. बट लेट्स से या इफ आई, yeah, you just pick up the pawn, and यहाँ पे if I just castle, yeah, if I play knight C3, now queen C7 would be quite logical, and we would be in mainstream theory. तो queen C7 के साथ I think वो he's just planning for knight F6 या knight C6 to stop E5. But generally you are right कि queen को कभी ऐसे बाहर निकालना सही नहीं होता, but right now it's more for, you know, this direct tactical purpose. एंड दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट यार. E5 वुड बी devastating फॉर ब्लैक अगर सही टाइम पे टाइम किया जाए. एंड साहज, यहाँ पे प्रग हम देख रहे हैं, ही इज ऑल्सो थिंकिंग. डू यू थिंक कि प्रग
मैग्नस इफेक्ट का शिकार होने के चांसेस है. वी ऑल नो कैसे सबका लेवल 50 पॉइंट कम हो जाता है कार्लसन के साथ. डू यू थिंक कि प्रग इज द वन गाय हु नेवर फेल्ट द मैग्नस इफेक्ट, एटलीस्ट नॉट इन रीसेंट ईयर्स, लास्ट 2-3 इयर्स? क्या ओवर द बोर्ड क्लासिकल में वो फील करेंगे यहाँ पे मैग्नस इफेक्ट? Pressure against Magnus, you mean? या I doubt it, yeah. I mean, there is definitely some pressure, something he feels against Prague. ये सबको मालूम है, but अगर इतना फर्क पड़ रहा होता तो I wouldn't expect him to play Sicilian Khan. I feel like he's ready ट्रू. for a dynamic battle. नहीं तो वो इस तरह की ओपनिंग नहीं चूज करते. तो आई हैव अ फीलिंग कि अगर वो अफेक्ट करता भी होगा तो ही इज रेडी टू फेस इट. या That's why I think it's a very very good match. Sahil bhai, maybe we should also look at some of the other games just to see कि क्या हो रहा है. एब्सोल्युटली. एंड एक बार दोनों बाकी तीनों गेम इनफैक्ट पे देख के आएंगे. सो एक बार जाएंगे हम कारुआना अगेंस्ट डिंग लिरन. दिस इज द पोजीशन. काफी हम 13 मूव्स डाउन है पोजीशन में ऑलरेडी. सीम्स काफी काफी सॉलिड फॉर ईदर साइड. ब्लैक के पास बिशप पेयर है बट डबल पॉन्स है. साज, व्हाट, हाउ वुड यू इवैल्यूएट दिस पोजीशन? आई थिंक दिस इज फ्रॉम इटालियन, जो हम लोग प्राग के गेम में एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. एंड ये पोजीशन काफी बैलेंस्ड है. यूर राइट, ब्लैक हैज ऑप्टेड फॉर दिस A5 सेटअप इंस्टेड ऑफ A6, जो आई वुड से इज मोर ट्रेडिशनल. और उसके बाद ये क्वीन B8 क्वीन A7 वाला आइडिया आई थिंक हमें एक बार दिखा देना चाहिए. इट्स एम्प्लॉइंग द एलेखाइंस गन in the opening, जो हमने शायद कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता. And I would say the position is still pretty balanced. Black के पास double bishops हैं, white and black का pawn structure भी थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो there is some compensation and the position seems to be quite balanced in that way. आपको क्या लगता है? I agree, bhai. Agree. I think I've played this little bit as black, ये A5 structure, and I love this as black. So, Caruana, of course, after yesterday, he would need this victory. कल क्या ही upset हुआ था last में. That was crazy. कैसे फिरोजा ने comeback किया था. So, hoping कि Caruana यहाँ tough fight offer करेंगे Ding Liren world champion को. And सहज एक नजर मारेंगे हम Hikaru against Firouzja as well. And ये position है, अगर हम starting moves देखें, काफी solid. विदित गुजराती fan है फिरोजा जी. क्या बात है, ताराश बोर्ड पे. तो क्या लगता है कि फिरोजा कल की गेम के बाद कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है उनका? क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग लाइन ऑल्सो. जो 10 साल पहले ऐसा माना जाता था कि ये ओपनिंग बहुत खराब है ब्लैक के लिए, बट बिकॉज ऑफ AI, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर इंजन्स, इट बिकेम प्लेबल अगेन. तो इट्स अ नाइस ट्राई. आई थिंक इट विल बी एन एक्साइटिंग गेम फॉर श्योर. Yep, this will be interesting. अभी ओपनिंग मूव्स ही हुए हैं चैट. एक बार वुमेन सेक्शन पे नजर मार के आते हैं. वी हैव अन्ना मुजिक अगेंस्ट वैशाली हु वन अ स्पेक्टेकुलर गेम यस्टरडे. आई मीन कितना क्रेजी था वो गेम. एंड ये भी ओपनिंग फेज में है. साज, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस पोजीशन? आई थिंक ब्लैक ने अभी अभी ई टेक्स D4 मारा है, ट्राइंग टू ब्रेक द सेंटर. So I feel like this is some is this the same preparation जो हमने कल देखी थी with bishop C5? I remember. Okay, no, this is just a simple mauler. Simple mauler जहाँ पे black ने B5 नहीं खेला. तो already I think ये वैशाली की preparation है still. Oh yeah, if we look at the clock also, she has only spent about 1.5 minutes. Too early to say. I know बार कह रहा है कि white is better, but I'm 100% sure यहाँ पे वैशाली की preparation है. And I think she's gonna get into a good state. Nee, I'm thinking C takes D4, maybe something like H6 G5 also. Oh wow, that is Maybe incredibly it's a bit like aggressive. Maybe it's too much, wow. but why not? Wow, that will be crazy. Oh, bishop D4 आ रहा है actually. That would solve the issues. Exactly. Right. True. But okay, still very tricky. चैट, अभी हम सारा एक राउंड अप कर रहे हैं सारी गेम्स का. ओपनिंग में क्या लग रहा है? काफी डायनामिक ओपनिंग है यहाँ पे भी. एंड ऑल्सो हम्पी प्लेइंग अगेंस्ट टिंजीली. शी हैज व्हाइट. एंड कितना इंपॉर्टेंट गेम है उनके लिए आज, आफ्टर द अपसेट यस्टरडे. बिल्कुल. That must have been a devastating loss, क्योंकि she had a completely winning position. I mean, at least a slightly better position. वो शुरुआत से वही ट्राई कर रही थी. But I feel like maybe in time pressure, या फिर maybe I can say थकान even. I'm not sure. But like one or the other. I mean, it feels like it was a bad loss. Yeah, man, I can agree. After 5 hours of streaming, मेरी जो थकान होती है, तो खेलना तो is always even more difficult because you have to be on point. We can literally blunder a queen and laugh it off. I blundered a queen. It has happened to me so many times also. So many times. Yeah, man. So this is not easy.
एंड चैट हम जाएंगे वापस प्रग अगेंस्ट कार्लसन की गेम में. आई नो कुछ खेला नहीं उन्होंने, बट दिस इज सच अ क्रूशियल गेम. एंड कहीं ना कहीं पे यहाँ पे दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे होंगे. एंड अपडेट दी है हमें कि मैग्नस हैज प्लेड कान वर्सेस हिकारू in Speed Chess Championship 2022. That is the last he played this. And यहाँ पे castles by Pragg, which is the first preference of the engine. So Pragg पूरा prepared लग रहे हैं. And Sahaj यहाँ पे knight f6 is the most common move. And knight c6 also has been played. And yeah, I think Carlsen is going to stick to theory. Yeah. Maybe black can go knight f6. Oh, I think knight f6 is already on the board. I can see it. Oh, wow. Oh, yes, it is on the board. It is on the board. Yes, it is so on I the think board. maybe you can यहाँ पे अब हम ये नोट कर सकते हैं कि व्हाइट ने knight c3 नहीं खेला. इसका ये रीजन ये भी हो सकता है कि व्हाइट wants to play c4 फिर knight c3. Maybe he's deciding कि उस pawn को c2 पे रखना है जिससे वो normal सी कान आ जाती है, and then c4 के बाद it's a Maroczy bind type of a position. भाई नॉर्मल कान में हम विश्वास नहीं रखते यार, हमें तो कान स्पेशल चाहिए यार, वाइब्रेटिंग कान चाहिए, वरना कोई मजा ना है. उस नॉर्मल कान का क्या करना है, वो तो हर किसी के पास होता है यार. एंड यू कैन सी बाय द वे Pragg देयर अ बिट स्ट्रेस्ड आउट. मतलब इतना Pragg यूजुअली चिलैक्स होते हैं बहुत गेम में. हमने कैंडिडेट्स देखा बहुत चिलैक्स थे, ऐसे करके चेयर घूम रही थी, है ना. कल भी कितना देखा, उनकी कुर्सी तो रुकी ही नहीं. आज ही इज लाइक स्टेशनरी, एब्सोल्युटली स्टेशनरी. तो मतलब मे बी ही थिंक्स कि यार दिस इज एन इंपॉर्टेंट गेम एंड आज जीत जाऊं तो भाई इट विल बी अ लेगेसी जिसके बारे में लोग 5 साल बाद भी हम बात करेंगे. याद है Pragg ने हराया था कार्लसन को यार, जन कार्लसन उदास हो गया, फिर क्लासिकल खेलना छोड़ दिया उसने. जस्ट किडिंग, वी लव कार्लसन ऑफ कोर्स यार. हाँ राज भाई. But just discussing a bit more on the theory की बहुत interesting position, and I love that कि this is happening with these players, क्योंकि इस तरह की position हम usually expect करते हैं when it's 26-2700 players maximum. उससे ज़्यादा I don't think I've seen it. In fact अगर मैं इसे search भी करूँगा ना, I don't think I would see any 2800 playing this. So anyway, maybe we can show this idea. So white can also go for this plan queen e2. इसका आइडिया है कि व्हाइट वांट्स टू प्ले e5. अब अगर ब्लैक d6 खेलता है तो यहाँ पे बहुत अच्छा आइडिया मुझे याद है, यू प्ले c4. अब इसका आइडिया ये कि मैं b3 बिशप b2 और नाइट को d2 से निकालूंगा, एंड देन आई प्ले f4 e5. ये बहुत बढ़िया सेटअप था. एंड आई रिमेंबर लाइक जब भी मैं नेशनल्स खेलता था ना, like from 9 11 13 15 जितने भी खेला हूँ, I used to क्या बोला आपने? 9? memorize this. अच्छा ओके, सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, कुछ और सुना मैंने. सॉरी, आप बोलो आगे कंटिन्यू. मतलब 9 से लेके 15 तक I played like I think all of the nationals. उसमें I was always expecting like this type of a position. Like तो मैं इसको बहुत मतलब बार-बार मतलब memorize करता था. Yeah, man, this looks very harmonious. C4, B3, Bishop B2, Knight D2, not blocking the bishop would be very logical as well. यहाँ पे फिलहाल के लिए Pragg thinking कि भाई सहज भाई ने बोला है तो यार वही खेलना पड़ेगा उसको. सहज मुझे लग रहा है. I think it's possible. I think it's possible. Queen e2 होगा तो बहुत मजा आएगा. I feel like is that the most played move here? Let me just check actually. So यहाँ पे yeah, it is the most played move. Queen e2 has been played in almost 3,000 games out of like 4,000. So 75% record है भाई. Oh. By the way, chat. I get it. I see the chat. किसी को I get it. हाँ, किसी को मेंबरशिप नहीं मिली तो याद रखो कल का सवाल था कि कौन सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेके मुझे ट्विटर पे टैग करेगा. जो पहला बंदा टैग था उसको मेंबरशिप के लिए मैंने रिक्वेस्ट डाल दिया. अगर नहीं मिली है तो भाई मिल जाएगी आज ही के दिन में. डोंट स्ट्रेस आउट भाई, सही बंदे को मिल चुकी है मेंबरशिप. दैट इज द पॉइंट. एनीवेज, तो फिलहाल के लिए चैट बाय द वे नाइट के साथ Pragg now in deep thought. अभी भी सोच रहे कार्लसन भी बोर्ड से नहीं उठ रहे फाइनली. एंड वी ऑल नो कि कार्लसन ने एक बार क्लैप किया था Pragg के लिए, याद है? वो ऐसे करके थम्स अप दिया था Pragg को. सो ही हैज ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर Pragg. लाइक ही इज नॉट समबडी हु थिंक्स कि अगर Pragg को तो मैं हरा दूंगा, मजे आएंगे, ऐसा नहीं है. ही नोज कि Pragg बड़े खतरनाक प्लेयर है. बिल्कुल. And you can also see from his body language how much he is how seriously he's taking this match in specific. ये हमने पहले नहीं देखा, I think at least इस tournament में कभी नहीं देखा. This is quite a statement. Yeah. एंड ड्रॉ ऑप्शन इसलिए नहीं है चैट बिकॉज टूर्नामेंट फॉर्मेट ही ऐसा है. अगर यहाँ पे ड्रॉ होता है देन दे गो इनटू आर्मागेडन इमीडिएटली. यहाँ पे कोई ड्रॉ नहीं होगा. इफ अ प्लेयर विंस द क्लासिकल मैच दे गेट 3 पॉइंट्स, दे लूज दे गेट 0. अगर ड्रॉ होता है देन दे प्ले टाई ब्रेक्स इन एन आर्मागेडन.
विनर को 1.5, लूजर को 1. सो बेसिकली यहाँ पे देयर आर एब्सोल्युटली नो ड्रॉस. व्हेन द राउंड इज ओवर आइदर प्लग विंस और प्लग लूजेस. और जीत जाए चाहे क्लासिकल या आर्मेगेडन में, एट द एंड ट्वीट तो आना ही है. बाय द वे, क्वीन इनटू साज, बाय, सैल्यूट ऑन द बोर्ड. Oh, thank you. But yeah, I think ये तो normal था. But I would be really excited अगर वो C4 B3 वो वाला अगर setup हो ना, then I'll be very very excited because then it's a real game. I remember looking at those positions. बहुत बहुत dynamics, बहुत crazy sacrifices होते हैं उधर. So I'm quite excited to see D6 that. on the board is moving in that direction, Sahaj, so far. Come on, Prag C4, come on. साल भाई यूपीआई आईडी देख के सारे पैसे लो, पर इतना डैंक डैंक भाई, डैंक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डैंक? मैंने बैंक सुना है, डैंक क्या है साहब भाई? डू यू नो व्हाट डैंक मींस? ये जब मैं यूएस में रहता था ना, तो a lot of people used to use this word. It means like something which is very very good. It's like a US slang. इट इज गुड बिकॉज मैंने सर्च किया, इसका मतलब आ रहा है अनप्लेजेंटली मॉइस्ट और ह्यूमिड. ये क्या? नहीं, that's the dictionary term. This you आपको अर्बन डिक्शनरी में पढ़ो उसको. आई अच्छा थिंक अच्छा, ओके, वहां माय पे बैड. आएगा इसका नाम. अच्छा, ओके ओके. भाई डैंक भाई, भाई मैं अभी जर्मनी में, मेरा यूपीआई काम नहीं करता भाई, तो एनीवेज पैसे मैं ले नहीं सकता, तो दैट्स ऑल चिल. फिलहाल से बाय द वे, C4 ऑन द बोर्ड साहज. ही इज प्लेइंग योर चॉइस. साहज भाई, मुझे एक चीज समझ नहीं आती. इतना डेटा हमारे पास है, आप एक कंपाइलेशन बनाओ इस पूरे स्ट्रीम की, ठीक है, और हाँ. जाके भाई कार्लसन को या किसी को पिच कर दो ना, टॉप प्लेयर को, भाई देखो जो मैंने बोला है वो हो रहा है. आई कैन नॉट ओनली प्रिडिक्ट द ओपोनेंट्स ओपनिंग चॉइसेस, आई कैन लिटरली चेंज द कोर्स ऑफ द गेम बाय लिटरली मूविंग माय फ्लैपिंग माय ईयर्स. तो भाई जाके एक बनाओ कंपाइलेशन, भाई जिंदगी बन जाएगी भाई. बिल्कुल. I feel like that is definitely something in the cards. बिल्कुल. पर एक बार B3 बिशप B2 हो जाए. हाँ, ये तो है, ये तो है. पूरा डेटा चाहिए भाई, थोड़ा बहुत कोई कोई भी हमें गैप नहीं देना है. बाय द वे, नाइट D7 खेला ब्लैक ने. सहज, मैंने सुना है नाइट्स बिफोर बिशप्स, बट ब्लैक काफी सॉलिड है, बट ऑल्सो काफी पैसिव सा लग रहा है. ऐसे लग रहा है कि मतलब ऐसे मतलब अपनी खुल के नहीं खेल रहा है ब्लैक. हाँ, I mean, but this is normal, सिसिलियन कान के लिए. आपका आइडिया ये है कि आप बिशप E7 कासल, फिर उसके बाद वो बिशप भी जो आपका C8 पे बैठा हुआ है, वो B6 और B7 के थ्रू निकलेगा. तो जैसे आपने बिशप E7 कासल का एक एरो बना दो, और एक बिशप E7 और एक B6 बिशप B7 का. ये इसके बाद इस सेटअप को, ये हम चैट से पूछे क्या, इस सेटअप को क्या कहते हैं? इस सेटअप को क्या कहते हैं बताओ भाई, चैट क्या कहते हैं नहीं, सेटअप को भाई? अगर A6 B6 D6 E6 वाला हाँ सेटअप हाँ जो होता हाँ है, हाँ इसको क्या कहते हैं? भाई, इट इज लाइक, इज इट राइमिंग विद यू नो जिंजन? नहीं. अच्छा, वो नहीं It है क्या? ओ is. माय गॉड, मुझे भी नहीं पता फिर तो. It's like it's an animal. It's एनिमल? an animal. हाँ. इस उस एनिमल के ऊपर बेस्ड है ये स्ट्रक्चर. अच्छा, ओहो, कौन सा एनिमल है शायद, बताओ भाई. It's called the hedgehog structure. अच्छा, हेजहॉग. भाई शेवनिंग कौन सा होता है भाई? नहीं, अच्छा, वो शेवेनिंग E5 में वाला तो होता है. नहीं E5 नहीं, वाला होता है, हाँ. E6 पे होता है, पर उसमें B6 हाँ, बिशप E7 नहीं करोगे आप. अच्छा, ओके, गॉट इट गॉट इट Wait a गॉट इट. यार second. I can. काफी टाइम हो गया यार, 3 साल से चेस बोर्ड नहीं देखा भाई. अब तो नाम भी मुझे कंफ्यूज हो गया भाई. हेजहॉग कौन सा है और स्टोनवॉल कौन सा है भाई? स्टोनवॉल वही होता है ना भाई जिसमें H5 और A5 फेंकता है ब्लैक? वही होता है ना भाई? स्टोन नहीं, स्टोन वाले भाई क्या वही होता है ना भाई? है? हाँ भाई भाई, बोल दो हाँ यार, भाई क्या है, चाहे तो ठीक कंफ्यूज है, करेंगे यार. मान लिया. एक्चुअली वो A4 रुके 3 पे बोलते ना, वो कौन सा सेटअप है? अरे उसको उसको बोलते हैं रुक का दंगा. उसको कहते हैं टाइटल ट्यूसडे में 8.5 पॉइंट. Oh, by the way, knight comes to C3. Sahaj, oh no. Oh no, 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 no. यार आपका नाइट, प्लान गया यार. या सहाज B3 का बिशप साइड B2 कर बिजनेस दूंगा. का शुरू होते पहले खत्म हो गया भाई, बताओ. ही नहीं वाज ऑलवेज एक्चुअली, बेटिंग ऑन नाइट. हाँ, B3 बिशप B2 अभी भी हो सकता है. ट्रू, बट नाइट D2 पे आएगा. अच्छा, मे बी लंबी सोच है भाई. मे बी ये नाइट यहाँ पे कभी D2 आ जाए. हु नोस, आएगा हम्म आएगा. नहीं, मे बी मारोक्सी के सामने हेजॉग यूज करते हैं ना शायद. यस, बिल्कुल मारोक्सी के सामने यूज करते हैं हमेशा. बट सच पता है, मैंने स्ट्रक्चर जितना देखा है ना, यूजुअली इसमें लॉन्ग स्ट्रगल होती है. मुझे वो याद है, मैंने कोई कस्पारोव की डीवीडी कभी कोई देखी थी, मतलब कुछ कुछ ऐसे, यू जस्ट कीप प्लेइंग ऐसे, रुक F2, रुक F1, रुक D1, रुक ये बिशप F1, बिशप E3, बिशप घुमाते रहते हैं दोनों साइड जब तक ब्लैक D5 B5 कुछ फेंक ना दे भाई. हाँ, बिल्कुल हेजॉग में ये तो कहते हैं कि सिर्फ सिर्फ B5 और D5 का होना चाहिए. और आपको वो वाला सेटअप याद है, एक एक ना एक
I'm not sure ये kasparov का था या फिर आनंद जी का था. It's one of them जिसने king h8 rook g8 g5 निकाला, और it हाँ could be हाँ Fischer also. हाँ हाँ हाँ, फिशर नहीं king था वो? h8 Fischer था ना वो? I feel it आई was थिंक Fischer. फिशर था, आई थिंक फिशर था, आई माइट बी रॉन्ग. मैं श्योर नहीं हूँ, अगर कोई चेक कर सकता है तो प्लीज कर लेना. बट आई रिमेंबर देयर वाज अ वेरी फेमस गेम बाय फिशर जहाँ पे किंग एच8 रुक जेट जी5 होता. तो एक बार हाँ चैट को समझा देते हैं कि वो कैसे काम करता है. तो हाँ हाँ लेट्स से बिशप ई7, हाँ. बी3 समथिंग. बी3 बिशप ओके. को बी2 पे रखते हैं ना, इट विल बी हाँ इजियर. हाँ कासल बिशप बी2, बी6 खेल हाँ देते हैं एक बार. हाँ बी6 खेल देते हैं एंड रुक सी1 बिशप बी7, एफ3 भी खेल दो एक बार हाँ वाइट की तरफ हाँ से. अब हाँ ये जो एफ3 का जो हुक रहता है ना, इसको ब्रेक हाँ करने के लिए ब्लैक प्लेस किंग एच8 रुक जी8 एंड जी5 समथिंग लाइक दैट. हाँ. सो चैट ऐसा कुछ, किंग एच8, फिर रुक जी8, फिर जी5 जी4, इसका इस्तेमाल करते हुए खोलने के बाद रुक जी8 के बाद जी5 पे खेलता है ब्लैक. एंड कंबाइंड विद द टाइमली डी5 द क्वीन कुड आल्सो कम इन. एंड यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक फिशर ही था, जो मुझे याद है मैंने कोई गेम देखी थी, एंड देन मेनी पीपल यूज्ड इट आफ्टरवर्ड्स. एंड यस ओ यस, एक्चुअली या नीरज भाई ने भेज भी दिया है गेम. इट इज अ गेम जहाँ पे वो बट उन्होंने व्हाइट की तरफ से खेला था. सो ही प्लेड हाँ किंग हाँ एच1 रुक हाँ जी1 हाँ जी4, बट द आइडिया इज हाँ. स्टिल द सेम. यार मुझे याद था यार, ओ माय गॉड यार, मैं तो यार आई न्यू आई कुड बी एटलीस्ट एन एनएम. ओह मैं तो हो गया एनएम एनीवेज. बाय द वे साल्टी भाई कैसे हो भाई? इंटरेस्टिंग लग रहे हो भाई. इंटरेस्टिंग कैसे लगता है कोई यार? यार बंदा अच्छा लगता है बुरा लगता है, इंटरेस्टिंग कैसे लग सकता है कोई? ओ पानी पी लिया भाई प्रग ने. भाई आज ही हमने यूट्यूब शॉट डाला है प्रग के पानी पीने के ऊपर. भाई सीरियसली? पानी. अच्छा. हाँ भाई मुझे लग रहा है आप कार्लसन इज स्वेटिंग राइट नाउ. उनकी शर्ट में अंदर पसीना निकल रहा है, उनकी पीठ पे से ड्रॉप 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 ड्रॉप. नहीं, मैं भी पी लेता हूँ. And finally, Prag gets her from the seat for the first time in this game chat. यहाँ पे कार्लसन in deep thought, you can see, सोच रहे क्या करे, कौन सा प्लान ले. एंड यहाँ पे जैसा साज भाई ने बताया कि यहाँ पे ना थोड़ा सा स्लो गेम रहती है कई बार, तो दोनों साइड्स ना आंख मिचोली खेलते हैं. एंड ही हैज प्लेड नाइट टू e5 एंड आई जस्ट चेक्ड कि यहाँ पे क्या क्या मूव्स खेली गई हैं. बिशप e7 was played in half the games and knight e5 in half the games, and g6 बाकी सब गेम्स में. सो मैथ्स इज नॉट मैथिंग, बट या दिस इज वन ऑफ द मेन मूव्स हियर. एंड सहज, क्या ये बिशप को मारने की साजिश है? हमारे बिशप को हमसे मत छीनो. आई वुड से सो, पर लेकिन ये आइडिया मैंने बहुत, आई डोंट रिमेम्बर सीइंग दिस बिफोर. एटलीस्ट इतना जल्दी कभी नहीं. आई मीन आप कास्लिंग के बाद 95 93 देख, वो तो दैट्स नॉर्मल, बट दिस इज अ बिट अर्ली. और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वेदर दिस इज प्रिपरेशन या फिर ही इज प्लेइंग दिस ओवर द बोर्ड. आई थिंक आई इट एम लुक्स नॉट. लाइक इट प्रिपरेशन लुक्स सहज. इट लुक्स लाइक प्रिपरेशन टू यू इवन नाउ, या आई 9 थिंक सो, मिनट बिकॉज यूज बहुत करने फास्ट के खेला है. बाद भी. हाँ हाँ भाई, कार्लसन है भाई, कार्लसन इज ऑलवेज इन प्रेप. आई फील. हम्म. फेयर फेयर फेयर. एंड चैट बाय द वे, दो सवाल. कोई कह रहा है मेरी शादी कब होगी? भाई होगी तो कार्ड जरूर भेजूंगा मैं अपने रिश्तेदारों को. एंड बाय द वे चैट, दूसरा सवाल कि भाई जल्दी से स्ट्रीम लाइक कर दो. रिमेंबर चैट, 500 लाइक्स पे पहली मेंबरशिप, 1000 लाइक्स पे दूसरी मेंबरशिप. कल ही हमने 2 लोगों को मेंबरशिप दी है, वो लोग अभी पार्टी कर रहे हैं. अभी मैंने मिले सड़कों में मिले थे भाई, नाच रहे हैं भाई शर्ट फाड़ के कि भाई पारा मेंबरशिप मिल गई. तो यू वांट टू पार्टी, देन गेट द फ्री मेंबरशिप. डू लाइक द स्ट्रीम, लेट्स गेट टू 500 लाइक्स क्विकली. एंड सहज, हमारा बिशप गयो. एंड चैट, कैन यू गेस यहाँ पे व्हाइट की बेस्ट एंड मोस्ट प्लेड मूव क्या है? सहज, क्वेश्चन टू यू एज वेल. व्हाट इज व्हाइट्स मोस्ट प्लेड मूव इन दिस पोजीशन? एंड देन आई विल आल्सो टेल यू द परसेंटेजेस. कम ऑन चैट, टेक अ गेस. Wait, what do you say? Say that again. सो पहला आपको गेस करना है व्हाइट की मोस्ट कॉमन मूव एंड इट्स आल्सो द बेस्ट मूव. व्हिच इज दैट मूव? एंड वंस यू गेस इट, आई विल टेल यू कि रिकॉर्ड क्या है यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक का, लाइक विन रेट क्या है. So let's take a guess, chat. And Saj. I would say the best move is probably f4 या b3 इनमें से एक. Okay. Okay. Good guess. Good guess. Chat, what is your guess? Let's see. तुम भी guess करो भाई. F4 कह रहे हैं शिवम. That would be a very nice guess in tune with what Sahaj said. Bishop C2 कह रहे हैं, but C4 pawn हमारा जाएगा. That is the issue. That is the issue. Then comes horse move. यार हॉर्स मूव हुए हैं यहाँ पे नहीं होगा भाई. हॉर्स बढ़िया पोजीशन पे है. So King H1, chat, you're absolutely correct. And Sahaj, King H1 is the most played move in like roughly half the games in this position it was played, and it's also the best move. But chat, this is black from this position has a spectacular record. Just for context, Sahaj, इस पोजीशन से just King H1 the best move assume करें अगर,
32% games white has won, 23% draw, and 45% games black has won. So this position is great. And overall, if you exclude king h1, include all the moves, it's even worse. It's 35% for white and 51% wins for black. So in history, हमने सुना है history repeats itself. अगर history repeat होगी तो black has a great position. I am a bit shocked by this आज कि इतना खराब रिकॉर्ड कैसे है white का यहाँ से. Maybe then you're right, okay, this is definitely preparation. I mean, I don't think ये coincidence हो सकता, नहीं? It doesn't feel like a coincidence. I agree. And Pragg already looks a bit surprised, something he did not probably expect. And chat, remember, कि अंत में क्या होता है ना, because Pragg and all these youngsters are trained really well to solve novel new positions, these puzzles, and finding out the best move. But theory में clearly Carlsen has probably a decade of more experience, right? So उन्होंने कई position देखी होंगी जो Pragg ने पहले नहीं देखी है. So वहां पे that's where experience comes in. And Sahaj, यहाँ पे Pragg को निकालना पड़ेगा कुछ है, and I'm hoping कि he will prove the statistics wrong, because statistics बहुत बार गलत होते हैं. अरे हाँ बिल्कुल. and Sicilian, I mean, ये opening ही ऐसी है कि कि I mean, बार you can see बार अभी भी white को इतना पसंद कर रहा है, but I feel like ये position बहुत complicated, बहुत जल्दी हो जाती है, तो it can favor the player who understands chess better, essentially, or understands this position better, As an Indian, tough call. As an Indian, I support Pragg, but Magnus is legend and he's gonna win. कह रहे हैं तने देख लेंगे भाई किसके यहाँ पे तन मन में कौन जीता है. मुझे लग रहा है कि आज Pragg अपसेट कर सकते हैं, बिकॉज कार्लसन देखो भाई इतना क्यों बेंट है भाई, इतना क्या ज्यादा ही कुछ बेंट नहीं है भाई. he's like वो जो ये इसके नीचे वो मीम लगा सकता है, ये मैंने क्या कर दिया. It's like he's already regretting Sicilian Khan. He's like measuring his height, या मतलब पूरा लेट के भाई ओके सर से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस से मैं पीस चल सकता हूँ भाई, ऐसे मेजरमेंट्स चल रही है भाई. Carlsen is amazing, man. Cute है Carlsen, and yeah, he's finally sitting up straight a little bit. साज भाई तुम लेवी को हरा सकते हो, कह रहे हैं कोड लवर. Levy is 2450, right? Around मेरे strength पे. I mean, it's very difficult to say, यार. I mean, जब game के दिन में ना कुछ भी हो सकता है, guys. So I feel like statement में तो कोई भी दे देगा, तो but game के बारे में कुछ भी हो सकता है. But he's not a GM yet. I think I know he's working very hard to be one, especially these days. So maybe he'll cross me someday. It's possible. I think online maybe he can put up a tough fight, but classical probably you will win. Like I think he's 2350, 2380 or something like that. But I thought he was 2450 or so. No, 2380 I think, but online he's very strong. Like he's a 250 or something on chess.com. He's a 250 on chess.com, yeah? हाँ. मेरे से ज़्यादा है उनके. I'm like 2750, I think, if I remember. Somewhere around that. He's very tricky online. कार्लसन को नींद आ रही होगी भाई, नींद भी आ सकती है यार. पूरी रात तैयारी कर रहा था गेम के लिए यार, मतलब इट्स नॉट इजी. ही नोस कि Pragg कुछ ना कुछ रिपेयर करके आएंगे. एंड सहज, Pragg के लुक से क्या लग रहा है? डू यू थिंक ही इज सरप्राइज्ड? इट डज लुक लाइक ही इज सरप्राइज्ड. A little bit, यार. 95 देख के कौन सरप्राइज नहीं होगा. It's definitely not something that जो होता है बार बार. It's definitely quite new. And King H1 also, अगर आपको पता नहीं है ना, तो it's not the easiest move to make. इस move का थोड़ा एक explanation भी दे देते हैं. I feel like King H1 का idea ये है कि अगर आप F4 directly खेलते हो तो वो A7 G1 वाला diagonal आपका खुल जाता है. I think Sahil bhai, after F4 there is Queen B6. हाँ, exactly. I was thinking, yeah, Queen C5, Queen B6. I was thinking, yeah. Queen B6 just सीधा अगर आप knight को छोड़ दो, I feel like that's the response. इसलिए आप King H1 पहले खेल रहे हो. So I think your idea is just to play F4 उसके बाद. Maybe he's just considering कि King H1 अभी खेलना है. Maybe he can play B3 as well. I see a lot of people also suggested the move B3. I think that is a pretty nice logical move here also. तो उनमें से I think he's debating which one to play. Yeah. And I think यहाँ पे बिशप तो गया ही है, and वो ऑप्शन है नहीं, तो King H1 is a very logical move कि आप अटैक की तैयारी कर रहे हो. Same idea Saj F4. And Saj, then the question remains कि ये बिशप कहाँ जाएगा? So are you sticking with your plan to B2? That would look very logical here.
Yes, मुझे तो बिशप वो बिशप b2 पे आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज व्हेनेवर यू पुश e5, व्हेनेवर यू पुश f5, इट्स अ वेरी नाइस पीस टू हैव। प्लस हम्म आप नाइट d5 बेस में काफी बार फेंक सकते हो, तो बिशप जो b2 का, इट बिकम्स कंप्लीटली ओपन। हम्म तो हम्म इट कैन बी अ प्रीटी नाइस पीस टू हैव, स्पेशली वो e5 ब्रेक के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग हम्म समथिंग लाइक किंग h1 f4, फिर वो बिशप b2 से निकलेगा। बट या हम्म इट्स अ टफ कॉल टू मेक, या। Hmm, Saj, man, this is Prag, by the way, 16 minute पीछे हैं already. So, this reminds me of the candidate suddenly. कि जहाँ पे इंडियन प्लेयर्स टाइम पे बहुत पीछे थे, है ना? This is how it transpired usually. Like they would be way behind and then time pressure आएगा and then कुछ भी होता था time pressure में. So I'm hoping कि Prag इतना stress नहीं लेंगे and he will find all these moves, King H1 being one of them. And yeah, I mean, there's no way to. मैं तो उदास हूँ कि बिशप नहीं बच रहा है यार, मेरे को तो बिशप बचाना बहुत बहुत पसंद है. Hmm. Also, someone asked, what is the first book you would recommend to someone? पहली Hmm. चेस बुक कौन सी होनी चाहिए आपके हिसाब से? I don't know the first book I read. I think कोई basic थी, like basic how the pieces move, captures, ये सब कुछ था उसमें. So any Mhm. beginner book, I think beginner book में I'm not sure which one is the best because at the end the material will probably be the same in most of them. Mhm. Um, but in my opinion, I think books से ज़्यादा online probably you can find better sources nowadays. I think better Mhm. ways to explain things. So I would actually say कि maybe YouTube is the platform to learn what you want. What do you think, Sahaj? I mean, these days for sure, I think अगर आपको content के से अगर आपको engage रहना है, अगर आपको chess के साथ engage रहना है, तो I feel like YouTube is much more easier, and also it's much more engaging. But I Hmm. think Hmm. अगर क्योंकि लेकिन काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको chess books, जिनको books का ज्यादा शौक होता है, and I feel like I mean there are, मैं कभी चेस की बुक्स जब भी पढ़ता हूँ, तो there is a different feeling to it, I feel. Hmm. In that case, कोई पहली किताब, कोई ऐसी किताब है which you really really liked in chess, जो आप कभी आपने एक बचपन में पढ़ी हो? एक मेटिन 2 की पजल बुक थी. आई डोंट नो द नेम. हाँ इट वाज सो डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट मेटिन 2s. लाइक इट वाज हाँ। रिडिकुलस मूव्स एंड जब मैं चैनल अपना स्टार्ट किया था, स्टार्टेड विद दोस पजल्स. अरे लाइक वाह। सो इट वाज इनसेन. मतलब बहुत डिफिकल्ट मेटिन 2s होते थे. तो दैट वाज माय वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स जब मैंने स्टार्ट किया हम्म था. तो बट या आई थिंक ओवरऑल I would still prefer, like, I think online sources now. If I started again, I think हम्म। they would probably be the best. well, there you have it. I think online sources definitely यहाँ पे better ही है, especially आजकल. Hmm. um चैट, बाय द वे, जस्ट टू पॉइंट आउट कि भाई हम सुनते हैं कि भाई डोंट मूव द सेम पीस ट्वाइस. हमारे कोचेस कहते हैं, किताबें कहती हैं, वो कहती हैं. कार्लसन कहता है कौन है ये कोच, कहां से आते हैं ये कोच? बिकॉज पहले नाइट मूव किया, फिर नाइट को मूव किया, फिर अगले मूव भी नाइट को मूव करेंगे. सो 3 मूव लगातार एक ही पीस से. सहज, why does Carlson get to break the rules and when you and I do this we suffer? because when Carlsen does it, he makes sure that कि win record already उसका, he what I mean to say is he's already prepared. He does it with preparation. It's not as we said, it's not a coincidence कि अभी से ही black का result यहाँ पे better है, Hmm. even though the bar clearly says कि white is clearly better here. बाय द वे, 2 सवाल चैट के बहुत अच्छे हैं. पहला सवाल ये है कि व्हाई कांट आई प्ले बिशप C2. चैट, ध्यान रखना है कि ये बिशप इस पॉन को डिफेंड कर रहा था एंड यहाँ पे ब्लैक हैज क्वीन C4 एंड नाइट C4 बोथ. दैट्स व्हाई वी कांट सेव द बिशप. एंड अगर पॉन मर गया तो बिशप बचाने का फायदा क्या है? सो दैट विल बी वेरी वेरी रिस्की. आई डोंट थिंक दिस हैज बीन प्लेड बिफोर इन अ सीरियस गेम एट ऑल. Yep, has never been played. And बाकी एक और सवाल था, आई थिंक कि कुछ और था, मैं मिस कर दिया आई थिंक. Queen E3. But Queen E3, I'm not sure what the idea is. I can just pick up the pawn here. Again, the same idea. Because black के दो idea है. Not only knight D3, but also knight C4 is another idea. तो ये pawn defend करना बहुत जरूरी. अगर हमने B3 खेल दिया होता, then you would play bishop C2. But yeah, it's just one move late. I think B3 के बाद भी I'm just happy even if you take my bishop, क्योंकि आपने इतना time spend कर दिया, you've moved the knight already 2 बार, and अब तीसरी बार Hmm. में you'll kill my bishop, but Hmm. it feels like you've spent a lot of your time just taking a piece out of my Hmm. position, so I would accept it in this Hmm. position. एंड एक और सवाल है कि बिशप G5. बिशप G5 इज नॉट लाइक अ, आई वुड से बैड मूव,
but maybe we have better ones as of now. So bishop probably can be better suited on b2, जैसे साज भाई ने कहा, or even on e3 maybe. But this is definitely possible. You can definitely play this, है ना? इट्स डेफिनेटली पॉसिबल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट जब भी ये मारोक्सी का स्ट्रक्चर रहता है उस तो आपको आपके डार्क स्क्वायर्स कंट्रोल हम्म करने जरूरी होते हैं, क्योंकि आपके पॉन्स लाइट स्क्वायर्स पे हैं। हम्म तो अगर आपका बिशप इतना दूर है तो वो डार्क हम्म स्क्वायर्स को कम कंट्रोल करेगा। इट्स जस्ट लाइक अ स्ट्रेटेजिक थिंग। आपको ऐसा नहीं कि आपका कुछ पीस मर रहा है या पॉन मर रहा है, पर उसके चांसेस आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि आपके डार्क स्क्वायर्स अच्छे से कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल एक्सीलेंट पॉइंट आज, बिकॉज इमेजिन पॉन बीइंग ऑन बी3, ये सारे पॉन लाइट स्क्वायर्स पे हो जाएंगे, ये पॉन भी f3 पे लाइट स्क्वायर, ये पॉन भी g2 पे लाइट स्क्वायर, तो आपके ये सारे स्क्वायर वीक होंगे एंड इकलौता बिशप जो कंट्रोल है वो है डार्क स्क्वायर बिशप। एंड अगर मान लो आपने कैप्चर कर दिया फिर तो गया ना बिशप, फिर तो खत्म है, ब्लैक विल डोमिनेट द डार्क स्क्वायर बिशप्स हियर, डार्क स्क्वायर्स हियर, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है ये। सो अच्छा बिशप बिल्कुल है, इसको संभाल के रखे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीपल आर सेइंग आल्सो h3, h3 इज आल्सो डिसेंट, पर इसका कोई पॉइंट नहीं है गाइस, बिकॉज अगर आप हम्म h3 के बाद आई थिंक ये इसीलिए खेलोगे क्योंकि आपको f4 खेलना है और ब्लैक का हाँ नाइट वो g4 पे ना आए, दैट्स द रीजन, पर वो नाइट g4 पे वैसे भी नहीं आएगा, तो यू हाँ कैन जस्ट इससे, गो विद किंग h1। हाँ इससे इट्स मत ऑल। डरो भाई, अब हाँ। खेलो h3 नाइट को बिल्कुल। यहां जब जाना पड़ेगा ना तो ब्लैक सोचेगा सपने में उसको नाइटमेयर्स आएंगे मैं नाइट g4 आने के और h6 आने के। So don't worry भाई, I don't think this is what Carlsen would play. I think he would probably be lost. Yeah, he's actually lost in this position. So f4 से डरो मत, क्योंकि यहाँ पे white is better developed, ब्लैक के पीसेस अभी डेवलप्ड ही नहीं है, so it cannot be good for Carlsen to move the same piece thrice and 4 times. Yeah, it's not going to happen. f4 हमने थोड़ा पहले कवर किया था गाइस, आई थिंक कि f4 में देयर इज अ टैक्टिक्स विद क्वीन b6, तो Yeah. although I'm not sure ये काम कर रही है, why is the bar not going super down? Probably bishop e3 is the problem. Then knight g4, and now it has some purpose. Then you have to enter complications, maybe. Not clear. So is though I can see कि black cannot take the bishop on e3, yeah, that's forced. तो क्वेश्चन अब ये आ जाता है प्रग के ऊपर कि उसे कौन सा बिशप देना है, वेदर, क्योंकि मेन पोजीशन में हमने कहा था कि वो बिशप वो नाइट d3 के बिशप को मारेगा, और इस पोजीशन में इट्स द डार्क बिशप। I mean, personally, optically speaking, I would say कि लाइट बिशप देना बेटर है, क्योंकि आपके पॉन्स ऑलरेडी लाइट स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, पर इसमें ये पोजीशन बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो दोनों साइड के रीजंस यहाँ पे जायज है, आई फील। बिल्कुल बिल्कुल, एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली शार्प रिगार्डलेस ऑफ व्हाट प्राग प्लेस चैट। याद रखो सिसिलियन डिफेंस है, ये वही ओपनिंग है जहां पे बस वाइट बस प्यादे फेंक देता है, जैसे मतलब कोई इज्जत ही नहीं है इन प्यादों की, बस सैक्रिफाइस करो और रुक और पीसेस को गेम में लाओ, तो हमें अटैक देखने को जरूर मिलेगा प्राग की तरफ से। बट बहुत ज्यादा सोच रहे हैं यार, ही इज ऑलरेडी लाइक व्हाट फॉर हाउ मेनी मिनट्स बिहाइंड इज दिस, लाइक 24 मिनट्स। Yeah, 24 minutes. That's a lot of time. That's a lot of time. भाई प्रग चलो यार, ऐसे मत करो यार मेरे साथ We're प्लीज। also on move 9 also, yeah, just चैट अभी नहीं हिला सकते, वी विल नीड टू वेट फॉर अ करेक्ट मोमेंट जिससे साहज अपने कान हिलाएंगे। दिस इज नॉट दैट मोमेंट आई फील। अभी पोजीशन इज ओके, इट्स नॉट बैड, हमें सही मोमेंट का इंतजार करना है, सही समय का इंतजार करना बहुत जरूरी भाई, बहुत जरूरी, टू यूज अस ट्रम्प कार्ड लेट्स से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इट्स टू अर्ली, दैट्स द थिंग, ये आराम से जब वो एक क्रूशियल मोमेंट आएगा देन वी कैन डू इट। Yep, Prag definitely looks tense. I think he definitely underestimated this move, and अब वो सोच रहे हैं, and especially अगर 95, as somebody who doesn't play this opening too much, I will be very scared अगर ये bishop चला गया, because I'm used to seeing the structure with the bishop on d3, so of course Prag won't have that issue. I mean, he is a top player, but कहीं ना कहीं पे it's a new structure maybe for him as well, who knows. Maybe. Oh, guess what he played, Sahil bhai? जिस तरह आपने बोला है, I'm a bit f4. Yeah. No. फिर He has played h3. ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? ओके चैट, सो आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माय पोस्ट एज कमेंटेटर। आप लोगों में से जिसने एक्चुअली लिखा था प्लीज कुर्सी पे आ जाइए, और जो उनके छोटे भाई है वो साहज ही कुर्सी पे आ जाइए। हम दोनों चलते हैं, नाइस मीटिंग यू चैट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। लाइक भाई ये क्या होता भाई h3? ये क्यों यार? और मतलब
ऐसी So ना क्लिप्स बहुत सारी बन रही हैं, आई एम जस्ट सेइंग। पिछले 24 घंटे में इतनी सारी बन गई हैं। Bhai Sahaj, I am a bit shocked because you don't want to play King H2 anyways. Because यहाँ पे, you can see the queen is keeping an eye, so that's not the improved version at all. हम्म। Knight G4 is not a huge threat, I assume, in हम्म। any case. So, because ये तो मारेगा ही, so there is no Knight G4 anymore because queen controls G4. So what is H3? I maybe he wants to go bishop e3 और उसके बाद f4 and then he doesn't want him to play knight g4. But I feel like he's completely out of his prep, yeah. So it's very hard to say. I'm honestly I'm a bit loss of words यहाँ पे। मैं Sahaj, बिल्कुल भी h3 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ पे, हाँ। I think it's all about getting Carlsen out of prep. मुझे ऐसा लग रहा है. It's all about that, I think, कहीं ना कहीं पे. Because To if I get go back, Magnus out of prep. yeah. If I go back here, H3 सिर्फ 3 गेम में खेला गया है अब तक. One was a draw, two was one, 2 games were won by black. So technically, record-wise, not so great. But maybe it's just getting Carlsen out of his prep. But once you play H3, are you really going to play F4 is my question, Sahaj, still. अगर आपने f4 नहीं खेला तो आई डोंट सी द पॉइंट, क्योंकि आप f3 तो नहीं खेलोगे, फिर हाँ, exactly. that just हाँ. feels useless. आप f3 नहीं खेलोगे तो f4 तो खेलना ही पड़ेगा ना, दैट्स लाइक योर तो ओनली चांस हियर। अगर F4 खेलना है तो अभी किंग H1 भी खेलना ही पड़ेगा, आई अज्यूम. और या फिर आप बिशप e3 जाओगे, बिशप e3 जस्ट हाँ. एज अ डेवलपिंग मूव, और उसके बाद आप f4 फेंकोगे। आई थिंक दैट्स द पॉइंट। So that makes sense. So instead of putting the bishop on b2, he wants to put it on e3 and he wants to avoid knight g4 and he wants to go f4. So that makes sense. So I think the bishop will come to e3 chat and then he will go f4. And maybe that's why h3 makes some sense. And of course, Carlsen agar out of prep aate hain and he doesn't know the structure, kuch change hua hai, then that has a plus point itself. I mean, I know Carlsen इंजन के बहुत पास है, but still इंजन से तो कमजोर खेलेंगे. 2-4% accuracy कम होती है उनकी भी. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अभी नीरे भाई ने भी एक चीज बताई कि हम वो G5 G4 वाला आइडिया डिस्कस कर रहे थे, एंड इट इज पॉसिबल कि यहाँ पे भी देखने को मिल जाए। उन्होंने रुक कहा G8 रुक G5। G8 G5 G4 भाई, दैट वुड बी क्रेजी. मे बी नॉट राइट नाउ बिकॉज यहाँ तो वाइट धो देगा ब्लैक को. बट एट सम बिल्कुल। पॉइंट अगेन विद कैसल्स किंग H8 अगेन, you don't have F3 but you have H3 now, so the same hook you have again, so can be utilized at some point. अरे Yeah, totally. नहीं साहिल भाई, यू कैन प्ले f4 इन दिस पोजीशन। ये इसी से समझ आया मुझे कि लेट्स से इफ यू प्ले समथिंग लाइक बिशप e7, राइट। अब मैं Hmm. खेलता हूँ f4, Hmm. क्योंकि अब आप क्वीन b6 नहीं खेल सकते ना, दैट वाज द इशू पहले। बट Ah, नाउ यू कैन okay. प्ले बिशप e3, तो अब नाइट g4 पॉसिबल है क्योंकि आपने h3 ऑलरेडी खेल दिया। True, true. Maybe that's the concept. I agree with that one. But I think हम्म। at the end, black will not play queen b6. So bishop e3 will e3 पे आएगा वो तब भी. I think so. It will not change much. एग्जैक्टली। Transposition के बाद वही होगा. So maybe like let's say bishop e7, f4, knight d3, queen d3, and something like this castles, and then bishop e3. So we'll get something like this, and black can play, I don't know, b6, whatever he wants to play. And in this structure, Sahaj, who do you feel is better? आई फील के व्हाइट का चांस थोड़ा सा बेटर है। आई हैव ओनली प्लेड दी सेटअप्स विद द व्हाइट पीसेस हमेशा। मैंने कभी भी ये सेटअप Hmm. ब्लैक से नहीं खेला है। आई हैव नेवर प्लेड द हेजॉग एज फार एज आई कैन रिमेंबर। अगर कभी टाइटल ट्यूसडे ऑनलाइन खेला हो तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ओवर द बोर्ड आई डोंट थिंक आई हैव एवर प्लेड दिस। तो आई यूज्ड टू ऑलवेज लाइक दिस सेटअप एज फ्रॉम द व्हाइट साइड, क्योंकि मुझे Hmm. लगता था कि व्हाइट के साइड से बहुत अटैकिंग के चांसेस रहते हैं। इट कैन हैपन एट Hmm. एनी मोमेंट। Hmm. तो आई विल पिक व्हाइट। एंड नाउ कार्लसन थिंकिंग, तो हमारा पूरा 20 मिनट का टाइम पे हम पीछे हैं. सो आई एम रियली होपिंग कि यहाँ पे मैग्नस विल टेक सम टाइम एंड देन ब्लंडर द क्वीन बाय क्वीन टेक्स c4. नहीं, दैट्स नॉट हैपनिंग इन अ मिलियन इयर्स. आई थिंक कहीं ना कहीं पे he is going to probably take the bishop maybe on this move or the next move, regardless of how he transposes, चाहे bishop e7 पहले आए, and then we will see that f4 move. And प्रग काफी डीप सोच चुके होंगे अब तक, मुझे लग रहा है. Ah, for sure, for sure. And Magnus also looks really, really focused to me, yaar. Hmm. Seems like a very, very, important moment for both of them. Yep. एंड चैट बाकी सब गेम्स अभी इक्वालिटी के आसपास ही हैं, सो आई वुड रादर स्टिक हियर बिकॉज कोई क्रेजी ऐसा मैचअप नहीं है. लाइक हिकारू फिरूजा, इट्स क्रेजी बट ओके.
कारुआना डिंग, इट्स क्रेजी बट ओके। आई थिंक ये वाला मैच जो है ना, चैट जब भी किसी गेम पे जाना हो लेट अस नो, बट यूजुअली ये वाला गेम इज गोइंग टू बी द स्टार गेम फॉर टुडे। एंड या आई मीन मैं सिर्फ ट्विटर खोल के बैठा हूँ साहज, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ विक्ट्री फॉर प्रग, ताकि बस ट्विटर पे आज मेरे 100 200 300 फॉलोअर बढ़ जाए। that's that's a nice strategy. That's a nice strategy. Oh, by the way, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है चैट पे। हाँ हाँ। आज मैगी की क्या बेट है? अरे यार, ये तो आपने भाई मतलब कल हमने 10 कम करी थी, आज मैं सोच रहा हूँ यार पूरा उठा ही दूं आपका सारा लीड, क्या बोलते हो? ठीक है, चलो सो लेट्स गो। सो आई एम, किस गेम में आप प्रेडिक्ट करोगे? सो कौन सी दो गेम्स में हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं साथ? सो वन विल बी क्लियरली प्लग अगेंस्ट मैग्नस, और कौन सी गेम में हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं? मैं करता हूँ हिकारू वर्सेस अलीरेजा। ठीक है। सो आई इस प्रेडिक्ट गेम दैट। में आई एम गोइंग टू प्रिडिक्ट, should I take the draw? That's a very safe choice. हम्म हम्म But अगर I प्रग am जीत गया तो 10. आप खुश तो होगे पर अंदर दुख जरूर होगा। You know what? I'll take the draw because either way, मतलब मैं खुश रहूंगा भाई. So I'll take the draw in this game. ठीक है. So I'll take draw and you get both the other options. ठीक है. ठीक है, ठीक है. 10 And 10। Hika, हाँ 10 इंडियन प्ले ये में 10 लेंगे हमेशा, और हाँ. आर्मागेडन में डबल और नथिंग या नहीं? पहले देखते हैं, वी कैन डिसाइड, ओके है ना? ओके, वी कैन डिसाइड, ठीक है. डन एंड डन डन। नेक्स्ट हिकारू अगेंस्ट फिरूजा का बोर्ड में लगा रहा हूँ. इस वाले में विच वन आर यू चूजिंग द रिजल्ट? ड्रॉ, विन फॉर हिकारू या लॉस फॉर हिकारू? I will say this is. I'll also go with the safe bet, and I'll say it's a draw. But although I'm very inclined to say कि अलीरेजा जीतेगा ये, I'm very inclined to say that. तो दोनों Yeah, सेफ खेल रहे हैं हम दोनों आज, हमें पता है yeah, कितने स्टेक्स है भाई. मेरी किडनी बाल exactly. बाल बची है कल, तो ठीक है, तो दोनों ड्रॉ चूज किया है. यहाँ पे कितने मैगी बेट पे भाई? यहाँ 5 लगाते 10 हैं. 10 10 10 दर 10. जगह 10, दर अरे जगह बाप 10। रे, साहज भाई तो मतलब पूरा बोल्ड हो गया ना आजकल. I need my 10 back. I need those 10 Maggie back. गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट भाई, गॉट इट. चिल, इट्स मैग वर्सेस प्रैग. अरे भाई उनका सर भाई, उनको निकनेम भाई मैं थोड़ी लगाया. भाई Someone is saying कैन वी, अर्जुन को हटाओ यार. Huh? भाई अर्जुन कहाँ से आ गया यार? Oh, अर्जुन नहीं अच्छा, है they भाई. meant in the chat. Oh. अच्छा कोई अर्जुन, अच्छा. ओ अर्जुन जी यार, एक अर्जुन है जो इंडिया का नाम रोशन कर रहा है, और एक है जो स्पैम कर रहा है भाई. मतलब कितना डिफरेंस होता है यार अर्जुन से अर्जुन में, नहीं? प्रग कैमरा की तरफ, हे प्रग क्या हाल चाल? अरे यार ठीक है यार, कोई ना. Come on, come on, let's go. Hey Prachi, कैसे हो? Maggie OP indeed. Maggie यार, I think at this point we should get Maggie as a sponsor. इतना हमने प्रोमो तो किसी ने नहीं किया होगा मैगी का यार. जिनको उन्होंने पे भी किया होगा उन्होंने भी इतना प्रोमो नहीं किया होगा मैगी का. साज, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, अब तो स्पॉन्सरशिप भाई. हाँ, मैगी प्लीज. ओपी अब तो सुपर वो फीचर चैट में भी आ रही है अब तो. हाँ ट्रू. सो प्लीज बॉस जी, प्लीज डू कॉन्टेक्ट मैगी. आई थिंक वी आर ऑल सेट फॉर द स्पॉन्सरशिप. हमने पहली बेस खड़ा कर दिया उसका. बिल्कुल बिल्कुल. प्रग क्या रिलैक्स्ड है यार. ओह क्या मस्त बैठा है यार. एंड ओके. B6 by Magnus Carlsen, that's a very interesting choice, Haj. Not, preparing for castling, not taking the bishop, keeping it all flexible. What could be the plan here? Does it change anything from Magnus' perspective? For sure, I think. First of all, now we have proper hedgehog setup. बस वो Hmm. knight e5 पे क्या कर रहा है, I don't know. उसके Hmm. अलावा this is a proper hedgehog setup. But yeah, you're right. He's keeping everything flexible. Bishop वो B7 से निकलेगा, rook C8 पे आएगा. I think for the time being, he's also delaying his castling, which is also pretty like a normal theme inside this variation. Black हमेशा castle थोड़ा सा delay करता है, क्योंकि अगर आप castle जल्दी कर लेते हो ना, तो attack king side पे बहुत जल्दी आता है. तो आप Hmm. थोड़ा वेट करते हो, किंग को सेंटर पे रखते हो, अपने क्वीन साइड के पीसेस जल्दी डेवलप करते हो, एंड देन यू कासल. Hmm. Got it. Got it. हुफ मैन. कोई कह रहा है ओमकार मदाने चेस स्ट्रीमर पे क्या ओपिनियन है? भाई अभी हमने उनको ऑनबोर्ड किया है चेस कॉम प्रोग्राम में, हमारे स्ट्रीमर प्रोग्राम में. तो इफ यू आर अ स्ट्रीमर, प्लीज डू अप्लाई. यू कैन बिकम अ चेस कॉम स्ट्रीमर सून. 500 चाहिए होते हैं. सो डू नॉट मिस आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी भाई, ऑलवेज देयर. क्या एंड बात है. टाइम एडवांटेज टू मैग्नस, आई नो यार. किसने सोचा था समय दगा देगा और कार्लसन के साइड में बैठा होगा यार? बताओ यार क्या है, किसने सोचा था ये? बिल्कुल बिल्कुल. सहज भाई चलो, या मुझे एक गो चीज अहेड. बताओ. सो व्हेन यू प्ले चेस ऑन एवरेज, लेट्स से 4 घंटे की गेम है, हाँ,
उन 4 घंटे में से कितनी देर आप बोर्ड पे बैठे होते हो, कितनी देर आप उठे होते हो बोर्ड से? मैं दोनों फेजेस में था। जब हाँ। मैं व्हेन आई वाज लाइक 10-11 years old, तब मैं बहुत घूमता था। फिर उसके बाद जब मैं 13-14 साल का था, देन आई वाज जस्ट सिटिंग ऑन द बोर्ड द होल टाइम। फिर उसके बाद में जाके आई स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड अ लॉट। अब मैं हम्म। हमेशा आई वॉक अराउंड। आई फील लाइक इट्स अ वे टू चैनल योर स्ट्रेस। क्योंकि बोर्ड पे बैठे बैठे एक तो आप बोर भी हो जाते हो, और हम्म। साथ में मतलब मतलब आपको आप आई थिंक बोर्ड पे बैठे बैठे आप थक जाते हो, बिकॉज यू आर हम्म। कैलकुलेटिंग वो हम्म। सब। तो मतलब थोड़ा बहुत वॉक करना इट्स गुड फॉर द माइंड ऑल्सो। आप दूसरे गेम्स भी चेक कर सकते हो, क्योंकि इस गेम में आई मीन इस तरह के इवेंट में यू कैन ओनली सी लाइक सम 5 or 6 गेम्स, राइट, ओपन हम्म। इन द वुमेन सेक्शन। बट एक अगर आप ओपन इवेंट में जाते हो तो यू कैन सी सो मेनी डिफरेंट गेम्स। यू कैन सी लाइक मे बी लाइक 20 मोर, लाइक 30 मोर, उसमें से हम्म। 10 आपके दोस्त भी होते हैं, तो यू कैन ऑलवेज डू दैट, एंड इट्स लाइक अ गुड way to kind of like channel इंडिया में your हो तो stress, भाई I feel. 500 और भी देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे दिल्ली ओपन में क्या कुछ तो 1,000 प्लेयर्स थे, आई रिमेम्बर। हाँ। क्रेजी। 1600 थे भाई, 1600 प्लेयर्स। हाँ, अरे दैट्स क्रेजी क्रेजी। लास्ट वाले में ना पारसनाथ में। सिर्फ सी कैटेगरी में भाई 1600 प्लेयर थे एक ओह टाइम पे, वाओ। मुझे याद है। वाओ। क्रेजी। मैं इसलिए कहता बिकॉज कार्लसन कुर्सी पे बहुत कम बैठते, आई थिंक पहले हाफ अगर बोर्ड के हम कैलकुलेट करें, ही माइट बी वन ऑफ द प्लेयर्स हु इज नॉट इवन सिटिंग एट द बोर्ड दैट मच, सबसे ज्यादा टॉप पे होंगे उस लिस्ट पे भी वो। हम्म। पॉसिबल पॉसिबल। आई थिंक प्रग भी ज्यादा नहीं घूमता ना। प्रग इज आल्सो लाइक सिटिंग ऑन द बोर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ, इफ आई एम प्रग नॉट इज सिटिंग एंड कार्लसन इज नॉट सिटिंग, ये मुझे लगता है। मिस्टेकन। इनका ये उल्टा है दोनों का। आई थिंक ज्यादातर इंडियन प्लेयर्स ज्यादा नहीं घूमते, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हम्म। गुकेश के लिए किसे भी हम नहीं देखते, विदित के साथ भी नहीं देखते हम उतना। इट्स रेयर आई थिंक। हम्म। आई थिंक लेकिन जीतने का सब उठ जाते हैं भाई, गुकेश उठता है, विदित उठता है, जब दोनों उठ के फिर वॉक करने, गुकेश वॉक करता है, विदित खड़े होकर सीट के पीछे खड़ा हो जाता है, दोनों का अपना अपना स्टाइल है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। चार बाद मैग्नस में। के पोजेस हाँ। यार आज बड़े यूनिक हैं। ट्रू। ट्रू। पोजेस ट्रू। पोजेस आज बड़े यूनिक हो रहे हैं आज। मैन आई थिंक इट्स इनसेन कि क्या मोटिवेशन है बंदे के पास, ही इज द गोट, ही हैज अचीव्ड एवरीथिंग, स्टिल ही सिट्स अप, कम्स देयर, फाइट्स। उन्होंने कहा है उनको क्लासिकल उतना खेलना पसंद नहीं है, बट यू काइंड ऑफ आल्सो होप कि ही डज वेल ताकि वो और क्लासिकल खेले। हम्म। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। आई डोंट थिंक यू नो वो एक बोर्ड होंगे बिल्कुल भी। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा नीति भाई ने कि शुड प्लेयर्स हैव लाइक हार्ट रेट मॉनिटर्स, लाइक कितना उनका हार्ट बीट चल रहा है। आई थिंक कई जगह पे एक्सपेरिमेंट किया गया है ये, कि कितना हार्ट रेट है, वी हैव सीन इट गो अप ड्रास्टिकली ड्यूरिंग टाइम प्रेशर। तो डू यू थिंक दैट वुड बी मोर फन अगर यहाँ मान लो टॉप पे कार्लसन का हार्ट रेट और प्रग का हार्ट रेट लिखा होता है ऐसे? इट कुड बी मोर, बट इसका मतलब आई मीन या डेफिनेटली इट कुड बी। मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है पहले, बट आई थिंक इट कुड हाँ। डेफिनेटली बी अ नाइस एडिशन। जैसे कन्फेशन बूथ वाला भी इज अ वेरी वेरी नाइस एडिशन, आई थिंक, जस्ट टू लाइक हाँ। let them know about their thoughts. This also lets us know more about these players. हाँ। So yeah, why not? ओ बाय द वे Ooh, F4 प्लेट। F4. सो Okay, now it's F4 heating up. फेंक दिया है उन्होंने। एंड बाय द वे साहज भाई, आई जस्ट सॉ, you know what Mm-hmm. the Indians first preference, at least at Nine, first glance, is? Can you guess? 97, 97. No, for white here in this instead of F4, F uh, F4 ही थी ना, या फिर B3 it थी? was bishop C2. Oh, okay. I don't know why, because queen c4 के बाद apparently simply moving queen d1 and white is okay apparently, and it's slightly better, which is ridiculous to me. Why does it change after b6? So इंजन का मुझे लॉजिक समझ नहीं आया कभी जिंदगी में. So f4 के बाद Carlsen plays the most obvious move, knight takes d3, queen takes d3, and this is the position. And यहाँ पे सहज I think दोनों बिशप अगली दो मूव में जाएंगे e7 और b7 पे. And maybe Sahaj, this can be a better version for Prague, बिकॉज उन्होंने बिशप E3 अवॉइड कर दिया कुछ हद तक. सो कल को अगर बिशप एक ही टेम्पो में F5 जा पाए तो मे बी ही कैन सेव अ टेम्पो इन फ्यू लाइंस, जस्ट मे बी. दैट्स अ रियली गुड पॉइंट, क्योंकि F5 E5 के बाद ना, दैट्स ये हमेशा हर सिलसिले में कहते हैं कि F5 E5 प्रयोग करा दो, क्योंकि वो D5 का जो स्क्वायर है that becomes yours. So then you can go bishop g5, take the knight, and वो आप knight को आप d5 पे डालो, and then अगर आप Sicilian, अगर आप whenever you start learning about the Sicilian, this is the first thing you learn, good knight versus bad bishop type of a situation, जो ये d5 के square से start होती है. I like that idea quite a lot, but कान जैसी position में ना मेरा दिमाग is just always thinking about the e5 break. It's not thinking about the f5 break at all.
but I don't know, it's like मतलब क्योंकि मैंने इतनी बार यहाँ पे E5 ब्रेक मतलब दिमाग हमेशा वहीं जाता है. It's a bit strange. I agree, Saj, because ये सिस्टम का सबसे कॉमन सिसिलियन प्रिंसिपल है चैट कि you play f5, let's say e5, ये d5 square पे control, knight comes back, you go to g5, take the knight, and फिर ये let's do a sample variation, Saj. Let's say bishop g5, यहाँ पे castle takes knight e3, rook c8, b3, and Saj, this is like that tragic position जहाँ पे I will put the knight on d5, let's say bishop takes, knight takes, ओह मतलब क्या ओह ओह क्या पोजीशन है भाई, वाह भाई. मतलब यहाँ पे आई हैव सीन पीपल रिजाइन इवन अज्यूमिंग कि right. मान लो दिस इज नॉट हैंगिंग, लेट्स से आई डोंट टेक ऑन f6 क्वीन d8 किंग h1, ये पोजीशन है कुछ ऐसे करके, ठीक है. आई हैव सीन लेट्स से पीपल रिजाइन इन दिस पोजीशन. अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. I mean, imagine साहिल भाई, I'll ask you a question, ठीक है. Let's हाँ say you are white, in that final position, हाँ you are हाँ white and black is stockfish. हाँ. Do you think what do you think is the result? I am not losing. There is no way on Exactly. earth I am losing. Yeah, Exactly. I can't say I will win because at some point when I start to convert, I will probably bundle something. But I will not Exactly. lose this. I will not lose एग्जैक्टली this. ये पोजीशन आप हार नहीं सकते. एग्जैक्टली ये मतलब हाँ कोई भी हाँ हारे, ये किसी के साथ भी हो जाए, आप हारोगे नहीं कभी भी इसको. हाँ दिस इज अ टू रिजल्ट पोजीशन. लाइक दिस हाँ इज द हाँ मोस्ट. हम इतनी बार डिस्कस कर रहे थे पहले पहले मतलब हाँ. कैंडिडेट्स में भी, एंड देन उसके मतलब प्रैग मास्टर्स में भी हम कितनी बार हमने इसको डिस्कस किया. बट दिस इज अ ट्रू टू रिजल्ट पोजीशन गाइस, जहाँ पे यार व्हाइट ये नहीं आ है सकता. गुड नाइट अगेंस्ट बैड, वेरी वेरी बैड बिशप. आई मीन यू वुडंट इवन टेक दिस समटाइम्स टू स्पॉइल द स्ट्रक्चर. इसको बस पड़े रहने दो, सड़ने दो यहाँ पे, एंड लॉन्ग टर्म फिर अटैक लॉन्च करो. आई मीन यू कैन प्ले ऑन बोथ साइड ऑफ द बोर्ड. ये नाइट को कोई पीस हटा नहीं सकता यहाँ से, कोई भी पीस नहीं हटा. एंड दैट्स व्हाई व्हाइट इज कंप्लीटली विनिंग. सो ये dream scenario for Prag. अगर ये आ गया तो Carlsen will literally put his king and throw it in the dustbin and quit chess tomorrow. So this will not happen, chat. So this is the current position. कोई आए कहे, oh my God, Prag is winning. नहीं, not yet, but hopefully soon. And this is the current position, chat. Dream scenario. Sahaj, can he go f5 then? भाई हमें पता है हमें कहाँ जाना है. हमारे पास मैप है, हमारे पास गूगल मैप्स है, हमारे पास गाड़ी है, तो चलते हैं ना भाई. पर मतलब आई थिंक F5 तो मुझे मतलब बिकॉज उसने बिशप B7 भी खेला है ना, क्योंकि बिशप हाँ B7 के साथ साथ तो E6 का जो कंट्रोल था वो हाँ. थोड़ा कम हो गया. तो अब F5 तो लग रहा है कि अब तो खेलना जरूरी है, तो खेलना ही चाहिए. Yep. This is looking really good for Prague. I don't know, maybe I'm overestimating it as position, but मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है Prague की पोजीशन देख के यहाँ पे. So come on Prague, let's go भाई. कार्लसन को हराने का सुनहरा मौका. And you can see उनकी कुर्सी फिर से हिल रही है भाई, हिलने लगी कुर्सी भाई. Let's go. क्या वाइब में बात है. लग रहा है फिर से. बिल्कुल बिल्कुल. पता है यू सेड कि ये गेम ड्रॉ होगा. आई मीन यहाँ पे हमारी वो जो बेट लगी है, बट आर यू स्टिल रूटिंग फॉर प्राग टू विन दिस? You वुड know यू बी what? I हैप्पी विद said it दैट? draw होगा. अगर Prague जीतता है, आपको तो 10 मैगी जाएगी जाएगी. मैं लिटरली एक बंदे को 3 महीने की मेंबरशिप दूंगा भाई, खुद से भाई. एक बंदे क्या को बात है. सीधा. हाँ भाई, अगर क्योंकि दिस डिजर्व इट भाई. अगर कार्लसन को कोई हराए तो फुली डिजर्व भाई, सेलिब्रेट करना चाहिए, तभी भगवान दूसरे मौके देता है. तो एक बंदे को मैं 3 महीने की मेंबरशिप खुद दूंगा. चैट रिमाइंड मी इफ प्रग विंस क्लासिकल में, लेकिन या क्लासिकल में ही हैज टू विन, एंड फिर हम करेंगे. तो लेट्स गो चैट, लेट्स होप फॉर इट. क्लासिकल का अलग फीलिंग है बिकॉज कार्लसन की रेटिंग सीधा 4 5 6 पॉइंट गिर जाएगी. एंड प्रग विल, बाय द वे, जस्ट चेक, लेट मी चेक द रेटिंग्स. छह सो सात तो नहीं, ज्यादा होगा. ज्यादा होगा आई थिंक. हाँ, so 8, आई Prag थिंक right now 8, is 2747 7 by होगा. 2747, and Carlsen is 2728. He has already lost 1.5 points in this event. अगर वो हारते हैं, he will lose another 6, भाई and भाई that means he will, 2828 282. he will go 2822. भाई 2822 पहुंचेगा Carlsen if he loses. मैं आपको कह रहा हूँ फाबी इज गेटिंग क्लोज. Ooh, this will be crazy. And Prag जीतते हैं तो he will be 2753 world number. He will go ahead of Vichy again. So India number, यार विशी से आगे जाने के बाद भी इंडिया नंबर 3. भाई कितना कंपटीशन है यार. चैट आईएएस यहाँ पे आता है, एंड देन चेस में भाई यहाँ वो ऊपर छत तोड़ के ऊपर सीधा कंपटीशन है भाई. बिल्कुल.
तो पूछ रहे हैं मेंबरशिप देने का क्राइटेरिया क्या होगा? अच्छा वो तो बाद में डिसाइड करेंगे ना आराम हाँ, से वो मैं व्हेन इट सवाल हैपेंस। पूछूंगा एंड द फर्स्ट पर्सन टू आंसर इन द चैट, उस टाइम पे चैट में आपका होना बहुत जरूरी रहेगा, सो गूगल उस टाइम तैयार रखना, सो दैट डिपेंड्स। चैट चैट लेट्स गो, लेट्स गेट टू 500 लाइक्स, 500 लाइक पे हम पहली मेंबरशिप करेंगे, जल्दी से लाइक करो, लेट्स गो। प्रग का 69% आप लोग कह रहे हैं विनिंग चांसेस, 31% फॉर कार्लसन। यार अगर ये पोल कार्लसन देख लेना तो वो कहेगा यार इतना कुछ मैंने जिंदगी में किया है फॉर 31% वोट्स, बताओ। हम्म पोल चल रहा है, आई कैन सी इट। एक बार कैन वी टेक अ हाँ, लुक एट मे बी फाबी वर्सेस डिंग? let's go, let's go, we'll be back to this game quickly chat। ये है पोजीशन, आई थिंक वी सॉ इट टिल दिस मोमेंट, A4। यहाँ पे नाइट D7 खेला उन्होंने, मे बी ही इज प्लानिंग F5, नाइट F1 रोकने की कोशिश, उससे पहले ही ओ D5 खेल दिया उन्होंने इंस्टेड, एंड नाउ कम्स D4, सेंटर में ब्रेक, E टेक्स, नाइट टेक्स। आज ब्लैक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कमजोर तो लग रहा है, मे बी ही विल जस्ट साहिल टेक भाई, ऑन D4। साहिल भाई बोर्ड की बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट लेट्स आल्सो नॉट फॉरगेट कि टाइम की सिचुएशन क्या है, बिकॉज आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फाबी के अभी के फाबी स्टिल हैज 155 ऑन हिज क्लॉक, मींस दिस इज स्टिल प्रेप। भाई ही डिंग इज को क्या हो गया भाई? 1 घंटे का फर्क है। भाई वो भी मैगी खा रहा था क्या भाई? क्योंकि मतलब लग रहा है 55 मिनट पीछे कैसे हो सकते हो भाई, लिटरली दिस इज क्रेजी यार। यार मेरे को याद है एक बार टोपोलोव ने कहा था भाई, किसी जिब्राल्टर मास्टर्स में 2013-15 में कुछ कहा था कि आजकल तो कोई 2300 एफएम भी मतलब पहली 15-20 मूव रट के आता है तो दे प्ले परफेक्टली। तो भाई टॉप प्लेयर फास्ट क्यों नहीं खेल पा रहे पहली 15-20 मूव? ये क्या हो रहा है यार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, इट्स वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है ये सब, बट कुछ कुछ तो नोवेल्टी होगी। देयर मस्ट बी सम न्यू आइडिया। D4 नहीं चलती, या आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट डेफिनेटली समथिंग न्यू वाज डन जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था पहले। हम्म। ओ इट वाज दिस रुकी 2। साहिल भाई हाँ। इट वाज दिस रुकी 2 जो भी चाल है हम्म। ये आई मीन मेरी समझ के अभी थोड़े से बाहर है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि व्हाट्स द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ दिस। आई मीन ऑफ कोर्स यू आर हम्म। प्रोटेक्टिंग द F2 पॉन, बट इसका कुछ डीपर रीजन भी होगा फॉर श्योर। हम्म। बट दिस इज द वन आई थिंक जिससे डिंग काफी सोचने लग गया। लीजन लीजन एंड आई नहीं, रिमेम्बर। एक्चुअली नाइट D7 पे ही थॉट फॉर 35 मिनट्स इस मूव के लिए। 97। 35 मिनट एक मूव पे चैट, इतने में तो मैं यहां से मतलब फ्लाइट पकड़ के पता नहीं कहां पहुंच जाऊं भाई, 35 मिनट एक चाल पे। वाह। वाह। सो रुकी 2 wasn't the surprising move, क्योंकि रुकी 2 looks like the move, क्योंकि वो गेम में हाँ। नहीं पड़ गया। हम्म। कूल। सो ये गेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड, एक बार हिकारू की गेम पे नजर मारते हैं, बिकॉज वहां भी हमारे 5 मैगी दाव पे हैं। एंड हमने रुक E8 देखा, E2 पॉन पे फिरूजा प्रेशर डालते हुए, H3 स्टॉपिंग बिशप G4, एंड नाउ कम्स बिशप F5, G4 नहीं तो F5 ही। यहाँ पे ब्लैक के पीसेस काफी कंफर्टेबल तो लग रहे हैं, बट आई कैन चॉप दिस बिशप ऑफ एट एनी पॉइंट। सहज, विच इज वीकर, D4 या E2? आई थिंक इट बॉइल्स डाउन टू दैट क्वेश्चन। डेफिनेटली, एंड हम यूजुअली वी वुड से कि जो भी जो whichever pawn is more advanced, वो आप इजीली उसको टारगेट कर सकते हो, तो दैट इज अ बिगर वीकनेस। पर हम्म। इस केस में मुझे लगता है कि दोनों आर सिमिलर, क्योंकि आपका हम्म। E2 का पॉन भी बहुत वीक है वो, बिकॉज इट्स राइट ऑन एन ओपन फाइल, जहाँ पे एक रुक तो ऑलरेडी है, दूसरा रुक भी आ सकता हम्म। है, लाइक यू कैन डबल द रुक्स एज वेल। तो आई फील लाइक देर बोथ मोर और लेस वीक, पर लेकिन E2 का पॉन इज अ बिगर लाइबिलिटी, क्योंकि D4 का पॉन फिर भी एक्टिव है ना, E4 का पॉन लेकिन फिर क्या सॉरी हुआ? साज भाई, बट मैंने आज तक की सबसे बेस्ट डेफिनेशन देखी है एनएम की चैट में। कैन यू रीड इट आउट लाउड? भाई, नॉन मैटर्स, आई डोंट सी इट। भाई फ्रेंडली फायर का कमेंट पढ़ो। तो भाई ये तो NM भी नहीं है। भाई एनएन कर दिया भाई, नेशनल ये तो नमूना। NN हो गया, ये तो NN हो गया। भाई साहब, दैट्स द बेस्ट डेफिनेशन आई हैव लिटरली रेड फॉर द एनएम टाइटल भाई, दैट वाज नाइस। बाय द वे, हम्म फैबी कन्फेशन रूम गए हैं to express his love for the game of chess apparently, and we will get to know soon कि क्या बोला उन्होंने कन्फेशन रूम में, हम बताएंगे शायद आपको। as Hikaru Nakamura is calculating कि भाई मैं
30 मिनट्स पीछे कैसे हो गया अगेंस्ट अलीरेजा फिरोजजा. सो टाइम प्रेशर में यहाँ पे एक साइड दोनों तरफ सारे बोर्ड्स पे एक साइड टाइम पे पीछे है. यहाँ पे हिकारू स्ट्रगलिंग एंड वहां पे वी हैव डिंग लिरन स्ट्रगलिंग. इसी के साथ एक बार हम प्रग की गेम पे वापस जाते हैं, देखते हैं क्या चला है. लेट्स हैव द कैमरा फॉर प्रग अगेंस्ट कार्लसन, जहां पे बिशप B7 के बाद प्रग is really still in deep thought. And Sahaj यहां पे भी 31 minutes behind. ये तीनों बोर्ड पे, so Hikaru with the white pieces behind on the clock, Prag with the white pieces behind on the clock, and Ding with the black pieces. So कोई ना कोई कम से कम 30 मिनट से ऊपर पीछे है with only like 1 hour of play. Ooh, F5. He goes for it, chat. He goes for it. And Sahaj, look at this. E5 is the only move. Like, non-surprisingly, that's the only move for Carlsen to even continue the game. Because, chat, I have a question for you. It's time. Rajva, I don't know if we have the move वो वाला जो हमारा candidates में था वो है कि नहीं हमारे पास. But even if we don't, so let's say black plays queen d7. He says, नहीं मुन्ना ना काहे का forced. हम तो यहाँ पे defend कर रहे हैं. Takes and now takes. So can you find a very good move for white? One of the best moves for white here. Chat, कौन निकालेगा white to play? Find the best move. Come on, let's go. साहिल भाई ये क्या कहते हैं देखो, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है ना, मेरा आपको पता है मेरे दिमाग में से पहली चाल कौन सी आ रही है. आई थिंक यू शुड नो. थोड़ा चैट को मौका देते हैं. चैट को मौका देते हैं या फिर नहीं. I think you are correct. Maybe. I'm not sure. Okay. Chat, come on. Guess करो. What is white's move here? Best move of Prag in this position. कोई गौरव कह रहा है resign brilliant move. नहीं भाई, वो तो कार्लसन करेगा ना भाई. भाई रुक स्टार F6 क्या है भाई, ये कुछ और ही लग रहा है. नहीं भाई, not rook takes F6. That would be very good if we had a light square bishop to check the black king, but नहीं है हमारे पास. E5 in some cases would be good, but probably not here because मारने के बाद ये घोड़ा पिन है and we are losing the knight, so that will not be great. Going back, Sahil bhai, is Vijay Suryavanshi really close? Vijay Suryavanshi? No, he's not close. He's not close. That's not the move then. Okay. And chat में Gary NM, Mahesh, Tejas, बहुत लोगों ने सही move निकाली है. It is bishop to h6. This move is always beautiful, yeah, always. If you take, then rook takes f6, and because e6 is falling, Carlsen जी white झंडा उड़ाने के टाइम पे आ चुके हैं and flag करना पड़ेगा because he is completely lost. So that's why यहाँ पे Carlsen has to be very careful. He has to play e5. I repeat, he has to play e5, and then we go knight c2 with the same idea. Bishop g5 takes, knight e3, and again Carlsen resigns. So Sahaj, what does black play here? Because मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कार्लसन की मूव क्या अगली. I think के firstly bishop h6 हमने तो कह दिया, but I don't think it's an easy move to see. It's a beautiful move, but I think board पे देखना and खेलना, I'm not sure if this would happen. और somehow मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आपने e5 खेल दिया ना, तो we are again going towards that जहाँ पे दो result ही possible है, that type of position. So I wouldn't be shocked if he doesn't play e5. Really? But then, Sahaj, this is literally the computer talking कि any other move is at least plus 1.5. Wow. So that looks looking really great for Prag. So maybe chat, we are in tune with basically winning against Carlsen today. Bhai, that would be a huge upset. Man, come on, Prag, bhai, come on. Chat, सवाल है तुमसे. And Sahaj bhai, do you think Carlsen will play e5 or not? Yes or no? But that's the only best move. No. Even that is not enough. But do you think he plays e5? Yes or no? Chat, come on, let's go. No, and also Sahil bhai, Niri bhai just given us an update that the confession of Magnus is ready to be played on the stream. Go, let's go. So obviously pretty risky opening choice today. I think his last move, h3 though, was a little bit soft. He thought for a long time there. I guess he was calculating f4, queen c5, but I don't really think that works for black. So probably that was a little bit of a waste of a move. Apart from that, sometimes h3 could
could be used for rooks or queens for attack. So I wasn't overly impressed with that one. Yeah, I think as far as hedgehogs go, like if I can develop, I should have a decent position. Not quite sure how to do it yet. Well, definitely fianchettoing my light square bishop, but I'm not quite sure afterwards whether I'll fianchetto the dark square bishop as well. I guess it depends on what he does, but overall, quite happy. भाई मैं म्यूट पे चला गया था, मैं सुन रहा था कार्लसन का इंटरव्यू बिकॉज वी कांट हियर इट ऑन स्क्रीन, ऐसे तो फोन पे सुन रहा था भाई. आई थिंक ये थोड़ा कुछ एक दो मूव पहले रिकॉर्ड करा गया चैट, बिकॉज आई डोंट सी एनी साइन ऑफ फियर इन कार्लसन्स आईज. एटलीस्ट मुझे उनके वर्ड से तो नहीं दिखा कि ही स्कैर्ड साज. सो कहीं ना कहीं पे ही प्लेस क्वीन डी7. साज, यू वर करेक्ट, यू वर करेक्ट. क्वेश्चन मार्क ऑन द बोर्ड. लेट्स गो 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 गो. Sahaj, even you are on mute, I think. Oh, okay. Sorry. Yeah, I was on mute. So now we can see fe6, bishop h6, no? And even bishop g5 apparently is very strong in this position. Even that's a very strong move with the idea of rook a d1 and just normal development. But yeah, I mean, just takes, and bishop h6 is in the cards. So let's have a look. So bishop h6, what does black do then, Sahaj? He can't take. That's very obvious to us. Bishop e7 is no longer possible. So what is black really doing? Not really sure what black can do in this position. It seems like a really difficult position to play as black, yeah? Nahin? Because queen f7, maybe, just to kind of, defend everything. But maybe now I play bishop g5 again, and again the same idea of putting pressure. And kahin na kahin pe these pawns, they don't look very solid somehow. They are holding on by a very thin thread जो कभी भी हम birthday ribbon की तरह काट देंगे. बिल्कुल. I feel like black's position is like one bad move away from like completely collapsing. Yeah, exactly. एक खराब चाल and position just ऐसे टूटेगी ना, like a house of cards. Saj, you literally stole the words out of my mouth, भाई. मैं copyright strike दूंगा आपको भाई, literally real life में, because क्या ही सब. And this looks really strong. Let's have a look at the other move as well, जो काफी strong लग रही है, according to the engines, and that is bishop g5. Saj, यहाँ पे this move doesn't look that strong at first glance, because I can just play bishop e7, and I mean, what's so crazy about this? Is it just to take d6? That doesn't feel so tempting, no? What's the plan here? Yeah, I don't know what black is planning to do. क्योंकि आप b5 तो खेल नहीं सकते, आप d5 भी नहीं खेल सकते, तो it feels like black की वो position एकदम वो cramped सी रहेगी, you know? And I don't know. I feel like white. I mean, Prag के पास इतना ज़्यादा space है, pieces इतने active हैं, Maroksi bind to, it's always nice to have. Just feels like a very, very good position for Prag. Oh, Sahaj. You know what, chat? There's this debate whether commentators should use engines or not. And this is why I'm on the side of using engines, because kai baar you find some nice ideas which you would never find. Even players will not find it. So hum kya nikalenge? And the best plan actually is queen g3 with the idea of bishop h6 and just assaulting Magnus's king completely. And Sahaj, this is already only move territory now for Magnus. So kahin na kahin pe is the only move king h8. King h8 is lost. e5. Oh, e5 is the only move. And even after this, just simply normal chess, knight f3, and white is still really pushing. But e5, आप जब भी e5 खेलोगे ना, I feel like this is something that Magnus really doesn't want to do, because इसके बाद वो जीतने के chances एकदम zero हो जाएंगे. And wait, Sahaj, why knight f3? My logic says जो हमारा original plan था, just take and knight c2. Yeah, knight e3, knight d5, क्यों नहीं? But ऐसा भी हो सकता है, कि before वो knight e3, d5 पे बैठे, उससे पहले black can play b5. Oh, yeah, that might b5 be true. से वो just वो d5 का hold थोड़ा सा loose हो जाएगा. Maybe that's the issue. Yep. Even this actually, I mean, I'm like, ठीक है, माँ के वापस आके फिर बैठ जाएंगे. Chat.
And Sahaj, I think this is looking really good for Prag. एक positionally grind कर रहे हैं यार, greatest of all time को भाई. This is very rare कि you would ऐसे squeeze Carlsen positionally. If anyone can, it is him. If anyone can. नहीं? या भाई बिल्कुल बिल्कुल पर मैगी अभी तो चॉप. पर हाँ अभी यार वो बिशप h6 वाला मूवमेंट बहुत ज्यादा आई थिंक अगर बिशप h6 आ गया बोर्ड पे आई फील लाइक दैट इज ऑलरेडी वेरी वेरी डेंजरस फॉर मैग्नस क्योंकि वो अगर आप हाँ सोचो ना f6 के बाद आप e5 भी नहीं खेल सकते ब्लैक की तरफ से अभी आपके पास एक वो लाइफ लाइन है कि आप e5 खेल के आप वो हाँ लॉन्ग ड्रॉ पे आप बचा हाँ सकते हो ये हाँ मुझे बहुत डेंजरस लग रही है ब्लैक के लिए हाँ. This is really bad. This is अब really कैसे really bad बचाओगे ये chat. तो हाँ. हम्म। Yeah, this is really not at knight f5 because यहाँ पे मर रहा है, but just knight c2 again with the same idea, I guess. Oh man, this is looking really good, yaar. This is looking really good. I think, chat, we are all in tune for an upset today. यहाँ ये game बहुत crucial है. I think Prag is on tune to defeat the greatest of all time for the first time in classical chess over the board. Ranjay bhai, please confirm. I don't think पहले हराया है इन्होंने कभी. No, I don't think so. I don't think so. Yep. And chat, do we have all the games once? Ranjay bhai, can we have a look at all the games साथ में and then we come back to this game because I want to stick here. I really don't want to shift from this. अगर वो एक birds eye उड़ती हुई bird का view हमें दिख जाए तो 6 गेम हम देख पाए. We can see chat there. वहां पे top left में हमारे Magnus against Carlsen, Prag against Carlsen चल रहा है. We can see वहां पे Caruana Ding में हमने last देखा था, तब से सिर्फ Queen B6 on the board, so Ding trying to put pressure on the diagonal. वहां पे Nakamura trying to block the bishop on B6, similar to what we saw yesterday. And of course, we can see Vaishali against Muzichuk, equal endgame. And वहां Wenjunju crumbling and then Koneru Hampi against Ting Ji Lee. Roughly balanced positions चल रही हैं सब. Although I think Anna Muzichuk does have a pass pawn on D7, so वो देखना पड़ेगा. But she also has a weak king, so very dynamic. I don't know. I feel like वैशाली के गेम में थोड़े fireworks होते हुए हो सकते हैं because B2 का pawn, F2 का pawn, it looks a bit dangerous. But D7 का pawn भी थोड़ा dangerous लग रहा है देख के. Black can also try something like the वो rook B5, rook D5 वाला idea जिससे वो D7 का pawn थोड़ा loose हो जाएगा. हाँ. So I thought because yeah. White can just take on F6. That's why I was thinking it will kind of peter out somehow. I mean, White can technically take on F6, but that's just saying कि मुझे draw करना है. So I feel but Muzichuk is a higher rated player, so I feel like she will want to play for a win, and इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे fireworks होने के chances थोड़े ज़्यादा हैं. True. Lot of opportunities to go wrong for either side, chat, as we come back to Prag against Carlsen. And इस बार Carlsen board से नहीं उठ रहे यार. ये तो अच्छा sign लग रहा है मुझे already. I'm just thinking यार अब आपको लगता है कि you are still gearing for a draw या फिर you think it is changing क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे प्रग के जीतने के chances काफी high हैं. भाई प्रग जीतेगा उससे 10 मैगी हारना कोई दुख है क्या भाई? माना ऐसे सीने फाड़ के भाई 10 मैगी देंगे हम, बस भाई प्रग जीत जाए भाई. इट विल बी क्रेजी. पूरा इंडिया जाग उठेगा भाई. इट विल बी अमेजिंग. And you can see that, chat, just to remind you, the person on the left is 18 years old. So Gukesh also turned 18 today. So now technically they are the same age, Prag and Gukesh both. So he's technically the youngest 2750 in the world right now, I assume. I think Nodebek is a bit older, right? He's 19. Yeah. I think that is true. That is true. Nodebek is 19. Yes, that is right. Carlsen जी ऊपर देखते हुए सीलिंग की तरफ, not ceiling actually, I think he's looking at the screen right now कि कहाँ मैंने गलती करी. And do you think, Sahaj, ki because of the COVID era of chess nowadays, people sometimes can understand chess better looking at a screen? Because I've seen Hikaru do this, I've seen Nepo do this, I've seen Carlsen do this. वहां पे बोर्ड सामने है तब भी स्क्रीन पे देख रहे हैं एनालाइज करने के लिए. You mean over the board या फिर I'm not sure I followed. नहीं, बोर्ड पे बैठे हैं, बोर्ड सामने है तब भी स्क्रीन पे बैठ के एनालाइज कर रहे हैं जब उनकी चाल नहीं है. कई बार उनकी चाल पे भी हो सकता है. I mean why not? I mean बोर्ड पे बैठे I mean I think कभी ना जब आप बोर्ड पे नहीं भी देखते तो it's like you can see things more clear in your head. तो कभी अब you look at a wall या you look at the ceiling क्योंकि वहाँ पे एकदम वो plain surface रहता है ना, तो you can kind of picture something and like in your mind you can go a bit faster, I think, rather than with your eyes. So I think that's the reason. Hi, fake Sahaj in the chat again. By the way, bhai, look at this.
He played the best move according to the engines, and that is अरे यार. bishop to g5. So See, not that. Huh. this is fake, Sayajor, because the Asli one will never say that. Will Why? never, Because because Asli one doesn't believe that, Asli one likes this. Come भाई on. ये है भाई, ऐसे फेक से ले आओ और बोल लो भाई सब कुछ. नहीं, अगर मैं फेक अकाउंट बनाता भी तो मैं अपने नाम पे थोड़ी ना बनाऊंगा यार. हाँ, वो भी है भाई. True. Chad, by the way, he has played. You're absolutely correct. He has played the best move. Carlsen under huge pressure now. And Chad, just to point out how bad this is, every move apart from bishop e7 is lost on the spot. He can resign. Carlsen can resign. For example, let's say you go e5 to attack the knight. Same plan, taking on f6, g takes, and knight c2. It's even a worse version than bishop on f6 because यहाँ पे तो भाई ये bishop तो प्यादा भी better होता है यार. I would rather have this pawn back and give the bishop away for free. I would not want this position for anything. ये मैं कभी भी नहीं खेलूंगा, कभी जिंदगी में कभी भी नहीं. I absolutely despise this. And you can see Pragg is also shaking, I like moving his posture a bit. ऐसा लग रहा है देख के he's getting a bit excited. I think he knows he's better. The nation is getting excited, chat, because right now the greatest chess player of all time, पिज्जा खाने का उन्होंने ऑर्डर किया है, उनका पिज्जा नहीं आ रहा है, he's frustrated and he's looking at the game and वहां पे कुछ मजा नहीं आ रहा है. क्या करेंगे यहाँ पे? And he's at the board finally. I think we will see bishop e7 very quickly. And Sahaj, Carlsen sometimes, because he's the strongest and he knows that, कई बार maybe he might play a bit leniently, but जहां पे only moves, देखा आपने 1 second में खेला उन्होंने bishop e7, जहां पे only moves निकालने की बात आती है ना, sometimes he might play better chess than he would have otherwise. So do you think जहां पे only move की category में आते हैं, it kind of benefits Carlsen maybe because he knows कि भाई I'm struggling, I have to find only moves, and then he turns his spidey sense on, and then he finds everything tuck and it's a draw or events. No. I feel like yeah, this is a bit, कुछ position ऐसा भी होता है कि it's a bit too late to save. Okay. अगर आप bishop e7 का, you just go rook d1 यार, come on. I mean, black क्या कर लेगा यहाँ पे? But rook d1 निकालना है. Do you think Pragg will play this, Saj? Because the idea is कि हमने देखा कि यहाँ पे the idea is rook d1 castles and you have to find this move queen g3, which is really logical also, but also it's not as clear. Oh, he plays rook d1. भाई Pragg ने खेल दिया Sahaj. He's on fire right now. Exclamation mark rook d1. Wow, that's crazy. That's absolutely crazy. भाई रॉबर्ट एंडरसन क्या बोल रहा है भाई? इंडिया इज रियली बैड इन चेस. भाई लिटरली कार्लसन को हरा रहे हैं भाई. क्या हो गया भाई? लगता है ये स्ट्रीम 2 घंटे पहले देख रहा है, जब स्टार्ट भी नहीं हुई थी. भाई look at this, plays rook d1, knows he's better, gets up from the chair. Carlsen stressed. Sahil, एक question है. When do the players go for confessions? Like, is this like a random thing, या फिर ये कभी they have like some times that they have to do that? I think they can go anytime. So, for example, कोई आपने गलती कर दी, you can go and share. It's like a fun way for the players to express what they are feeling. तो अब कभी भी मोमेंट आ सकता है, just like nature's call, it's out of a control, and he can just go and say कि ये करे यार, ये हो गया, जीत रहा हूँ Carlsen को, casual Saturday, casual Tuesday. तो he can just say that stuff and just kind of come out then. तो I think कोई time नहीं है. Of course Hikaru वहां पे 2 घंटा स्पेंड करते हैं, हमने कल देखा, तो थोड़ा लाइन लग सकती है, बट उसके अलावा बाकी सब चंगा सी. मतलब जब भी क्या कहते हैं, Hikaru स्ट्रीमिंग को मिस करता है, then he goes to the confession booth. Yeah, for Hikaru, yes. So rook d1 on the board. अब क्या, black can play castle? Can I play castle? I think he has to. What else? I don't really see a move. I don't really see a move. I mean, e5 again, the same plan, knight c2, and then you have to suffer for the next 50 moves, and h6 doesn't solve matters. Would be lost, I think. That would be lost, I think. Do you think? I mean, I seriously believe that he's regretting playing, this variation against him. ये कभी नहीं होता ना? 100% he's regretting it. इसमें कोई doubt ही नहीं है. But also, it's like, if I've climbed the Mount Everest 500 times and then I see an avalanche, I'm like,
यार एक निकाल देंगे solution. तो maybe Carlsen is also like, okay, I'm struggling right now, but I am the greatest of all time. So if there's a solution, I will find it. So I expect Carlsen to, kind of ponder over this and come up with the best moves now to put up a stiff challenge. But Sahaj, the question is, ki this is in that zone, jahan pe, is it winning objectively or is it like, still draw with best play? So let's say Prag plays the best chess. Is he already winning? So the bar says 1.6. हाँ. I think अगर बोर्ड पे अगर कोई फोर्ट्रेस ना हो ना, क्योंकि फोर्ट्रेस आई थिंक इंजन्स को अभी इंजन्स को नहीं समझ आता होता ना, यहाँ पे फोर्ट्रेस पॉसिबल नहीं है, तो 2.0 and above is I think winning. That's how I understand it. So I think आपने कुछ टाइम पहले कहा था कि हम मेरे को ओनली मूव टेरिटरी पे है. Black has to make the best moves, I think, अब से लेके until the end of the game in order to survive. That's what I feel. Got it. And so chat, I think हाँ. बचाने का चांस अभी भी है, पर उतना I mean even a dubious move can make it into a 2. At 1.6 you can already see it. It looks very bad. Yeah, I agree with that. I think we need one tiny bit. वो पत्थर ना वो उसके वो सड़क के वो उसके एवलांच के टॉप पे पहुंच चुका है, एक फूक मारनी है, बस एक आखिरी फूक चाहिए and it will roll down the hill and it will be over. Then there is no stopping Prague here. So chat, by the way, we are looking at other games. कुछ भी नहीं हुआ है. I'm keeping an eye. We are in the same position that we looked at in the Caruana game. The same position in the Hikaru game. खाली एक H3 या रुकी कुछ एक मूव खेली गई, आधी मूव. So nothing has changed in those other games. तो फिलहाल के लिए we are looking at this game only, and Indian players में open section में यही एक game है. So there's no other game for Indian players. And जब कार्लसन से खेल रहे हो तो यार, I mean, yeah, it should be the star of the day, star of the week, maybe star of the month, maybe, who knows. Maybe, definitely. And I'm still curious here, what is he gonna do now? Maybe he looks definitely very stressed right now. Niri bhai, can we find this data on when Carlsen lost in a classical game last? Because I'm very curious कि classical में कब हारे थे वो? Like last, there was this stat by one of the employees at Chess.com, like I think I forgot the name. So he was like, Carlsen के जो losses है ना every year, it's like 1, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0. It's like a binary thing ऐसे चल रहा है. So his losses in the entire year are like in single digit numbers. तो लास्ट कब हारे हैं जब सोचते हैं तो हमेशा पिछले साल जाना पड़ता है. इस साल नहीं मिलता वो. Chat करिए. Prag 99.6% accuracy, and just for context, Carlsen की 95.8 है. So this is looking really good. 4% भारतीयों से आगे हैं वो. विंसेंट केमर से हारे थे. केमर से कहाँ हारे थे वो? केमर से कहाँ हारे थे यार? वर्ल्ड कप में हारे थे. नहीं, वर्ल्ड कप में हारे थे केमर से. हाँ, फर्स्ट राउंड. आप केमर से वर्ल्ड कप में हारे थे क्लासिकल. यप, दैट वाज द लास्ट लॉस. लेकिन वो मैच जीत गए थे फिर भी. हाँ, but he lost one game. He lost one game, yeah. Yep. Someone saying knight h5, yeah. Knight h5 is a very, very difficult. नहीं यार. So knight h5 में चक्कर पता है क्या है? It's like moving the same piece. हमने देखा ऑलरेडी कार्लसन ने हर पीस बार बार मूव किया है. ये नाइट जो था पहले d7 आया, e5 आया, d3 आया. He's not castled. यहाँ पे you can simply take on e7, take on e6, and now you can't even castle भाई. And in fact, Sahaj, your move, because हम position पे आए हैं, so chat question for you: what is White's best move in this position? Because this move is pure beauty. Can you find White's best move in this position? This will explain why knight h5 is really bad. Come on, chat. देखते हैं कौन है हमारे कार्लसन chat में अगले कार्लसन. Oh, okay. I see it. कि आप long castle नहीं कर सकते because of queen f5 check. Come on, कौन निकालेगा? Am I right, Sahil bhai? Yes, you're right. Okay. This time 100% this time you're right. Okay. By the way, अक्षत भाई ने बहुत स्टार्ट दिया है. इंडिया के टॉप 10 प्लेयर्स की रेटिंग की एवरेज इज नंबर 2 इन द वर्ल्ड एंड ओनली लाइक 5 or 6 points away from US number 1 पे. I think विदित ने स्टैट शेयर किया था. I saw this on his Instagram. And कई लोग कह रहे हैं Queen F3. Now that would be a decent move as well. But यहाँ पे किलर ब्लो है.
which would end the game on the spot. और ये मूव आई थिंक आप सिसिलियन में बहुत खेलते हैं. हाँ, या कई लोग नाइट f5 कह रहे हैं. That's very close, So close. very close, very Very close. close. Very close. आप कालसन नहीं बन पाएंगे, बट आप कारुआना जरूर बन सकते हैं जिन्होंने नाइट f5 बोला. किसी ने भी, oh, finally Daksh Jain has found the correct move. That is knight to d5, sacking an entire piece. अगर रानी मूव करी तो यार, I mean, of course we can't be serious. So e takes d5, and now you take with the e pawn, and look at this, opening the e file. King यहाँ भी नहीं जा सकता, यहाँ भी नहीं जा सकता. For example, king d8, rook d1, knight e6 check. अरे बाप रे बाप, end the game. And if you castle queenside, and this is where Sahaj's move comes into the picture, queen f5 check. And ये घोड़ा आपने ही h5 पे खेला था, तो गलती आपकी. So that's why it's not possible. And it would be game over within 5 moves. So yeah. Definitely. So without the option of knight h5, आप castle तो हमने already discuss किया था, but castle के बाद भी I think pressure तो है. Okay, let's just go castle. What now? Do I play like knight f3, knight c2? क्योंकि मुझे लग रहा है कि d6 के pawn पे थोड़ा pressure मारना चाहिए. और I'm also thinking just play something like b3. क्योंकि black क्या कर लेगा? Yeah, so b3 is definitely a very good move. I think जो हमने queen g3 एक move देखी थी, that was the best one. उसके अलावा b3 is very logical because ये pawn कभी ना कभी तो black attack करेगा ही, and you're kind of pre-defending it. मतलब ऐसे over में pre-hit करते हैं ना, तो वैसे ये pre-defend कर दिया हमने. Now the queen is free. Next move queen g3 खेल सकते हैं. So that's one potential move. I was also thinking कि b3 का idea ये भी हो सकता है कि I want to play knight a4 just to attack the b6 pawn. That's tricky. से तो नहीं बचा सकते क्योंकि e6 का पॉन मर जाएगा उधर, पर अगर आप बिशप से बचाते हो तो then I can take on f6. हाँ, that's a tricky move. That's a very tricky move. Knight a4. Something I wouldn't consider because ये थोड़ा उल्टा जा रहा है, but very not easy to defend, yeah. Also लेकिन आपका e4 का पॉन अभी थोड़ा सा weak है, तो you have to kind of like like play rook e1, something like that, and then play knight a4. But yeah, it seems like an interesting idea. Yeah, definitely interesting. And because b5 पे there's knight b6 chat, forking the queen and rook, that is the idea. And even if rook c8, that's still a fork. So knight on b6 is a great piece as well. उसके अलावा क्या options होते हैं Saj? Anything else? Because I can also see the rook opposite the queen. So इस queen को हटाने के ना benefit बहुत है. Maybe queen e3, queen f3, queen e2, something, moving the queen and kind of setting up some tactics like e5 here maybe. That looks good. I like that. I like that quite a lot actually. E5 जब भी successfully आएगा ना, it's going to be just over. जैसे आप यहाँ पे भी देखो, let's say you play queen g3, right? Yeah, let's play queen e2. Let's play queen e2. Black goes like rook c8. हाँ. Simple developing move. अब यहाँ पे e5 खत्म. e5 is mate यहाँ पे. मतलब d5 knight e6 यार खत्म. Look, Sahaj भाई, chat से पूछेंगे after d takes e5. What is White's best move in this position? Come on, chat, nikalo. And this is why I think now when I look at it, I understand why queen e2 is the best. Sahaj, now it makes sense. So chat, can you find the best move for White here? Kaun nikalega? Come on, chat, tactics, puzzle rush, so type of tactic. Sahaj bhai, while the chat thinks, I'll just quickly go and refill my water. मैं 1 minute. हाँ, बिल्कुल भाई. साज भाई पानी भर रहे हैं और यहाँ पे कार्लसन की आंसू से आंखों से पानी निकल रहा है. सो फिलहाल कार्लसन स्ट्रेस्ड आउट, कोई मूव नहीं क्लियर कट मिल रही है. एंड आकाश भाई, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. जादूगर जी, घोड़ा तो बिल्कुल सही है, बट कहां जाएगा ये? नाइट टेक्स e6 इज द मूव. रुक अटैक्स द क्वीन, knight attacks the rook, and you can play queen c6, and that's why the queen on e2 defense mate. And now we can take the rook, and that is basically, of course, थोड़ा हवा मारेगा black यहाँ पे एक लंबी गेम के लिए, but this is basically over. So going back, this is the current chart. You can see how बहुत variations में यहाँ पे black is just 5 moves away from losing. अगर आप और मैं खेल रहे होते, प्रग मतलब लिटरली डिनर ऑर्डर कर रहा था अभी. तो that's why I think Carlsen के लिए एक बहुत tough challenge. And chat, you're all correct. Knight e6 is the move. Carlsen slumping in his chair.
बाय द वे टाइम देखो, एट वन पॉइंट पूरा कुछ नहीं 41 मिनट्स की लीड थी कार्लसन के पास, समथिंग लाइक दैट, 35-41 मिनट्स. नाउ इट्स डाउन टू 20 मिनट्स, आधी हो चुकी है. एंड आई फील ही स्टिल नॉट कन्विंस्ड ऑफ अ पर्टिकुलर मूव. तो यहाँ पे कार्लसन, इवन दो ही सच एन एक्सपर्ट इन दिस पोजिशंस, प्रग ने आउट प्ले कर दिया है. दैट्स सो रेयर, आउट प्ले करना मैग्नस कार्लसन को. सो ब्यूटिफुल मैन. It's amazing to see Prag do this, and I'm hoping more and more Indian players do this. Next अपना गुकेश आएगा, फिर अर्जुन आएगा, फिर विदित आएगा, फिर निहाल आएगा. मैं भी बीच में घुस जाऊंगा कहीं ना कहीं, of course, just kidding by the way. तो देखते हैं क्या होता है. And Carlsen, you can look at him, man. Bhai, and Sorry, I'm back. it's Sahaj bhai, I was just wondering, we are looking at somebody जो आज तक ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में, मतलब देयर हैज नॉट बीन अ पर्सन अलाइव ऑन प्लैनेट अर्थ हु इज बेटर देन दिस गाय. दैट इज अ बिट क्रेजी. मतलब सोच, देन मैग्नस. ऑफ कोर्स भाई, और कौन है? हम दोनों में से तो नहीं होगा ना भाई. तीन ही लोग दिख रहे हैं स्क्रीन पे भाई, और किसकी बात कर रहा हूं भाई? नहीं, बट लेकिन वो भी है ना. आई मीन इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट द गोट डिबेट, देन इट्स बिटवीन गैरी एंड मैग्नस ना. बट या, आई मीन इट्स आई फील लाइक विद एवरी गेम ही प्लेज, he's making the statement more and more. How it's like, Gary, if he was born later, then he would also be better. Yeah, but in terms of pure knowledge and pure chess skill, because he had engines, then Carlsen is objectively better. It's just because Gary के पास उतने resources नहीं थे, तो then we say कि Gary is also the GOAT, right? But if we had peak Gary, peak Magnus, I feel कहीं ना कहीं Magnus would have an edge, purely thanks to engines and the resources he has, not because of skill. Well, yes, of course. But अगर दोनों peak में अगर इस time पे होते, तो I feel like then दोनों के पास resources हैं. Then that would be an insane match to see. So it's crazy chat. We can see him live, and in fact, chess.com ने आजकल वो banter blitz फिर से start कर दिया है. If you remember that, Sahaj by Chess24 होता था. So it started again. Maybe someday we'll see Magnus play banter blitz again and casually crush us. Starting, क्या बात है? Yeah, it started already. I think Jan Gustafsson ने पहला match किया था. So yeah, it's crazy. Oh, nice. That used to be such a big thing back in the day. Yeah, that was like our वहां से मतलब streaming मतलब basically start हुआ था. वहां से you started seeing like people trash talking and stuff. हाँ, अच्छा है कार्लसन इंडियन नहीं है, वरना पेरेंट्स कहते हैं यार ठीक है यार, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट शो तो ठीक है यार, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली यार. शर्मा जी के लड़के को गवर्नमेंट जॉब मिली है भाई. सहज भाई, आपकी रेटिंग 2510 इज माय रेटिंग, नॉट वेरी हाई. यार ये क्या है, मतलब साथ वैसे ये मत बोला करो यार, नॉट सो हाई भाई. भाई आई नो कार्लसन फ्रेम में है, बट मैं भी हूं फ्रेम में भाई. इट कैन बी बेटर. ट्रू. तो थोड़ा पॉजिटिव है ना, दैट्स व्हाई. अब मैग्नस थोड़ा, आई फील लाइक he knows he's in trouble. So Saj, you're correct, and हमारे 500 लाइक हो चुके हैं. So I think it's time for the first membership challenge. Chat, are you ready? मुझे बताना जब तुम ready हो. Then I will ask the first question, and अगली membership 1000 likes पे होगी, तो let me just pin that message. इससे पहले chat पहले ही शुरू कर दे वो spam, तो let me just pin that. अगला वाला 1000 पे होगा chat. Oof, man. Crazy. 5010 नहीं, 2500. 2510. 5010 भाई. भाई फिर तो स्टॉक फिश बोला था ना. हाँ, फिर स्टॉक फिश कोचिंग ले रहा था भाई साज भाई से अभी. स्टॉक फिश मेरे से ट्रेनिंग ले रहा है. Ready? Answer is Sicilian dragon. नहीं भाई, that's not the answer भाई, not even close. Carlsen तो अभी चैलेंज आप अभी कर रहे हो या फिर when is it starting? So chat, this is 6:41 in मेरे टाइम, तो इंडियन टाइम हो गया 7:15 8 9 10:15 हो गया ना. So 10:15 से लेके 10:20, अगले 5 मिनट में, अगले 3 मिनट में, अगले 3 मिनट्स में मैं कभी भी सवाल पूछूंगा. एट एनी पॉइंट गूगल खोल के रखो, ठीक है? कभी भी बोल दूंगा मैं, बस तैयार रहना, ठीक है? ओके मैन. सो फिलहाल के लिए मैं एक्चुअली साहब भाई आपसे वो सवाल गलती से पूछने वाला था, तो आई सेव इट फॉर द चैट. पूछ ही लेता हूं. सो मेरा सवाल ये है कि कार्लसन जब मूव खेलेंगे, उनकी क्लॉक में कितने मिनट होंगे? सेकंड्स छोड़ दो, कितने मिनट होंगे आपको चैट में टाइप करना है. एंड देन वंस ही प्लेस द मूव, यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट विद योर मैसेज एंड टैग मी ऑन ट्विटर.
The first person to tag me with the correct one, the first person to tag me with the correct minute gets the membership. याद रखना, not the first one to type, the first one to tag me. हाँ, मैं कहता हूँ 1 minute and मुझे लग रहा था कि he's just going for the move just now, by the way. 1 minute कैसे होगा भाई? 1 मैं minute. कह रहा हूँ 1 hour and 8 minutes. 1 hour 68 and 8 minutes. 68 minutes that is. Yes. यार इतना किया तो एक और ऐड कर दो, 69 ही कर दो यार. मैंने जान के 68 किया था. Chat not 108 minutes में कितना है? Minutes में कितना है? Because 108 मेरे को नहीं चाहिए minutes में, ताकि यूनिफॉर्म रहे. इसमें तो बार मतलब वापस जाके देखना होगा ना कि who has won the challenge. हाँ, तो chat you will have to take a screenshot and send me. तो लोग अभी भेज भी नहीं पाएंगे unless ये क्या हुआ भाई, मैं अटक क्यों गया? हाँ नहीं you're on. हाँ, मैं अटक गया था I think. हाँ, 68 minutes chat. That's the answer. I'm telling you. let me also guess. First. Let me also guess. So मेरे को guess करने दो. I'm going to guess. Oh, did he play? He played something. He played Rook C8. So the answer is 76 minutes. So chat, you know the answer. Screenshot first person to tag me with 76 minutes. Actually, not 70. Oh, sorry, no increment. 76. No increment. हाँ, ठीक है. 76 minutes is the answer. अगर chat ने 1 hour 16 minutes लिखा हो तो चलेगा? क्योंकि I can see किसी ने लिखा हुआ है. नहीं, let's keep it uniform. 76 minutes and you have to tag me total. First person to tag me gets a chess.com diamond membership for 1 month. तो chat, मैं वो बाद में स्ट्रीम किया चेक करूंगा. So tagging शुरू की जाए. बढ़िया. So ये हो गया पहला. अगला चैलेंज हम करेंगे भाई 1000 लाइक्स पे. So chat, तुम्हारे हाथ में लाइक बटन दबाना स्टार्ट करो. 630 हो चुके हैं. 1000 लाइक्स पे अगली मेंबरशिप. As we wait for Prag to play now. Sahaj. Oh wait, Rook C8 is a mistake apparently. Really? Oh Sahaj, it's the third best move in the position, but it's a slight mistake. And apparently, Queen E2 for some magical reason is winning. I guess it's E5 again. Queen E2. It's winning? Yes. Queen E2 is close to winning or actually winning because E5 ka threat hai. Black is not castled. And that technically kind of forces E5, right? Because if you castle now, E5 takes 96. हमने यही तो लाइन दिखाई थी. हाँ, but in that position he had castled. There was no Rook C8. Right, but हमने कहा था castle Queen E2 Rook C8 and then हाँ, E5. so that's why Queen E2 is a brilliant move, forcing E5. Now Knight C2 and Sahaj, I don't see how you avoid this endgame. Oh, this is looking very bad for Magnus. मतलब ऐसा हो सकता है आज कि प्रग जीत जाए और मेरा मैगी का काउंटर भी +10 हो जाए. यार मैगी मैं दे दूंगा, मैं 11 दे दूंगा भाई इसके लिए, बस प्रग जीत जाए भाई. चैट, आई थिंक प्रग कगार पे है मैग्नस कार्लसन को हराने के. दिस इज अमेजिंग. Rook C8 slight inaccuracy by the goat. एंड यहां पे अब सिंपल प्लान है. Queen E2. आइडिया क्या है? You put the rook and the queen opposite each other. ताकि अगर हम कोई टैक्टिक लगा पाए. ये बहुत कॉमन है. जहां पे अपनी क्वीन जाती है वहां पे हम रुक खेलते हैं. एंड यहां पे E5 का प्लान है. लेट्स से ब्लैक कैसल्स हमने अभी देखा है. साथ मैंने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया. E5 घोड़े पे अटैक. You have to grab this and now knight takes E6. Rook attacks queen. Knight attacks rook. Queen कहीं मूव होगी और हम यहाँ रुक खा जाएंगे. And exchange up Sahaj. Do you think he will convert this? I think it should be pretty comfortable, yeah? No, very, very comfortable, I think. But I mean, थोड़ा बहुत तो counterplay है black के पास, but I feel this is winning. This has to be winning. Yep. And I can just, for example, let's say you pick up this, I will take this, then I will, put the knight on D5, and I will remove your bishop pair, and this should be lost. And that's why I think Carlsen का बहुत बुरा हाल होने वाला है. And that's why after Queen E2, you're forced to play E5, but then हमारा plan of taking on F6. That's the question. This is the question, Sahil bhai, कि ultimately what do you choose then? Do you choose E5 or do you choose castle? क्योंकि castle में आपका material कम हो रहा है, पर E5 में आपके पास जीतने के chances 0 है. Sahaj, you will not believe जो Indian best move कह रहा है Black की. It's that desperate for Magnus Carlsen. Chat, can you guess
क्या ही ridiculous move इंजन कह रहा है कार्लसन को खेलने के लिए यहाँ पे. This is insane. Pragg is in the driver's seat. Sahaj, what do you think? Is it knight g8? Yes, knight g8. Man, this is crazy. Knight g8 खेलने को बोल रहा है, and यहाँ पे you can literally just play f6 and sack it, not even care. Rook file खुल गई, and this is now knight e3, and Carlsen is basically busted. So Yeah, chat. f6 is a very, very nice move though. f6 is a very nice move. Sahaj, will we So see Carlsen lose in less than 25 moves today? That I don't know when has happened last. No. ये हमें 10 साल पहले जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है. Can we get this stat somehow, निधि भाई? कि 25 मूव से कम. Magnus lost to Anish in less than 25 moves with white pieces. मेरे को याद है टाटा स्टील में हुआ था 2013 या 14 में. And he lost with white pieces. कुछ तो 20 पैसे. उससे पहले भी हो सकता है actually. But 13 is 11 years back भाई. वही तो कह रहा हूँ. 10 साल पीछे जाना पड़ेगा. 10 साल की बात कर रहे हो. अच्छा. But he was already a 2800 player. वो already 2800 का player था वो. तो मैं उसमें तब की बात कर रहा हूँ. But I remember he was कि वहाँ पे he lost with the white pieces. उसने कुछ पीस ब्लंडर किया था against Anish. I'm gonna try and see if I can check when was this game. वैभव कह रहे हैं मैग्नस कन्फेशन बूथ में गए, उन्होंने कहा ही स्कैर्ड. चैट जिनको अपने ट्विटर फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, ट्विटर पे तैयार रहो भाई. जैसे ही मैग्नस हारेगा ना, प्रग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, प्रग विड कार्लसन बस स्पैम कर देना भाई. देखना भाई अभी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे तुम्हारे. मैं तो ये करता हूं भाई. भाई so you know Sahil भाई, that game was in 2011. तो मतलब 13 साल हो गए उसको, but he lost in 22 moves with the white pieces. 2011 की बात है, but लेकिन I think recently maybe not. केशव भाई कह रहे हैं लेट प्रग विन फर्स्ट, साहिल भाई फिर उछलना. यार पता है द रियल फन इज इन द जर्नी भाई. एक बार आपने मतलब करोड़पति अरबपति बन गए, उसके बाद तो ठीक है भाई. वो जर्नी में असली, वो स्ट्रगल में असली मजा है भाई. उसमें मजा नहीं लिए तो भाई फिर क्या फायदा भाई. पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पूरी गेम निकल जाएगी. इमेजिन करो कि लेट्स से प्रग 10 ब्लंडर ना करे, टचवुड, तो फिर हमने पूरी गेम में किया क्या? बस रोते ही रह गए पूरी गेम में भाई. हार रहे हैं तब भी रो रहे हैं, जीत रहे हैं तब भी रो रहे हैं. एटलीस्ट एंजॉय तो करे भाई जब तक जीत रहा है. कितना रेयर है कि कार्लसन इज लिटरली लॉस्ट आफ्टर 15 मूव्स. जस्ट इमेजिन. बहुत रेयर है. हाँ. I don't think I can check also कि white say it hasn't happened. I'm still checking by the way if this has happened before, but I don't think so. You might be right. In 10 साल में नहीं हुआ है अभी तक. Any prediction of today's match? कह रहे हैं मोहित भाई. यार मोहित भाई, I think we are all set. आज तो कुछ अपसेट होगा खतरनाक. मैग्नस कुर्सी पे तो नहीं आया. I think he has gone to the confession booth. वो हमारे पास वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी चैट, तो वो भी देखेंगे. अभिमन्यु जी कह रहे हैं व्हाट्स द बेस्ट मूव फॉर प्रग हियर. हमने डिस्कस किया बहुत हेवीली क्वीन e2. इसके दो आइडियाज हैं. पहला रुक ऑपोजिट द क्वीन विद द आइडिया ऑफ e5, ताकि हम d फाइल ओपन करें, कुछ टैक्टिक्स आए. एंड सेकंड टू डिफेंड g2, ताकि जब भी हम 9t6 खेले, हमने उस वेश में देखा, इफ वी गो बैक एंड गो हियर, क्वीन c6 खेलेगा, ब्लैक थ्रेटनिंग मेट इन 1. दैट्स व्हाई क्वीन e2 पे रखना जरूरी है, ताकि वी आर ऑलरेडी डिफेंडिंग इट. And that's why Queen E2 is just a star move. And Sahaj, my question to you is, do you think Pragg has seen it? Queen E2, I would say it's not a very hard move. उतनी difficult नहीं लग रही मुझे. E5 96 का आइडिया बहुत नॉर्मल सा है यहाँ पे, तो I feel like he probably has. But he's just thinking, you know, Queen E2 पे रखनी है, Queen G3 पे रखनी है. Can I play Queen G3 also? या उसमें C4 का pawn मर रहा है. That's also going into some complications, but मुझे लगता है कि इनमें से एक he can choose. I think because Black ने कैसल नहीं किया ना, that's why it's not as great. मुझे लग रहा है ना? That's the main issue. अगर कैसल किया होता, then I can already play bishop and it's almost lost. But यहाँ पे rook c4 and Black he's fighting. By the way, we are ready to play the Magnus confession booth video. Niranjan bhai, let's go listen to it. Let's go. I'm a little bit scared that he's just going to go fe6, and then knight d5 now. The thing is, I'll take the knight, maybe I'll castle queenside, but it looks quite scary. I kind of doubt that it's objectively good for white, although I'm not quite sure. But I feel like in other lines I'm probably quite all right. I'll develop with bishop e7, castles, maybe rook ae8, bishop d8. Sometimes I can also go for moves like b5, e5 or d5. So I should be
should be pretty okay there. But yeah, knight d5 scares me a bit. So I'm probably quite Man, alright. he said he was. Oh, ये क्या हुआ? अच्छा, मेरे को लगा गेम ओवर हो गई एक्सटेंड के लिए. I thought he resigned. I thought he resigned. Why? He said he was a bit scared, but he also said he thought he was okay in some lines. But this was in the moment when he played Bishop G5. तब से things have only gone downhill for Magnus Carlsen chat. So फिलहाल के लिए all the pressure on the goat. It's very interesting to me. He said he was afraid of fe6, fe6, knight d5, and यहाँ पे he thinks he's fine. हाँ 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 हाँ. अजीब है थोड़ा ये, but because I would think the opposite वहाँ पे. I think वही है ना कि it's like it's so such a difficult position कि even he's not able to evaluate it. I think that's how difficult this is. So I would say कि Pragg has a great chance to cause an upset here. Oh, he's about to move. Sahaj, did he play Queen E2? Did he play Queen E2? Yes, he did. Yes, he played Queen E2. He played Queen E2. Carlsen is gone. अब क्वेश्चन ये है कि मैग्नस को E5 खेलना जरूरी है या फिर उसको एक्सचेंज देना जरूरी है. Sahaj, E5. This is again chat engine evaluations. मतलब objective truth के आसपास. E5 is +2. ठीक है? That's the best move for black. Everything else is +3 at least. This is literally lost now for Carlsen. This is literally lost. It's not even a doubt anymore. If Pragg plays the best chess, he is winning this game today, and it's only been 15-16 moves so far. इतना तो थ्योरी रट के आते हैं भाई, इससे ज्यादा थ्योरी होती है टॉप प्लेयर्स की. चैट क्या खेल रहा है Pragg यार. This is insane. This is insane. Every response is at least +2. You're absolutely right. Like यहाँ पे black कुछ भी I mean there is nothing you can do. It's like white कुछ भी खेल सकता था यहाँ पे, you know, and it still would be +2. But I think Queen E2 is the most precise move that you could play in this situation. अब अगर आप सोचो ना यहाँ पे you have to choose between एक choice ऐसी है जहाँ पे आप ये बोल रहे हो अपने opponent को कि यहाँ पे मैं अब मेरे जीतने का चांस अब 0 हो जाता है. That is E5. दूसरा ये कि अब दूसरा ये कि आई एम गोइंग टू गिव अप माय रुक. आप कैसे चूज करोगे इसमें से? Sahaj, I'm going to ask you a very interesting question now, which I never thought I'll be able to ask ever in my entire life. Do you think Carlsen will resign before move 20? No. He looks a bit frustrated though, but no. नहीं, please don't manifest. Don't manifest this. 20 से कम में अगर उसे रिजाइन किया ना, मैं कम से कम 20 लूंगा आपसे. भाई ये क्या है भाई मैं काहे गरीब हूँ भाई. Pragg पैसे कमाए, मैं गरीब हो जाऊं भाई. ये तो गलत बात है. I'm just saying you have to pay up for that. भाई that is crazy. This is style points. भाई नहीं यार, ये तो भाई इसमें तो यार I would say कि Pragg defeating Carlsen in less than 20 moves should literally be national news. Like that is insane. That's like so comparable. And that is the right form of NN then. भाई हर जगह से मैं काहे बेइज्जती खा लेता हूं, मेरे को समझ नहीं आता. एनीवेज, फिलहाल के लिए चैट कोई कह रहे हैं Pragg ब्लंडर प्लीज, इसको बैन करो भाई. कौन है भाई ये? जेनरिक बोरिक होमोसेपियन भाई. जस्ट किडिंग. Oh man, this is crazy. Chat सब लोग एक बार भाई Pragg OP spam कर दो यार, because I know it's not over, but I really just want to enjoy this moment. क्या ही epic moment है, and regardless of what black plays, unless Pragg makes a mistake, this is lost for Magnus Carlsen now, and I think he knows this by now. Saj, can we have full screen for a moment, because I want to read his body language here. Does he know now? Because as we saw, पहले उन्होंने बहुत overestimate करी अपनी position कुछ हद तक. Saj, what do you make of it now? I feel like he should know he's worse. पक्का. When you see वो E5 वाला threat ना, उसमें एकदम समझ आ जाता है कि अब कुछ नहीं है मेरे पास. And I think वो calculate तो वो कर पाएगा कि कि एक तरफ से you have to play E5 जो clearly he doesn't want to do. हमने पहले भी देखा था because he played Queen D7 क्योंकि वो E5 पहले भी खेल सकता था. और अब प्रॉब्लम ये है ना साहिल भाई कि अगर अब वो E5 खेलता भी है तो it would be in a much worse position in comparison to 2 moves ago, क्योंकि तब आपके पास चॉइस थी. लेकिन आप सोचो अगर उसे पहले E5 खेला होता उसके बाद वो Queen D7 थोड़ी ना खेलेगा. Yup. So it's like he has to agree कि it's a bad version
of the same line जो पहले उसने खेलने से मना कर दिया था. So Saj, hence my question again: will he resign before 20 moves? I think job keh rahe ho, it adds up perfectly to that. Because Saj kya khelega wo yahan pe? Look at this. He's only 2 moves. By the way, there's one move, rook c5, which apparently is a last desperate, but yahan b4 and then rook e5. This is one last try, but then knight f3 and you sack the exchange. So it's basically another version to sack the exchange. It doesn't improve anything. And two other options, chat. Let's have a look deeply. So first option is basically a move like, castles. And yahan pe hamara queen e2 ka main idea reveal hota hai. We've seen this before. The idea is e5, attacking the knight. The knight basically has nowhere to go. h5 pe hum maar denge. e4 pe maar denge. d5 maar denge. Knight e8 is one move, but Sahaj, I mean, just takes, even just directly f6. This should be resigns. It's not resigns apparently. Oh, it's not resigns. Maybe directly f6. Resign, yeah. It should be resigns, no? It feels like it should be resigns. f6 सीधा करो ना. हाँ, सीधा करते हैं. हाँ, सीधा करते हैं. ये तो खत्म है. So ये खत्म है because हमने basically block कर दिया and our pieces can quickly transfer to the king side for mate, but black के pieces defense नहीं कर सकते. So if this is not possible, then you have to basically just take on e5, and now I take on e6, queen c6, knight f8, let's say king f8, bishop f6, knight d5. Yes, almost forced a chat. Let's say queen c4. I mean, okay, first queen hanging hai, rook takes, and yahan pe knight b6, knight f6, even just simply takes. Knight f6 I think easiest है, knight f6 के बाद rook d6, क्योंकि rook c2 के बाद आप rook f2 खेल सकते हो. Rook f2 है, and this is where he resigns. He literally shakes hands and resigns. So ये endgame तो forced lost है, and this is almost forced. So we go back. What else? Second is capture the e5, and this is where we saw कि ये position is really bad. We either take on f6 directly or first go knight c2, castles, takes, knight e3. Let's say he plays, I don't know what he plays. Saj, what does he play? Please कोई move बताओ मुझे यहाँ black के लिए. I do not want to be black here at all. बताओ ना Saj, कोई तो move बताओ. मतलब मैं देखो मैं रिजाइन तो नहीं करूंगा. आई विल, वही होता है ना कि अगर आप ब्लंडर भी कर देते हो ना, मतलब ओपनिंग में पहले, आई थिंक ये हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि आई वाज टेलिंग यू अबाउट माय गेम जहां पे मैंने 9th मूव पे कुछ तो ब्लंडर किया था, बट आई केप्ट प्लेइंग क्योंकि मुझे आई डिडंट वांट टू लूज विद लेस देन 20 मूव्स ऑन माय स्कोर शीट. मुझे लगता है कि यार गेम तो थोड़ी स्कोर शीट तो भरे, ऐसा लगे कि तुमने काम किया है, तो आई फील लाइक वो थोड़ा तो खेलेगा यहाँ पे. But yeah, definitely it's very demoralizing to face this. Did you see that reaction by Magnus just now? He's definitely not happy. Yeah. And यहाँ पे I can just take, and now knight d5, and this is how basically chat you just resigned. This is just completely busted. ये knight कभी नहीं हिलेगा यहाँ से. Bishop d5, knight d5, good knight against bad bishop. There's no pawn on c4, but it doesn't really help black. And Carlsen is objectively lost in this position after 16 moves against the I would say prodigy, but legend ही बोलना पड़ रहा है भाई प्रज्ञानंदा R. बिल्कुल. Sahil bhai, while Magnus is thinking about his his fate, I mean I want to say his move, but ये हर जगह ही खराब लग रही है. Maybe we can check the game of Fabi versus Ding and just Hikaru Nakamura just for a quick few seconds. Yeah. So can we have the board on the screen, Niri bhai? And we'll quickly have a 30-second look at both the games. Both games are looking roughly balanced. First, going to the game of Caruana against Ding. This is where we left it. तब से काफी moves आई हैं. I think knight d4, queen b6, bishop e3, takes, queen b7, थोड़ा queen का dance, unnecessary dance यहाँ पे. E takes, pawn takes, knight g3, and this is the current position. Saj, it does feel a bit better for white now because g7, knight h5 incoming. I would say slightly better for white. Yeah, slight preference, maybe practically slight preference to white. Also, Fabi का time काफी कम होते हुए, because last time I remember it was 155 or so, 158 or so. I can't remember exactly, but he was definitely in prep. But abhi bhi, he has a very big time advantage, but it's getting less and less. Abhi ऐसा बोल रहा हूँ, but Ding is the one thinking in this position. And yeah, but looking at the the opposite colored bishops, I feel like थोड़ा सा advantage है white के पास. And also Ding वो वही वो कुर्सी का सीन कर रहे थे. कुर्सी का सीन देखा आपने? He is doing it again. I think he's not comfortable in these chairs. That's pretty obvious to me. I think he's just not comfortable in the position also. True.
And koi keh raha hai, don't write off Magnus. Nobody's writing off Magnus, but objectively he's lost. Of course, he can defend it. How can you write off Magnus? Yeah, yeah. कोई टैक्स कट थोड़ी है. Anyway, by the way, this game looks very interesting. So फिलहाल के लिए Caruana, I would say, has a good position. Time पे भी up है. Regardless of using more time now, he's still ahead by 30 minutes or so. So I think कहीं ना कहीं पे बढ़िया लग रहा है. Going to the game of Hikaru against Firouzja once, वहां पे we had a Maggie bet again, जहां पे I think Sahaj ने कहा था draw and मैंने कहा था either side wins. So फिलहाल के लिए लेकिन draw के chances very high, Sahaj. Definitely यार 0-0 exactly. कोई यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है बिल्कुल भी. I think this was Alireza's preparation for a very long time, but हाँ. now the time is more or less equal. पर लेकिन position भी there is not much to play for either side. ऐसा हो सकता है कि कि एक साइड थोड़ा सा पुश करे for some time. Although I'm not sure कौन सी साइड पुश करेगी यहाँ पे. I feel like जो भी साइड ओवर पुश करेगी it can get a bit tricky. अगर ब्लैक ओवर पुश करता है तो D4 का पॉन थोड़ा वीक होता हुआ दिखता है मुझे. अगर व्हाइट ओवर पुश करता है तो E2 का पॉन वीक होता हुआ दिखता है मुझे. It's like either ways it's not gonna face मुझे लगता है कि यहाँ पे +10 touching is on the horizon. भाई आई होप द इवैल्यूएशन इज +10 बिकॉज हमने देखा था फ्यूजन ने कैसे ब्लंडर किया था हिकारू के अगेंस्ट इन द कैंडिडेट. सो मे बी सम blast from the past by Firouzja here, and then I get 10 Maggies. That's what I'm really hoping for. But फिलहाल के लिए, as Saad said, the game does seem to be equal. एक नजर मारेंगे women's section पे very quickly. This is Humpy against Tingji Lee, and Saj, this does feel close to equality. But would you say the bishop is better than knight? Like technically yes, but लेकिन ये difference इतना छोटा है कि I feel like it really doesn't matter. I feel like यहाँ पर this is going to go into it. As you know, हम ऐसा कहते हैं कि इन end games को ज़्यादा मतलब study करना चाहिए. जब भी ये board पे आती है ना ये positions, वो draw ही होता है हमेशा. Like तुम जितने भी इसमें studies कर लो, it just ends up in a draw, and that's what happens, and sadly. I feel like मुझे शॉक लगा. लोग कह रहे हैं Prag is worse. मेरे को इसलिए लगा शॉक लगा ना, मैं वापस आ गया. सॉरी साज भाई. So मजे मत लो चाट यार. ऑलरेडी वो बेचारा इतने स्ट्रेस में है साहिल भाई यार. मतलब एक तो प्रग जीत रहा है और ऊपर से he is about to lose like 20 of his Maggies. Think about that. 30 सेकंड में आ रहा हूँ. Don't worry. ठीक है. And next game is final game is before you go to the Prag game is Anna Muzichuk against Vaishali. This is the current position. Saj, queens have been traded off, so it does feel like closer to a draw. But yeah, some dynamic play here. D7 का pawn though. That D7 का pawn though, like that. I don't know. White pawn up भी है ना? हाँ, white pawn up है. White is a pawn up right now. But ये pawn कुछ थोड़े हल्के में ही चल रहे हैं भाई. कोई भी कहीं भी चल रहा है. नहीं, यहाँ पे खेल सकता है white. यहाँ पे खेलेगा white. I think वैशाली को थोड़ा defend करना होगा. So I think this might also be a long game. Who knows? ठीक है. So we'll keep track of this chat. Going back to the star game of Praggnanandhaa against Magnus Carlsen. Queen E2 and E5 on the board by Magnus. So Sahaj, he has accepted his fate as this being the only try. Let's have the camera on the screen very quickly because we are going to see Magnus Carlsen struggle in a very long game here. Bishop F6 on the board. Bishop F6, and now we will see knight to C2, and we are headed into a good knight versus bad bishop endgame. Tej, why did you retire from professional chess? No, I did not retire. I would say kuch time ke liye I was taking a break for a very long time, and now I'm coming back, more or less. I haven't retired. By the way, look at this, Saj. भाई I never started only. Retire वो होता है जो बंदा खेलता है. By the way, Bishop F6 played by Praggnanandhaa. Bishop F6, he did not allow Carlsen that option with knight G8, and now our move, Sahaj, knight to C2, and this is where Sahaj, I have a question and chat for you as well. So if you are given this position against Carlsen, Sahaj, do you think you'll win this? मैं हारूंगा नहीं. I'll give the same answer as you. मैं हारूंगा नहीं यहाँ पे. I think you'll probably even end up winning this. I do think you'll end up winning this. बस मेरे को ये पता है मैं हारूंगा नहीं यहाँ पे. मैं B3 पे अपना pawn, knight को D5 पे, रुक D3, रुक D1. I was like, आओ. क्या करोगे आप? Man, this is what a beautiful position for Prag. But this is elementary Sicilian. When you start playing the Sicilian, this is what you aim for, and काफी ironic है कि Carlsen का ऐसे घटिया bad bishop आने वाला है. Like, this is not what you see at the top level ever. कभी भी नहीं. हाँ, you are absolutely right about that.
Kincho is saying that she would not. I don't know. I feel like if you just put your knight on d5, your pawn on b3, rook d3, rook d1, like what can black do? Yeah, You nothing can just play, actually. या एक बार ना वो पोजीशन बना हाँ देते हैं, नाइट को d5 पे रख देते हैं एक बार. हाँ, Okay, ले takes समझे takes उन्होंने b5 d5. यार. ऐसा 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 नहीं करना चाहिए साहिल भाई यार. अब b5 नहीं, क्यों खेल रहे हो आप? भैया दे देना. नहीं Let's give them b5. नहीं देखिए नहीं, भी. b5 क्यों दूं मैं b5? b5 भी नहीं देना मुझे, मैं कुछ नहीं दूंगा. वापस आओ आप. नहीं वापस भाई. आओ. Okay, even this position, like where is black's play coming from? I really don't know. This is what I'm saying. वो b5 के बिना भी नहीं है ना. मैं तो कह रहा हूँ just rook d3, rook हाँ. d1 भाई. I am just going to play king h1, king g1, king h1, king g1. आपको जो improvement कर लिया कर लो. कुछ नहीं आपके पास. This is exactly what a two result position is like. Black का best move वो बता रहा है rook c4 and at some point simply allowing this fork. मैंने एक variation देखी just to get this knight off. Temptation offer करना कि भाई knight b6 खेल दे और fork ले ले. Right now it's not possible. Queen a7 है, but variation में आगे जाके basically he just wins on a8 or c4. So yeah, I think this is looking really bad for Carlsen. Oof, man. So I see someone is saying these two fools would lose to Magnus. We're not saying that we would beat Magnus. We're saying in this position, I think it is very hard to lose as white, and I think that was what the comment was about. Yeah, and honestly यार देखो फूल तो मैं हूं भाई, ये तो I agree with you, but honestly ये position ऐसी position है. I'm pretty confident I would not lose this against Magnus. Like I'm pretty confident. It's like so bad strategically क्योंकि there is no counter play. Black कुछ कर नहीं रहा है. Like if let's say you are a rook plus against Magnus, he will use his bishops, knights, queens to attack you. So you don't know the result. I think Lawrence Trent's के साथ match हुआ था ना Carlsen का. He was a rook down and he won against Trent like 4-2 or something. But यहाँ पे Carlsen is play नहीं है. Then that's the issue here. बिल्कुल. That's where he's. I mean, I completely agree with him कि यहाँ पे ब्लैक के पास कुछ काउंटर प्ले कुछ भी नहीं है. सिसिलियन में कहते हैं आपको 3 ब्रेक्स चाहिए होते हैं. एक तो चाहिए होता है f5, दूसरा होता है d5 और तीसरा होता है b5. अब f5 पे तो हमारा पॉन है. d5 तो भूल जाओ आप. हाँ. वो तो भूल जाओ. मतलब d5 is like more unlikely than f5, I would say. वहां पे हमारा pawn बैठा पर d5 फिर भी ज्यादा unlikely है. d5 is possible. I mean, you give the pawn away for free. That is possible. खेलो बिल्कुल खेलो. तो बिल्कुल you should play it ताकि वो मैं अभी से मैगी का काउंटर अपना +10 कर लूंगा after d5 अगर आ गया बोल. b5 is like the last thing जो आप खेल सकते हो. But sadly इस पोजीशन पे b5 के बाद भी ब्लैक के पास काउंटर प्ले बिल्कुल नहीं है. हाँ. तो क्या वो मार के नाइट को आप d5 पे फिर भी बिठा सकते हो. एंड इट्स जस्ट कंप्लीटली सो कंफर्टेबल फॉर प्राग. विनोद भाई कह रहे हैं we can understand Saj bhai, but I'm 1000% sure Sahil will lose in this position. Don't be so overconfident, Sahil. I'm telling you, Vinod bhai, that this is I understand what you're saying, but this is in this position कोई chance ही नहीं है. हाँ. कोई chance नहीं है. यार, trust me on. If you just for context, if you give me like 2 extra minor pieces, मान लो Carlsen का दोनों bishop हटा दो, I would still choose this position as having a better chance of not losing against Carlsen, purely because इतनी strategically dead है black के लिए. It's just that way, man. Yeah, exactly. मतलब आप time पे हार सकते हो, I guess, but I feel like position wise, I don't think it's possible. वैसे मेरा पॉसिबल तो कभी भी है, बट या फिलहाल के लिए भाई प्रग देखो यार. प्रग इज नाउ चिलिंग. ही नोज. आई थिंक ऐसे कोई शॉट बनाया था हमारे एडिटर ने भाई इसी एंगल पे. उसके मिलियंस ऑफ यूजर्स. एडिटर भाई लेट्स गो. वी नो व्हाट टू डू नाउ. What do you think will be your highest rating you will achieve? यार ऐसे I cannot make a I mean, you never know what your highest rating would be, but I would really like to be higher than I am right now. पहला goal is 2550. So let's see if I can get there. साज आई थिंक पता है मैंने से गलती कहाँ करी. उन्होंने कान गैम्बिट खेलने की कोशिश करी. दैट्स द इशू. ही कैन नॉट. आई मीन कॉपीराइट आपका है एंड देन द यूनिवर्स पनिश्ड हिम. सो कान सिर्फ साज का हिलेगा. एंड आज तो बिना कान हिले ही जीत गए यार. क्या ब्यूटी है भाई. क्या बात है. आज तो कान की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैग्नस ने कान खेल लिया. एग्जैक्टली. Prag win easy. Absolutely, chat. We are all set for a beautiful Prag win against Magnus Carlsen. And the thing is, ये position इतनी depressing है कि
Carlsen, I don't even know what he will play. I honestly don't think b5 और castles के अलावा कोई move है उनके पास. ये दोनों अगली दो moves किसी order में आने वाली है. And yeah, it's going to be really bad because after queen c7 or queen c6, just knight e3 defends the pawn and prepares knight d5. This is just gone. completely gone. Also, women's section में it kind of looks like तीनों games एकदम super end games की तरफ जा रहे हैं. So I feel like we might see 3 back-to-back Armageddon matches. और ओपन सेक्शन में हमने अभी एक राउंड अप किया था पहले, बट आई थिंक प्रग के अलावा आई थिंक सारे गेम्स फिर से लगता है मुझे कि आर्मागेडन में जाएंगे. आर यू एक्साइटेड अबाउट दैट? या वर यू एक्चुअली होपिंग फॉर अ आर्मागेडन मैच बिटवीन प्रग एंड मैग्नस, या यू आर हैप्पी विद दिस रिजल्ट? नहीं, I'm happy भाई. Win, I'm totally happy. 3 point मिलेंगे. I don't know if we can have the standings on screen once because Carlsen was leading the event, and if he loses, Prag will go past him by a huge margin. He will go to 5.5 points. And remember, Sahaj, wahan pe the only person right now who is even tiny bit better is Caruana. So even if he wins, he will go to 5. So if Prag wins, he is guaranteed to be the sole leader after round 3 of Norway Chess. But Caruana is still, uski position is still like, I mean, a plus like 0.1 plus like 0.2, 0.3, something like that. It's not very high. And wo position fir bhi defendable hai. It looks really, really bad. Yeah. That being said, हमने कल भी अलीरेजा की पोजीशन देख के हम इतने कॉन्फिडेंट हो रहे थे कि ये तो मतलब वाइट जीत ही नहीं सकती. हमने मतलब हमने पूरा एक वो किया था, फिर रुक C3 पे हमने तालियां भी मारी थी. So भाई हम याद नहीं करते ये सब. पास में ये चैट भूल गई थी भाई, हम भी भूल जाते हैं. मुझे नींद नहीं आई थी कल. I kept thinking about it. I was like, क्या यार, क्या मैंने ताली क्यों मारी? I take my words back, but I think I will lose to Carlsen from this position. भाई कोई भरोसा नहीं है. Actually, नहीं, मैं भी हार जाऊंगा. ठीक है, it's okay. By the way, bishop d8. Yeah, bishop d8. Now, let's say you do play bishop d8. I don't know, let's say you castle first, knight e3, and now bishop d8. Try to run away. So by bishop. Is my sound a bit low? क्या? मुझे ठीक आ रही है. चैट बताएगी if it's low, yes or no. That is my sound a bit low, या is it fine? हाँ, चैट बता दो यार if Saj's sound is okay. So यार problem here is कि I can simply continue. There is no issue. And in fact, there's also this crazy move f6 sacking a pawn. And for example, you say, oh, free pawn. Boom! Khatam. Bhai, khatam over yaar. And this is where, bomb phatne chalu ho jayenge bhai. And after pawn takes, now I can play knight d5, knight f5, queen f... queen h5 is +9. Why queen h5 is +9? So this is over already. This is already over. So yeah, that's my chat. I think ye tactic bishop d8 is kind of useless. क्या बात है. Also I love that whole boom वाला scene. या मेरे को याद है कि हमने पहले भी किया था with राकेश भाई when he was when we were like exploring this thing. It's pretty cool. ताने ने भी किया था, बहुत यूज किया था. I think emojis कुछ. So someone is saying that it's a bit low. So I feel like it is. I'm just gonna do some changes. Changes कर रहे हैं सहज भाई. I don't know कैसे changes, but फिलहाल के लिए what is not changing is the evaluation. Carlsen deep thought में. Time देखो अब सिर्फ 8 मिनट पीछे है अब प्रग. At 1.35 40 minutes का difference था. Oh, Carlsen की आंखों में खौफ. Okay, is this a bit better? हाँ भाई, थोड़ा बेटर है भाई. थोड़ा सा पहले से बेहतर है. हाँ भाई, बेहतर है भाई. Okay, that's good. Okay, I hope the sound is a bit better. तो मेरे वहाँ पे थोड़ा सा low रहा था. I feel like it should be good now. बढ़िया. And आवाज बढ़िया हो चुकी है. Oof, man. I'm just hoping Carlsen brings his hand out, resigns and goes. फिर चैट को समझ में आएगा हम क्यों कह रहे थे कि इस पोजीशन में हमारा हारना मुश्किल है. क्या कह रहे हो? फिर से बोलो. मैं कह रहा हूं कि अगर Carlsen अभी रिजाइन कर दे, then chat will understand why we were saying कि इस पोजीशन में हमारा Carlsen के अगेंस्ट हारना मुश्किल है. तभी समझेंगे ना. Exactly. Prag being confident, why he has to be. Look at this position, man. Wow. And I have not seen Carlsen strategically so busted in the last decade, at least. I have not seen this, chat. And
as I can go back and remember, 25 मूव से पहले तो कब हारे? Wait, he played Queen C6. भाई ये तो और खराब हो गई, ये तो और खराब हो गई। 93 95 या फिर 95 स्ट्रेट अवे। Actually, knight d5 straight away is exactly what Carlsen wants, because Queen C4 के बाद black is better apparently. No, I know. Okay, maybe I meant like 93 okay, मेरे दिमाग हाँ. में नहीं आया, but yeah, 93 first and then knight d5. I was like more thinking about कौन सा knight d5 पे डालना है, and I So just kept हाँ. I think 93 का trap है. This is a trap by Magnus Bishop Carlsen. g5. Yes. There is bishop g5. Oh, भाई tricky. never write off Carlsen, because chat ये knight नहीं दे सकते इस bishop के बदले, वही तो trump piece है. And if For we sure. go d5, we lose a pawn. And even though white is winning here with queen h5, queen g4, I would rather not do this. I would rather not do this. So going back, यहाँ पे could he play b3 Saj, then just defend the pawn? b3, can I play b5? That's what I was kind of afraid of. Because b5 के बाद if I take on b5, then the c3 knight is hanging. 93. Oh, also Soch King just said that 93 was just played. Oh, he played 93 it. was He played it. played. Oh, So chat. I this looks very, very natural. Yeah, this looks super natural to me. I think this is good. But then he has to sack a pawn now. Oh, he played. Bishajev played Carlsen, finding all the tricks in. Oh, he has to sack a pawn now, Sahaj. I would not allow this at any cost whatsoever. Chat 93 now. Look at this chat. For example, let's say I say कोई बड़ी बात नहीं है. I can play b3. Now bishop e3, queen e3, even just queen c5 trading queens, and suddenly even just not queen trade, just castles maybe, or f6 here, just blocking the f pawn. And even though I have knight d5, black can chop it off. So I am better, but it's not the dream situation. This is where I will lose 10 out of 10 games against Carlsen. This is where I will lose. So going back, वो dream scenario अगर चाहिए तो we have to play knight d5 right now. We have to play this and give up this pawn. It's not important. Now play queen g4, attack the bishop when it goes back, and then we have this position again. But यहाँ b5 b4 है Sahaj. I'm not so convinced. अरे यार, I am super convinced. I really like this position for white. Yes, you know, I just एक खराब चीज है कि वो किंग g1 की जगह वो किंग h1 पे होना चाहिए था बस, ताकि कोई चेक्स ना आए. बस वो चेक्स हटा दो and then it looks perfect. Yeah. Man, Time what's to play the air gambit. Is it time? I would say अब तक सब बढ़िया चल रहा है यार. Let's not use it right now. Like कोई troublesome situation. Okay, you think we should wait a bit more? Chat, what do you think? यूज करना है कि वेट करें? क्योंकि कल क्या हुआ, हमने क्लासिकल में यूज किया, फिर डिंग जीत गया उसमें टाई ब्रेक में. सो व्हाट शुड वी डू हियर? नहीं, बट लेकिन क्लासिकल में तो काम किया ना वो. That's the thing. हिला दो भाई, हिला दो यार. Okay, लेट्स गो साज भाई, लेट्स गो, हिला दो यार. It's time, guys. It's time. एक ना वो कार्लसन भाग गया भाई, कार्लसन भाग गया भाई. जिंक्स होने रुक जा भाई. लेट्स वेट फॉर कार्लसन टू कम टू द स्क्रीन. हाँ, लेट्स वेट फॉर कार्लसन भाई. डर गया वो भाई. रुको, कार्लसन को आने दो बोर्ड पे. कार्लसन को बोर्ड पे आने दो. कार्लसन को बोर्ड पे आने दो. मैं कार्लसन के बोर्ड पे आने के बाद. ओके. जैसे आप हिले वो भाग गया भाई. आई थिंक ही फाउंड अ वे टू एस्केप द पावर. Escape the matrix. Exactly. So let's wait for him to come back, and then we can basically shake the ear. ये चैट में तो सब everyone is saying we should. I feel like अगर यहाँ पे पोल डालोगे ना, पे 100-0 का पोल होगा. But Sahaj, do you notice Pragg started thinking? That's a sign he definitely underestimated this move, bishop g5. I mean, I think that's a good way to say that. But I think still he's still very, very much better. बहुत better लग रहा है. Man, Carlsen with his tricks यार. Queen c6. कोई कह रहा है बायस कमेंट्री. भाई ऑफ कोर्स यार, चेसकॉम इंडिया है, चेसकॉम नॉर्वे थोड़ी है. वो तो बिल्कुल चेसकॉम नॉर्वे होता तो वो लोग क्या बोल रहे होते. नॉर्वे. ओ आगे चल भाई. कान हिलाओ. Okay.
अरे नाइस भाई, पूरा माथा ही हिला दिया भाई कान के साथ साथ. नाइस, मेरा वेल डन माथा भी भाई. हिलता है वैसे. हाँ, नाइस हम्म. नाइस नाइस. So कान हिल चुका है chat, so we can expect knight d5 from Prag at any moment now. Let's go भाई. तथास्तु. Carlsen is scared of Sahaj's powers. We all are भाई. His अगेन opponents are also. अगेन जो भी बंदा नया देख रहा है ना, प्लीज लाइक people will tell you the context. We're not weird people. This does work. It did work in candidates 3 times. you know but because it did work, that's why we keep doing it. Yeah. हाँ 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 हाँ. Air gambit forehead variation, exactly. Soch king is the goat. Yeah. Oof. What a crucial moment in this game, yeah. He has to find the correct move. Sare moves better hai. For example, he could just play king h1 and allow this. He's still better. He could play b3. He's still better. But the kind of position you get is way different. जो काउंटर प्ले बैलेंस को मिलेगा वो बहुत डिफरेंट है. सो प्रग को यहाँ पे एक डिसीजन लेना पड़ेगा. डज ही मेंटेन द बाइंड एंड गिव ब्लैक अ पॉन, और डज ही से मुझे पॉन नहीं देना, I just want a better position without sacrificing material, but then he doesn't get the bind he wants. So मैं that's तो the कहता हूँ question. कि पॉन दे दो और पॉन सैक कर दो और बाइंड बना के रखो. जब तक वो बाइंड है ना, तब तक वो जीतने का चांस मतलब जीरो है मैग्नस का, आई फील. जब तक वो हाँ, I बाइंड agree. बनी रहेगी तो आई फील लाइक. और ऑल्सो बिशप जो g5 पे बैठा है ना, आई फील लाइक दैट्स नॉट that's the worst piece in this position. उसको हटाने की जो वैल्यू है वो एक पॉन से बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब Oh, से, he लाइक played something. पर्सनली स्पीकिंग. He played king h1. He So it does allowed both. this trade. That's a question mark. ना यहाँ पे भी मीम बन सकता है डेफिनेटली. बट या दिस इज डेफिनेटली नॉट द राइट अप्रोच मेरे हिसाब से, बिकॉज आई एम थिंकिंग बिशप e3, क्वीन e3 एंड क्वीन c5. Apparently, queen c5, there's queen g5, and then castle Oh, अच्छा अच्छा f6. अच्छा, नहीं, That's, there is queen g5, there is queen g5. but actually f6 first. And to be honest, I'm not convinced if it's winning anymore. Hmm. It's not winning anymore. It's It's not not winning winning. It's anymore. better, but it's not winning. There's no way So this can is I winning play knight objectively. d5 though? What if I go knight d5? Let's go into some lines now. Knight d5 and I'm Now queen attacking the c5, b6 your pawn. move, Sahaj. Queen c5, okay. बार देखो भाई, +0.4 पे आ चुका है Sahaj. This is Queen not g3 looking खेला good, तो? yaar. Queen g3 खेला तो? Queen g3, I guess it's Just king ah f7. bishop d5 apparently. Wow. Rook d5 ये ड्रॉ क्यों है? अच्छा, क्वीन c4 मारोगे क्या आप? हाँ, rook d5. I assume queen c4 is the move because f1 is hanging. Hmm. Yeah. Okay, Yeah, okay, okay. this is By not the way, good, chat. we should also just go back and just kind of explain why king h1 was not the best move Hmm. in this position. क्योंकि पहली बात तो है कि ये जो बिशप है ये जो ब्लैक का जो डार्क बिशप है, दिस इज द वर्स्ट पीस इन दिस पोजीशन. तो इसको Hmm. एक्सचेंज करना ओनली बेनिफिट्स ब्लैक, क्योंकि अगर आपने खराब Hmm. पीस हटा दिया पोजीशन से तो आपकी पोजीशन स्लाइटली अपने आप इंप्रूव हो जाती है. Hmm. और इसके साथ साथ आई फील बिशप e3 और f6 का जो एक टेम्पो मिल जाता है ब्लैक को, आई फील लाइक उससे ब्लैक को सांस आ रही है, यू नो Hmm. for the lack of a better word. So I feel I like agree. instead of king h1, we were discussing some knight ed5. It was right, Sahil bhai? Yup. This was the move, chat. Sacking a pawn. यहाँ पे pawn दे रहे हैं हम लोग, but we keep this bishop on the board. That is the trick here. Let's say bishop f6. I don't know what you play, and now you just keep the position like this. मतलब कुछ हो नहीं रहा है crazy. Move the king to h1 now maybe, or even h2, whichever you prefer. Let's say h2 to move out of this, and यहाँ पे black can never castle. That's the first thing, because immediately rook f3, rook g3, and knight f6 आ जाएगा. That'll be game over. There's no way to remove this. You can capture. I'll capture the second knight. b5, there's a3. So I maintain this, and this is actually lost, I feel. And knight b6 is the fork now, because king move कर दिया है. For example, अभी करते तो queen c5 check पे knight मरता. King h2 खेल दिया. Now knight b6 is a threat. And if queen c6 back, I mean, this is already over, yeah? Queen g7 and you resign. Yeah. Also, knight d5, knight f6. Let's also not forget knight d5, knight f6. Yeah.
So Sahaj, I am not happy with this move, and I think there's no way on earth Carlsen doesn't take this, and he does. Carlsen को एक आखिरी मौका मिला dead loss position में, and now he has to find the move f6, the only move in the position. But I don't think he will not find this. He will find ear this gambit move. did not work this time यार, ये तो दुख हो गया. Do you think कार्लसन ने हमारी स्ट्रीम देखी? उसने देखा हमारा सीक्रेट वेपन ईयर गैम्बिट है, और उसने अपना एक बोलते ना वो तभी वो कान गैम्बिट खेला ताकि आप जब कान खेलो तो कान से कान मिले और दुकान हो जाए. बिल्कुल बिल्कुल. ओके. या could be यार. इट जस्ट मेक मी सैड कि इसी मोमेंट पे होना था यार. अरे यार हम कहां गए. People are saying Magnus played ear gambit declined. Yeah. Maybe we can do some research and we can say कि जो भी कान की गैम्बिट होती है, it doesn't work against Sicilian कान. Now we know. उसके अगेंस्ट एक अलग चीज हमें निकालनी चाहिए. We'll do that for future. So फिलहाल के लिए सहज, I do think b5 is a huge problem. So can we potentially play a4 just to stop this permanently? And then it feels like a very computerish move to me, a4. Computer की move है भाई. Computer की move है भाई. You're right. Computer की move है भाई. मतलब a4 बड़ा कंप्यूटरिश चाल लग रही है, क्योंकि अगर आपने b3 खेलते, आप रुक d to रुक d1 खेलते, that makes more sense कि ठीक है, you're doing something. पर a4 I think कंप्यूटर की चाल ऐसी भी होती है, एक बार आप देख लेते हो ना, फिर आपके दिमाग में समझ आ जाता है कि why he suggested that, and then you can't unsee it. So now I think we should explain it ना, क्योंकि if you play b3 in this position, that I think there is b5. Is that correct? तो b5 को stop करने के लिए you are playing a4. ताकि एंड नेक्स्ट मूव में यू विल प्ले b3 ताकि ब्लैक के पास b5 बिना आए. हम पहले ये बात डिस्कस कर रहे थे कि सिसिलियन में ब्लैक को 3 ब्रेक्स चाहिए होते हैं, f5 d5 और b5. अब b5 अब f5 d5 तो नहीं आ रहा, b5 अब रुक सकते हो. अभी भी जीतने के चांसेस हैं, बट नॉट एज मच एज बिफोर. Yeah, because now it's like you have to kind of grind this down again. तो मतलब it's like better black is okay, p ज्यादा है नहीं हमारे पास, एक ही नाइट है, that can be trade off जब हम आगे जाएंगे. And जब मारेंगे तो या तो रुक से मारेंगे, and then we have rook end game, pawn से मारेंगे तो then d6 weakness नहीं है, c5 open है. And ये भी structure जो है, whenever you move the knight, then b5 enters the picture again, breaking open on the queen side. तो white is better chat, but it's not winning objectively anymore. तो अब प्रग को थोड़ा बोलते ना अमेजिंग चेस खेलना पड़ेगा टू कन्वर्ट दिस, बिकॉज कार्लसन को पता है कि उनको क्या ब्रेक मिला है ये, एंड ही विल नॉट लेट गो. आई मीन टाइटैनिक के बेशक रोज ने उसको अपने बॉयफ्रेंड का हाथ छोड़ दिया हो, बट यहाँ पे कार्लसन जी अपने पीसेस का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे. मूवी आई थी ना भाई, मूवी कैसे आई है? क्या 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 बात भाई है अगर वो हाथ नहीं छोड़ती तो मूवी कैसे आती भाई? जाहिल ये बात है, आपके साथ कमेंट करके बहुत मजा आता है भाई. बट अगर वो हाथ नहीं छोड़ती तो मूवी कैसे बनती यार? वो मूवी बननी जरूरी है ना. मूवी हो है ना, आई फील लाइक यार, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यार साहिल ओपी होना चाहिए यार चैट में भी यार. कम ऑन. थैंक्स भाई. दिस इज सम नहीं यार, देयर इज नो जिंक्स गैम्बिट. देयर इज हम लोग तो सेलिब्रेट करेंगे ही ना यार. वी लाइक दिस, वी वांट दिस टू हैपन. अपडेट भाई नीरी भाई की मतलब last loss for Carlsen in a classical game was against Karthikeyan in the Qatar Masters. So Carlsen का हुआ है loss recently. It's not been so much time since then. वहाँ पे तो 2 गेम हुए थे ना, एक तो सुलेमानोव के साथ हुआ था. Yep. He lost a bunch of games वो last year. 25 मूव का गेम था. हाँ, 25 मूव का गेम था. I remember it. क्या बात है. अरे टिक्को पे हो रहा है भाई. थैंक यू भाई. यही होना चाहिए यार, यही होना चाहिए भाई. लेकिन ये कार्लसन अब गलती कर दे, बस एक गलती कार्लसन भाई. यार देखो यार, फॉर ओल्ड टाइम सेक, मतलब प्रग तो आपका शिष्य है भाई. मतलब आपको कितना मानता है, एक गलती कर दोगे तो यार गजब बेइज्जती है. बंदा उठ के ही चला गया यार. बंदे से बात कर रहा हूँ, बंदा उठ के चला गया. You have much to learn. If Tikku can see the force win, how could Prag not see it? That's a good question actually. I'm not sure why he played king h1. I think वो pawn sack की line में sure नहीं थे सहज. That's the only reason I can think of. Yeah, probably वो pawn sack करना नहीं चाहता था.
maybe this is Magnus effect also, you know. I feel like अगर कोई भी और होता तो वो खेलता है जरूर, but वो Magnus है ना सामने, तो it makes a difference for sure. हाँ, कि कार्लसन के साथ पॉन सैक नहीं करना है। आई थिंक दैट्स द लॉजिक। या एग्जैक्टली यार, वही तो मेरे को भी याद है। आई वाज प्लेइंग इन प्रो चेस लीग अगेंस्ट मैग्नस, एंड मतलब साहिल भाई, यू विल नॉट बिलीव लाइक जो जो हुआ था, एंड आई वाज सो शॉक्ड। मेरा नाइट E5, हमने एक बार, आप विजुअल तो नहीं होगा बट लेकिन आपको वो स्क्वायर पे आप दिखा दो एक बार। मेरा नाइट था E5 पे, आई वाज ब्लैक, मेरा नाइट था E5 पे, एंड मैग्नस जस्ट प्लेड रूक D7, आप रूक कार्लसन D1 से टू खेल रहे थे? D7। कार्लसन खेल रहे थे? प्रो चेस लीग में, हाँ यस, आई हाँ वाज प्लेइंग फॉर हाँ डेली हाँ हाँ डायनामाइट एंड ही वाज प्लेइंग फॉर नॉर्वे, लाइक नॉर्वे हाँ नोम्स। हाँ मेरे को ये नहीं दिखा कि वो नाइट D7 मर रहा है। हाँ। आई कैन लाइक अंडरस्टैंड। दैट हैज नॉट हैपेंड टू मी लाइक एवर। मेरी घड़ी में अराउंड अराउंड 8-9 मिनट थे। आई मीन इट्स लाइक अ 15 मिनट गेम, और एंड 8-9 मिनट पड़े हुए थे, एंड आई थॉट फॉर लाइक 2 मिनट्स। फिर मैंने कुछ और खेल दिया, एंड आई वाज लाइक ये क्या हुआ? फिर मैं वापस जाके देखा, मैंने कहा आई कैन नॉट बिलीव दैट आई मिस समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज मैग्नस इफेक्ट। जो वो सामने बैठता है ना, तो यू फील डिफरेंट। आई एग्री मैन, आई एग्री। आई थिंक कहीं ना कहीं पे क्या है कि कार्लसन इज, यू डोंट एक्सपेक्ट इट एट ऑल। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। Yep, exactly, Sahil bhai. Also, Sahil bhai, just to let you know, the जो 1K वाला जो likes का जो वो हाँ, था, it has been completed now. यप, मैंने अभी पिन किया है फिर से 1500 लाइक्स पे नेक्स्ट मेंबरशिप। सो 1K लाइक्स की मेंबरशिप बहुत जल्दी होने वाली है चैट। अगले 5 मिनट में साहज भाई, आई वांट यू टू थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। अगले 5 मिनट में कभी भी चैट से पूछ लेना, एंड द फर्स्ट पर्सन टू आंसर दैट करेक्टली विंस अ डायमंड मेंबरशिप फॉर 1 मंथ। लेट्स गो साहज भाई, क्वेश्चन सोच लो एंड इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स कभी भी पूछ लो। Got कीप it, इट got it. रैंडम, चैट को विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, चैट सवाल है ऐसे करके। ठीक है, done. Okay, done. I have one. एंड बाय द वे, F6 के बाद चैट, ये मूव बहुत इंपॉर्टेंट थी बाय द वे। फॉर एग्जांपल, इफ यू कैसल, देन व्हाइट कैन प्ले F6, and for example G6 queen H6, and this is how you lose in 2 moves. So that's why ये F6 move बहुत important, stopping the pawn, and now black can fight. Now black can fight at least. Man, what a day, yaar. You were almost there, Sahaj, and now we have to wait for a long game. But still, I'm pretty hopeful for a win for Prague. But it was so close of like a miniature, yeah. बिल्कुल. I mean, this is just goes to show कि more times this will happen. I feel like he'll be able to handle it हाँ in a more हाँ mature way. I think ये हो जाता है, हाँ because I feel like, as I said, when Magnus is sitting in front of you, तब anything can happen. Yep, absolutely, chat. Absolutely. I am watching a chess competition for the first time. एक राउंड कितनी देर चलेगा? This is a classical game, La Villa. So ये बहुत लंबा चलता है. This is equivalent of 1 day cricket. So एक गेम चलेगी roughly 3.5 to 4 hours on average. And फिलहाल के लिए the Indian player is winning against the greatest player of all time. It's like, imagine करो कि कोई 18 साल का क्रिकेट प्लेयर है. He's just come in, एंड वो मतलब 6 छक्के मार दिया लिटरली। मतलब बोलते हैं ना, ब्रेट ली की बॉलिंग पे या फिर ऐसे मिचेल स्टार्क की बॉलिंग पे। सो इसके बराबर चल रहा है ये। ओके, आई एम रेडी टू आस्क द क्वेश्चन, चैट। और क्या कहते हैं, सोच किंग भी बोल रहा है सहज भाई मुझे आंसर बता दो, बिकॉज यस्टरडे समवन वाज सेइंग वो क्या मॉड्स को बोलते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, आई एम रेडी टू आस्क द क्वेश्चन, एंड साहिल भाई, जस्ट अ क्विक क्वेश्चन। दिस इज applicable to both chess.com India and Chess हाँ 24 वाली हाँ, stream ना? सो तो दोनों मॉनिटर में बोथ it चैट्स। is हाँ, जो दोनों पहला में बंदा आएगा, यू कैन लेट्स नो द नेम। हाँ, एब्सोल्युटली। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि who has, or name the top 3 players of हम्म, India in Blitz by अरे rating. अच्छा। The top 3 Blitz players, एक मैसेज में। वो अगर आप उसको ऑर्डर में भी नहीं लिखोगे तो इट्स ओके, पर हु हाँ, आर द टॉप 3 Blitz players of India by rating? सो अच्छा, मुझे दिख गया भाई, मुझे दिख गया। इट्स Arjun. Okay, I will not reveal it. Saj bhai, do note the names. या Chat, chat, एक ही लाइन में तीनों लिखने हैं। 3 प्लेयर है, नॉट एक जस्ट ही में वन। तीनों लिखने हैं भाई, एक ही में तीनों लिखने हैं। हाँ, निहाल अर्जुन प्रग, नो दैट्स इनकरेक्ट आसिफ भाई। अर्जुन
Vishy Nihal. I think that is the correct That is answer. correct. That's correct. So, And in the right order, by the way. So कोई मौर जीत गया क्या? फिर से शिवांश शर्मा जीते क्या? कौन जीता? I can see Shivansh got it right, yes. I और can उससे see पहले Shivansh. I'm checking if anybody else got it right. Naman Agarwal. Naman Agarwal got it right earlier. Really? हाँ, नमन अग्रवाल got it right earlier. उससे पहले मुझे कोई नहीं दिख रहा है. निहाल अर्जुन विशी उन्होंने बोला है. Not in the correct order, but Nihal, it's not in that's the correct. order, but you're correct, But yes. हाँ, works. So नमन अग्रवाल जी, आप जीते हैं डायमंड मेंबरशिप. Please do tag me on Twitter along with your username and आपको 1 महीने की हम मेंबरशिप देंगे. Well done नमन भाई. Excellent and correct answer and पूरा fastest fingers first. मतलब आप KVC के लिए भी अप्लाई जरूर करें. यार थोड़ा सैड लग रहा है यार ये पोजीशन देख के. थोड़ा सा वो ऐसा लग रहा था कि इट्स गोइंग टू हैपन. अब यार हमने कह तो दिया था कि यहाँ पे मतलब व्हाइट के लूज मतलब हारने के चांसेस बिल्कुल कम है. बट लेट्स नॉट फॉरगेट अ वेरी बिग एलिमेंट व्हिच इज के प्रग के पास 31 मिनट्स है एंड ही स्टिल हैज टू मेक 19 मूव्स. मुझे लगा होगा लेट्स नॉट फॉरगेट वन वेरी बिग एलिमेंट कि ओपोनेंट का नाम कार्लसन है. दैट टू समय रैना को बुलाओ. समय रैना अभी यूरोप में घूम रहा है भाई. अभी ही इज नॉट फ्री. बुलाएंगे अभी ऑफिशियल टूर्नामेंट भाई. Less than 2 minutes per move for Prag. I agree. It's not going to be easy. But the only difference is कि if he wants to waste time, he can. Like he has 3-4 moves he can waste very comfortably, but he might lose his advantage. That's the main issue. उनको अब बहुत carefully maintain करनी है अपनी advantage. That's why he should not have given up the knight. And Saj, do you think Prag regrets now? Unki body language se can we have full Nishbhai is to the point. So do you think from his body language he regrets giving up the knight, or do you think this is what he planned and he's happy with it? आई थिंक थोड़ा रिग्रेट तो हो रहा होगा बिकॉज आई थिंक पोजीशन ऑप्टिकली पहले मतलब 5 मूव्स पहले बहुत बेटर दिख रही थी जैसे अब है. इट इज डेफिनेटली पॉसिबल दैट ही मिस्ड f6. डेफिनेटली पॉसिबल दैट ही मिस्ड f6. But f6 should be obvious, no? F6 is like, even I saw f6. Because ideal castle yeah, पे I तो mean, I f6. know it seems really obvious now, but like ये moves miss हो सकती हैं definitely. Maybe he saw it, but he like underestimated it. Yeah. चैताली जी वो क्लासिकल रेटिंग है. हम ब्लिट्स रेटिंग की बात कर रहे थे. गुकेश रेटिंग इज नॉट इन द टॉप 3 फॉर ब्लिट्स. वो उनकी क्लासिकल रेटिंग है. Right. भाई ये डायरी में लिख रहे हैं बेसिकली यार वो डियर डायरी, ये मूव पे मैंने गलती कर दी. वो अलाउड होता है प्लेयर्स को, तो वही लिख रहे हैं भाई. घर जाके पढ़ेंगे. नहीं नहीं भाई, एक्चुअली ये मूव्स लिख रहे हैं जो नाइट G4, क्वीन टेक C3, F6, ये सारी मूव्स नोटेशन लिख रहे हैं. कोई भी क्लेम करना है आपको 3 मूव रेपिटेशन या फिर 50 मूव रूल, तो यू नीड दिस नोटेशन टू शो टू द आर्बिटर. अगर ये नहीं है तो यू कैन नॉट क्लेम द ड्रॉ. एंड B3 प्लेड सहज. व्हाट? B5 नहीं आ रहा क्या? What's the story? Maybe So, B5 you can play something like knight D5. but now you're sacking a pawn, right? नहीं knight B6 है ना बोर्ड पे. knight B6 नहीं है बोर्ड पे. But will you actually take on C4? That looks really risky to me. Maybe after queen C4 I can go rook C1. Maybe I can just. queen जाएगी किधर? Can I castle here? Oh नहीं, knight D7 आ रहा है. I can't castle. knight D7 आ रहा है, हाँ. और जैसे अगर आपने queen C4 मारा है यहाँ पे, right? I can go rook C1 and then you go, let's say, I don't know, queen B5, there is knight C7 check. Sahaj, I have a question for just you. Okay, just me. Okay, not the chat, because this is so difficult. I don't think I would find this in a million years. So chat तुम्हारी rating कितनी है यार? सब अपनी rating लिखो chat में, because I want to see कि कितने लोगों के लिए question है. Because this is crazy. So chat अपनी ratings of spam करो. Let me see. Worst day of my life, Anisha. Don't worry, he might not lose, Anisha. Actually, how the tables are turning, he might not lose this. अनीशा जी, ये दिन और बहुत और खराब हो सकता था आपके लिए. Just look at the bright side for you. कार्लसन घर पे हो सकता था भाई हारने के बाद. Literally, हम ये डिबेट कर रहे थे कि 20 साल से पहले रिजाइन कर सकता है वो या नहीं. So सब रेटिंग लिख रहे हैं. So जिनकी रेटिंग जो 7,000 लिख रहे हैं शायद आपके लिए अपने केबल है. So Sahaj, what do you feel is the best move for Carlsen here? This is like, I mean, I'm like, yeah, I wouldn't find this in a million years. So like
You know, I feel firstly मेरे दिमाग में मूव आएगी कासल, but then I realize कासल पॉसिबल नहीं है because of 97 चेक. बट मेरे मन हाँ में ना एक और थॉट आएगा कि अगर मैं कासल नहीं कर सकता तो हाउ कैन आई डेवलप माई पीसेस फर्दर. कि कासलिंग हाँ एक डेवलपमेंट का फॉर्म है. तो अब आई वुड से कि किंग F7 इज लुकिंग इंटरेस्टिंग क्योंकि उससे रुक्स कनेक्ट होते हैं एंड देन आई कैन गो इनटू आर्टिफिशियल कासलिंग. हाँ जब मैं ये सोचता हूँ देन आई एम थिंकिंग कि देयर इज क्वीन F3 क्वीन H5 चेक वाले आइडियाज. Maybe that's not हम्म super attractive either. हम्म So maybe I would not go for that. No, maybe rook E8, yeah. Okay, yeah. Let's lock this in. Let's lock king F7. Is that the so move? this would be decent. I think this is still better for white for queen g4. Uh-huh. But this is not the best. King f7 is a good try. There's a crazy maneuver, chat, and this is why chess is sometimes beautiful. This is not those moments जहां पे you're like अबे यार ये तो Maneuver. आपने बोला maneuver है. Okay. हाँ maneuver है. And the maneuver is the beautiful move, rook to f8. And once lets you play anything, yeah, queen f3, I don't know. Now rook to f7. And now king f8, king g8. अरे यार मतलब this is just, I mean ये क्या है सहाज, ये explain करो मुझे. This is chess. This is pure beauty भाई. Beautiful. Also very, very unrealistic. I don't think Unrealistic possible है भाई. भाई. Unrealistic. I don't think By, possible है भाई. by the way, जो भी b5 मेरे से on the जर्मन board. में बात कर रहा है, I'm sorry, I don't speak German. I'm sorry. Ich spreche Deutsch by. Ich spreche Deutsch. By the way, b5 on the board, Sahaj. It's on the board, and that means कि यहाँ पे he has to play knight d5, and on paper, let's say sack the pawn. Yeah, but I think he's not gonna take on C4 ना. वो pawn मतलब it will be hanging, पर वो मारेगा नहीं. या आप इमेजिन करो यार, ये सेम पोजीशन हो सकती थी वाले साइड में, where black could have had a bishop on E7 instead. That would be so nice. Yeah. तो पता है आज क्या? The thing is, once you take on c4, don't grab it immediately. This is a huge weakness. At some point, it might be weak. And अब क्या है कि b file open है, c4 pawn weak है. If you play knight d5, I can chop it off queen c5 and bishop takes d5. So it's not. Yeah, I'm not convinced. I'm not happy. I mean, I don't think of C4 as a weakness because एक वो मैं जब भी इस बारे में सोचता हूँ ना, I go back to that old saying कि weakness is anything that can be attacked. अब C4 को आप कितने चीजों से अटैक करोगे? आप सोचो ना, I can just put my rook on C1. आप कितने चीजों से अटैक कर लोगे? You can play A5 bishop A6 में भी. हाँ, उससे तो आप अटैक कर सकते हो वैसे. You're right, you're right. दुराठी को बोल दूंगा ना c4 pawn में वीडियो बनाने के लिए, क्या पता काम कर जाए. I mean bishop से अटैक कर सकते हैं ना भाई. A5 bishop A6. Sure. Like takes A5 and then bishop A6. Maybe long term we can put pressure here. By the way, still looks awful क्या निशा? Awful तो है भाई, awful तो है. निशा जी, just look at it like 5 moves before. उसके बाद डिसाइड करना आप कि अभी ठीक लग रहा है कि यार अभी भी मेरे से डच में की बात कर रहे हैं. Germany, I think. Aber du wohne in Deutschland, hast du ein nicht gelernt? Sahaj bhai, do you live in Germany? Do you have नहीं, do you have don't you have what? क्या है भाई? ये आगे क्या है भाई? समझ नहीं आया मुझे. Gelernt means to learn, no? And nicht means उसने no. बोला Sahaj lives in Hungary. Yes, I can see, I can read that. Come on. भाई, जब आप ओवर द बोर्ड खेलोगे तब भी आप कहां लाओगे यार? आई विल ट्राई दिस. आई विल डेफिनेटली ट्राई इट वन टाइम. क्या दुराठी को वीडियो बोलना? हाँ वही दोनों. भाई उसके साथ में कहां लाऊंगा. टिक्कू जस्ट रिवील्ड हिज वोट. भाई मैं जर्मनी में बैठा हूं, मैं वोट कर ही नहीं पाया. तो वोट क्या रिवील किया मैंने भाई? कुछ भी. Have you learned nothing? हाँ exactly. I thought यार ये क्या है? Have you learned nothing? Exactly. हाँ. By the way, फिलहाल के लिए I chat. thought वो पूछ रही थी. Yeah, let's not go into politics. वो जोक था भाई. जोक था भाई. फिलहाल के लिए चैट, वी आर प्लग अगेंस्ट कार्लसन की तरफ हम बढ़ रहे हैं. प्लग ने एडवांटेज थोड़ी स्पॉइल करी है. If you left the stream thinking Prag is about to win, you might be in for a shock because the game is still going on and Prag made a slight inaccuracy and Carlsen को तो आप जानते हैं, वो पकड़ के बैठ जाते हैं. And now he's kind of come up with some good play to at least complicate the game. Bar is still in Prag's favor, but this is a two-way street. अब गाड़ियां दोनों तरफ चल रही हैं एंड इट कैन गो ईदर वे फिलहाल के लिए.
चैट 3,500 लोग हमें देख रहे हैं. डू लाइक द स्ट्रीम. 1,500 लाइक्स पे अगली चेस का मेंबरशिप. मुझे साथ भाई आज बहुत मेंबरशिप लुट रही है भाई. ज्यादा ही लुट रही है कुछ. लेट्स हिट द लाइक बटन चैट. लेट्स गो. ठीक है भाई. जर्मनी में कहा. हैप्पी टू होस्ट यू इन बर्लिन. भाई मैं रहता हूँ, मैं भी कोलोन में हूँ भाई. एक्चुअली राकेश भाई इज कमिंग टू बर्लिन टुमारो. तो वो उनसे आप बात कर सकते हैं भाई. Really? वो आ रहे हैं बर्लिन में? तो हाँ will you do a stream? Will you do like one of the days we can sit together जब आप लोग साथ में होंगे? भाई कर भी सकते हैं यार. बिल्कुल कर सकते हैं. कभी ना अरे कभी तो we कर should do सकते हैं. that, no? That हाँ will be कहाँ. so. तो आप बर्लिन आ जाओ, मैं बर्लिन आया तो भाई सस्ते में दोनों के बीच में पड़ेगा भाई. दैट इज वन वे टू डू इट. मतलब I can, but जो मैंने आपको आज बताया उसके साथ I don't know if I चैट को तो क्या हुआ भाई. चैट को बता like दो यार. on a normal day it would be okay, but आज के दिन it may not be the best, yeah. बता दो भाई Uh, क्या हुआ. चैट को बता दो साज भाई. इफ यू हुआ आर ये ओके. कि आज actually was not the best day for me because I actually lost my passport. Like it was not the best thing, but yeah. साज अब भाई वो अभी भी आपका सुन it's के like ना. somewhere कहीं पे हाथ से गिरा मेरे से and I'm not sure where it is, so I have to still like get it back. मुझे भी डर लग रहा है. एक बार पासपोर्ट चेक करके आया. मैं आ रहा हूँ 30 सेकंड में. पानी लेके आ. आप सीन कंटिन्यू करो. हाँ हाँ नहीं go ahead of course. Magnus will win. Daksh bhai, all I can say is that Magnus is I don't think he is winning this for sure. I can put money on this guy. I don't think this position is winning. I I could still hear Sahil. I don't know if you could, but yeah. What's happening in other games? We can check the other games shortly, guys. But again, I think more or less it was all equal. Oh, by the way, there is an update here. The game between Hikaru and Alireza has already ended in a draw. That means मेरे जो 10 मैगी के पैकेट्स थे, I have already redeemed that. So चचिंग. साहिल भाई जब भी आएंगे उनको सरप्राइज देंगे उसके बाद. एंड द अदर गेम है बिटवीन फाबी एंड डिंग लेरेन, वो भी एकदम इक्वली दिख रहा है. बट आई फील फाबी के पास थोड़े जीतने के चांसेस. लाइक ही इज पुटिंग सम प्रेशर इन द पोजीशन. तो हम थोड़ा भी व्हेन ही कम्स बैक मे बी वी कैन टेक अ लुक शॉर्टली ऑन दैट. और वुमेन सेक्शन में भी आई थिंक इट्स द सेम थिंग. हम्पी जी का ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है बिटवीन ली टिंग जी एंड Anna Muzichuk is still playing versus Vaishali. Oh, thank you, Niri bhai, for that visual, for that bird's eye view. As you can see, Hampi ko already draw ho chuka hai and she's about to enter the Armageddon match. Or Vaishali and I think the game between June and Pia Kramning is also equal. So I think the only game jahan pe thode classical win ke chances hain, wo I think Prag versus Carlsen hi hai. Sahaj bhai, you look like one of my friends. Arey bhai, he must be a very nice friend of yours. What is the rating of Sahaj? My rating is 25/10, guys. साज भाई यार मेरे पास एक बैग में डॉक्यूमेंट मिला है. उस पे उसका नाम उस पे लिखा है इंडियन समथिंग समथिंग. वो स्टैम्प वैम्प है पासपोर्ट के. वीजा वीजा. भाई वो डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं भाई. I will let you know in a few days. भाई कुछ खेला क्या पासपोर्ट मैग्नस के. ने. हाँ यार पासपोर्ट के नहीं अभी तक तो क्वीन C5 खेला. आई थिंक उसने क्वीन C5 ओ डिड खेला ही उसने. प्ले क्वीन C5. हाँ क्वीन C5 खेला उसने. आई थिंक मैंने देखा था बोर्ड पे. हाँ Yep, Queen C5 played. And chat सवाल आपके लिए. Should Prag trade queens? Yes या no spam करो chat. Come on. Should he trade queens or no? That's a very important decision. And you know chat, एक बहुत important skill है chess का. And this is what I learned from actually asking top players and reading books. And that is, जितने choices आप opponent को दोगे ना, उतना chances है he makes a mistake, right? Saj, what would you say? Is that correct? जितने आपके चांसेस होते हैं एंड देन व्हाट. जितने आप चॉइसेस दोगे ओपोनेंट को, उतना चांसेस की ही मेक्स अ मिस्टेक. Yeah, of course. That's what I think people at the highest level can do this in a much like better way. कि सब लोग Exactly. नो क्यों लिख रहे हैं. भाई यू शुड नॉट ट्रेड क्वींस. नो सही तो कह रहे हैं. हाँ you should not trade queens, of course. हाँ For sure, yeah. सो यू शुड नॉट ट्रेड क्वींस चैट. एंड गेम में जाके या दिस एडवांटेज हवा में फुर हो जाएगी. सो मे बी क्वीन F3 थ्रेटनिंग चेक, क्वीन G3 थ्रेटनिंग G7, कुछ भी खेलो बट क्वीन ट्रेड नहीं कर रहा है. भाई चैट बहुत स्मार्ट है. जो लोग हाँ लिख रहे हैं, और क्वीन F3 प्लेड बाय द वे. इफ यू डू ट्रेड क्वींस, प्रॉब्लम क्या है? जस्ट टू एक्सप्लेन दिस. रुक टेक C5, किंग अब सेफ है, पॉन हैंगिंग है, एंड दिस इज हाउ यू लूज. दिस इज एक्चुअली बेटर फॉर ब्लैक नाउ. तो एंड गेम में ब्लैक इज परफेक्टली सेट अप. बिशप अगेंस्ट नाइट, पॉन अटैक, C5 अपने हाथ में. You would lose this most likely. So going back, Queen F3, excellent move by Prag.
Also, someone is saying that you have defeated Prag before. Was it in a classical game or it was in a rapid हाँ game? actually क्लासिकल गेम में हराया उसको, अच्छा, बुरी तरह हराया मतलब था वो। it's a cool flex. Nice, हाँ nice, nice. नॉर्मल एक्चुअली, यू नो दैट You शुड, are आई just थिंक मैंने किसी ने कहा था यार, गेट देम व्हेन दे आर यंग, लाइक उनको पहले हरा दो ताकि बाद में कोई भी वर्ल्ड चैंपियन that बने। sounds so wrong. भाई किसी जीएम नहीं कहा था यार ये, आई थिंक किसी टॉप जीएम ने कहा था, आई डोंट नो किसने कहा था। उसका गेट देम नाम व्हेन दे मत आर लेना, वो बेचारे को बेचारे को एक्सपोज कर रहे हो आप। तो बेसिकली उनको सब बच्चों को पहले ही हरा दो ताकि कोई भी जी वर्ल्ड चैंपियन बने, यू हैव दैट फ्लेक्स नाउ। That's true, that's true. सहज भाई, आप इंडिया के कौन से नंबर के जीएम? I would think I was the 29th grandmaster of India. B takes C4 on the board and Sahaj, and chat सवाल आपसे है, what would you play in this position? This is a very important moment apparently. Shivansh is saying, lol, please don't get them while you're young. Alap, defeat them when they're young, bhai. Come on, bhai, let's go. Yeah. Come on, Sahaj, bhai. So BC4 now what? BC4. So BC4, Bishop D5. BC4. Now just CD5. Yeah, this is kind of And equal. this is equal. So This is kind of equal. तो थोड़ा पहले जाते हैं after BC4 and let's think here. Then can I play Queen H5 check first? Yeah, so Queen H5 check is one of the moves that maintains the edge, but King F8 now, and black is, yeah, kind of close, but yeah, I agree with you. You now have to find the same move you found earlier again, I think. I have to find the same move I found earlier. मतलब ये पहले मैंने ढूंढी थी. हाँ, जो second move थी Queen H5 के बदले. That is one option. Or you could play a move like Rook BC4, F3 okay. apparently. But this I'm not so convinced with. I think this looks too vague. This is too vague. So, second move क्या होती है, Sahaj? Sure. Sorry? Second move यहाँ पे. What else could you play? I would say BC4 या फिर Queen H5 check and Rook C1. Rook C1 में तो Bishop D5 मर रहा है, तो I don't like that. Queen G4 or Queen G3 can also be another options. Oh, B4. Why not B4? Yes. B4 is one of the moves apparently. It's the best move. B4, and you know, it's like the moment you see it, you can't unsee it again. It looks so good. Yeah, and chat's problem क्या है? First of all, you can't go here and here because queen trap. Queen यहाँ नहीं आ सकती. तो square कौन सा है हमारे पास? Queen B5, now Queen H5. And if King F8, then Knight takes F6, followed by Rook D6, Queen H6, and Queen is no longer defending, and this is over. Beautiful. This is over, chat. Rook takes D6, and the game is basically over. So you have to play Queen C6 here, and that blocks the bishop. Very important, blocks the bishop and gives you time to continue the game. And ये लेकिन निकालना सहज कितना आसान है? I think this looks difficult. I would say it's not completely unbelievable. Before normal चल लगती है because you know like for the time being आप वो pawn sacrifice कर रहे हो, but लोग लेकिन C4 या D6 का pawn आप कभी ना कभी तो आप वापस ले ही लोगे. I feel. It's like it's not really a pawn sacrifice, you know. And कई लोग कह रहे हैं why not Rook C1? The problem is again Bishop D5 chat. This knight we cannot give away. यही हमारा pride and joy है पूरी position का. If we give this knight away, then we are basically saying कि यार I'm playing for equality now. इस case में तो we might be even worse. So BC4 के बाद can we have full screen? Prag, Sahaj, ये जो इतना bent forward है Prag, we saw this last when he was actually winning. I think he has seen B4. I do think he has seen B4 here. What do you think? 1 second. मेरा निंजा थोड़ा हैंग हो रहा है. एक सेकंड. निंजा भी हैंग होता है. हाँ, I was thinking यार. I was thinking he has seen B4. That's my understanding. He probably has seen it. What do you feel, Saj? Yeah, for sure. I think B4 he has seen it. It is possible. Oh wait, he gave the check. He played Queen H5 check. Also a good move, chat. Next move, no? Next move में B4. Yeah, next move possible है. King F8 now is apparently, yeah, it should be the only move. I mean, King D8, Queen F7 should be over immediately. So King F8 played. And Sahaj, now comes the critical moment. He could try B4. He could try Rook F3, but that's a bit, that's not the move you think of, no? Or do you? No, not really. उसका हाथ तो जा रहा है कहीं पे. Is he going for BC4 or is he going, do you think he will, he might play Rook F3. क्या बात है. Arre baapre, best move played. By that is interesting, yeah? And now
For example, chat, let's try to figure out the idea. Let's say black plays a5. Okay, he does nothing. Oh, is knight f6 the idea again? क्या idea है यहाँ पे? Knight Is or f6. rook g3? Did he play a5? No, I was he just didn't. testing. Let's say a5 Okay. random move. Oh, he played something. Yeah, not yet. Rook g3, knight f6 ना, knight f6 सीधा भी तो मर रहा है ना भैया. Knight देखो f6. knight f6, g f6, queen Pawn h6 check. takes. नहीं queen h6 check नहीं, पहले rook g3, पहले rook g3. हाँ, पहले rook g3. Oh, rook c7. Oh, rook c7, queen h6 check, then there is king e8. Okay, never mind. हाँ. So let's go back. Queen h6 check पहले देते हैं. हाँ, so knight f6, gf6, queen h6 check and king to. Okay, I'm confused where to go नहीं, now. अब तो f7 पे आ रहा है, कुछ rook c g8 खेल सकते हो आप. After yeah, rook g3, there is rook c g8. Nice. So rook g3 first then. So king f8, rook f3, agar a5, then rook g3. This is the plan, and now knight f6 is a huge threat. So that is the plan, chat, and this is very dangerous because basically, chat, black is playing a rook down. Yeah, basically. है ना? That's basically. अब हम pawn down तो है हम वैसे, but लेकिन यहाँ black का rook एकदम out of place है यहाँ पे. Yeah, that is the issue. अगर ये rook कहीं अच्छी जगह होता, king अच्छी जगह होता, then black would be even better, maybe not better, but yeah, it would be okay. But ये rook down खेल रहे हैं, तो इसका फायदा हमें उठाना है. This is a very temporary advantage. ये long term नहीं रहेगी. Black at some point will move his pieces and get the rook out. So यहाँ पे initiative is very important. And यहाँ पे if you go back, rook f3 played, and black should ideally chop this knight off, Sahaj. I think that has to be a priority. Absolutely, because you have to take the knight away so that you can play king e7. तो अगर आप king e7 खेलोगे तो आपको rook भी बाहर आ सकता है, like in the future. Maybe not immediately, but कभी ना कभी तो वापस बाहर आ सकता है. तो and also the वो d5 का knight is a super powerful piece, so you have to take it away. Absolutely. And Keshav bhai keh rahe hain Pragg is pawn down, but Keshav, Pragg is a rook up. Exactly what we said. Because फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप कोई एक आर्मी की फाइट चल रही है, ठीक है, दो आर्मीज फाइट कर रही हैं, बट एक आर्मी के 4 लोग घर बैठ के चाय पी रहे हैं. टेक्निकली दे आर अ पार्ट ऑफ द आर्मी, बट दे आर नॉट फाइटिंग. सो टेक्निकली इट्स यू आर विनिंग द फाइट बिकॉज उनके 4 एक्स्ट्रा लोग घर बैठ के पानी पी रहे हैं, वो नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं भाई. सो इट्स नॉट रियली अ पॉन डाउन, वी आर अ रूक अप राइट नाउ. इट्स टेम्पररी, बट इट इज अ रूक अप. Absolutely. Sahil bhai, I have a question for you. Do you like covering more when it's the Armageddon format, or more when it's the classical format in the same event? Like which format do you like more? I think formats zyada I kind of prefer the players. So I prefer Indian players playing Carlsen, Hikaru, all these matches. But yes, I think faster time controls do have that extra element of, more number of games and more blunders. So I do like Blitz. But by the way, bishop d5 played. It's on the board. Rook takes d5 played. And now queen to b6 by the greatest of all time. And to be honest, we can just chop this pawn off or even play a move like rook to c3. We don't have the rook g3 idea now anymore, chat, because there is no knight. So, Sahaj, but let's say if I play b takes c4, the most obvious move, right? And black chops off the pawn back. Let's say उसने वापस मार दिया. Rook b3. How is white? No, rook b3, rook c1 check आ रही है. नहीं. Rook b3, rook c1 check आ रही है भाई. Oh, look at this. Rook c1 check. Rook d1. Rook d1. बच गए भाई. But Sahaj, how bad is this? If we go back here, how is it losing, or is it like, okay, how does black hold this? Maybe rook c1 check, rook d1, some takes, rook queen c7. I don't see an immediate loss there. Oh, there is queen d5 maybe. There is queen d5. b1. Oh, no. Oh, queen d5, but there was queen c1 check. Yes. And that would have been a draw. So, very tricky. Chat, I'll tell you simple funda, ठीक है? If Carlsen manages king e7, rook out, he's probably comfortable, if not better. Simple funda hai, theek hai? But he will not manage this. It's not easy. I don't see how you do it, Sahaj. Is there a way to do it for Carlsen? To win? No, I mean just to get the rook out. Any way to get the rook out. No, how does he... I mean, you can play king e7, but then rook g3. Then उसके बाद भी आपका g7 के pawn के पीछे आपको मतलब you just have to keep defending that. And even if let's say I don't play, मान लो कि वो rook exchange भी हो गया, let's say rook b3 पे मान लो, then queen h7 मर रहा है. Yeah, exactly. That's another thing. I mean, I thought आप h6 खेल सकते हो, but then queen g6 आ जाएगा तो वो कहीं पे it's not possible, yeah. So, would you say
it is really good for Pragg because his path of getting rook out is not easy. Yeah. I think he has some chances to win here for sure. क्यों नहीं? Oh, by the way, Sahil bhai, this just reminded me क्योंकि अगर प्राग जीतता तो मेरे मैगी के counters बढ़ जाता है. I just wanted to remind you, and I also announced it when you were gone, that game number 3 between Hikaru and Alireza has ended in a draw. यार वहां पे कारुआना जीत रहा है, हमने उस पे क्यों नहीं बेट लगाया यार? मेरे मैगी Caruana, बढ़ते जा रहे हैं यार, किस्मत ही खराब है. wow, Caruana is actually completely winning now, yeah? Denjabhai, can we for 30 seconds go to Caruana's game and then come back? And this is really bad news for the world champion Ding Liren, who's basically just completely busted. Material-wise, he's not doing so badly. Rook for 2 pieces, something, couple of pawns. But the problem is the king. And there seems to be no defense. Some queen g5. Literally killed diya usne. And yeah, some rook e3, queen h5, rook g3. It's literally looking like mate soon. Also, Niranjit Bhai has also mentioned that the Armageddon game of Hampichi has also begun. If you want to take a quick look at that and see what's going on. So quickly before we go there, I think this was the moment where Caruana sacked the knight with the brilliant move, knight takes g7, bishop takes, and queen g5. This is how we won. I really want to just have a quick look and go back to Pragg's game. So going to the Hampi game, let me quickly find it. If I can find it. Yep, I found it. It's here. Where is it? Oh, Hikaru's Armageddon game is also starting, guys. This is hectic. What? भाई ये क्या ओपनिंग है भाई? What is this? भाई G5, GH4. भाई ये क्या है भाई? H5 क्या है भाई? There is some new London system को break करने की कोशिश. नहीं, not even London. उसकी position already better भी है, अगर आपने note किया तो. हाँ. Wow, this is some crazy line, yeah, by Tingji Lee. Crazy, yes. So chat, ये crazy line है. We'll follow this. Going back to the Hikaru now. अबे कितना कुछ चल रहा है? Hikaru Armageddon कहाँ है भाई? भाई कितना कुछ चल रहा है? No, it's not started yet. Not started yet, chat. So going back to Pragg. Going to Pragg. This is important, chat. B4 played. Pragg has played B takes C4, chat. So he has taken the pawn back, the best move. And now material-wise, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. He has no material deficit as of now for this. Carlsen can take the pawn back, but it's like moving the same piece and opening the C file. So it might actually help Pragg to have this open C file because unke pieces are active. Hai. No, for sure. But rook c4 also it's like position already kharab hai, but let me just take a pawn and that can be some form of compensation later on. Takes by, he has taken it. And now rook b3 should be an obvious move here. Played. क्या बात है? क्या c7 maybe? क्या स्टाइल से खेला उसने Pragg ने rook to b3 and exclamation mark. Carlsen scratches his head. Oh, he's holding it. Can we have full screen? I think he understands this is really bad. Chat, I know there are a lot of games going on, but we have to stick to this. I mean, this is going to be one in the history books for years to come. We have to stick to this. Wow. सहज भाई, आप ऑनबोर्ड गेम में कितना एडवांटेज है आपको एनालाइज कर लेते हो? I mean, you mean मैं कितनी मूव्स एनालाइज कर सकता हूँ? It depends on the position. Actually, it depends. But most, like, I think grandmasters see maybe 3-4 moves ahead, पर उसको जज वो बेटर कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि you can, yeah, there are some lines जो आप काफी आगे तक देख सकते हो. And I think Pragg and the 2700 above players ये बहुत extend तक कर सकते हैं इसको. Maybe even more than 7-8 moves as well. But I think it's more about judgment. So I think they can judge the position much better than other people. Stream is not sponsored by Maggie, but we are looking for Maggie. अगर sponsor करना चाहिए, we are always welcome by to sponsor the stream. By the way, Sahaj, Pragg has to play 11 moves in 14 minutes. I do think that is doable, especially because pieces बहुत कम है. What do you feel? I would say it's definitely doable. Yeah. There is, I would not be worrying about this. By the way, Sahil, the Armageddon match between Hikaru and Alireza has begun. Oh, that's crazy. We'll have a quick look. Kya position hai? Very dynamic. Quick back to Pragg. Sorry, bhai. I want to stick to Pragg. Natamari kya chal raha hai? Wapas aa gaye, bhai. Sahaj bhai, please Khan allowed to seal the deal. नहीं यार, I think Khan एक ही बार हिलेगा यार. It's not possible to shake it twice in a single game, and we should respect the boundaries of the Khan.
And फिलहाल के लिए chat rook b3. एक chat में किसी ने कहा why not rook b4? That is a very good move, but now you can bring the second rook back. And if you take, I take again, and it's the same deal. And this time it's even worse for black because queen is fighting against rook and queen. Maybe I can go queen c7, but यहीं पे हम डिस्कस कर रहे थे वो queen को b1 पे रख के and then you can put your rook on b7 कि जब तक black का rook बाहर आएगा h8 से तब तक I feel it will be too late. It can be too late. Maybe black can play. Oh, he played something. He played rook b4. It's on the board. Oh, rook c3 also, right? Isn't there rook b1 check or rook d1? Rook d1 again. Rook d1 again. Rook c3 also very tempting. 4,500 लोग देख रहे हैं chat. This is insane. We might be witnessing history yet again because I know Pragg ने बहुत बार हराया Carlsen को. I know we've seen this multiple times. But over the board, I don't remember Carlsen losing to Pragg in a classical game. And classical game is what matters in terms of, world championships, titles, sab kuch. It is the true form of chess. And Carlsen, I don't think Pragg से कभी हारे. वो किसी से नहीं हारते यार. 2024 में कोई गेम हारे भी हैं वो इस साल. I don't think he's lost any game so far in the year. Ooh, rook d3 played. Yep. King e7 अब खेल सकता हूँ क्या मैं साहिल भाई? King e7. That looks very dangerous, but I don't know how to beat it. सब कुछ ही dangerous है वैसे तो. Maybe queen g4. Queen g4, king f7. G4, king f7. Then I take the rook b3, no? Now Yeah, I have rook b7. Oh, rook b3. Queen e1 check. King h2. Just to show कि क्या चल रहा है भाई. This and check and king h2. And now rook b7 check, yeah? Yeah, this you'll is win over. g7, you'll win f6. Yeah, that would be winning. Yeah. Oh, man, come on. Let's go. Very tough, very tough. Such a crucial moment, chat. बेसिकली हमें बस एक चेक देनी है, चाहे वो 8th रैंक पे हो, 7th रैंक पे हो. रुक से एक चेक लग गया ना किंग को, दैट विल बी गेम ओवर. Man, this is insane. Oh, he played something, yeah? No, not yet. I can see him writing down something. कई बार मैंने कोई किताब पढ़ी थी, आई थिंक एलेक्जेंडर कोटोफ की. वहां पे ही सेज कि उनके ओपोनेंट ने कुछ मूव बिशप e8 खेली एंड देन ही रोट रिजाइन्स ऑन द स्कोर शीट एंड मैंने अगली लाइक ही वाज अबाउट टू रिजाइन नेक्स्ट मूव, मैंने अगली मूव ब्लंडर कर दिया एंड देन उन्होंने वो काट दिया एंड देन ही वन द गेम. सो तो चेस में कुछ भी कभी भी हो सकता है चैट. एनीथिंग कैन हैपन एट एनी पॉइंट. It's like the only game. It's the only type of sport जहाँ पे आप completely winning हो सकते हो और एक साल के अंदर आप completely winning से completely losing हो सकते हो. हाँ. It's like tennis, no? You can win couple of one set 6-1, so it stays with you. You will not lose this. ऐसा नहीं है थर्ड सेट जीता और पहले दोनों सेट completely disregard हो गए. चेस में होता है ऐसा. चेस में you can lose it. चेस में होता है. Magnus Carlsen, Pragg finally sitting in front. He is confident. 14 minutes he has. It's enough time, chat. Carlsen More does than not enough time. Yeah, he does not look happy. I think he goes for something like king e7. प्लेसिबो की वजह से ब्लंडर किया. अरे भाई प्लेसिबो, वाह भाई, आप डॉक्टर हो क्या? Chat, by the way, I want you to spam. What do you think happens in this game? Win, draw, loss for Pragg. What do you think will happen? वो रुक को छू रहे हैं. Maybe he will play rook b5, Sahaj. Maybe he what? Say that again. Maybe rook b5. Then what? I can just play rook d3, no? Yeah, queen d1, queen d1. Rook b5 अच्छी चाल है actually. Queen d1, king e7 maybe. a4. a4. Idea तो वही है ना मेरा. Wait. But I think he's going for rook b5. Oh, he took on b3. What? What? This is losing, no? Wait. It's not losing, but it's definitely a mistake. It's definitely a mistake, I think. I think this is a big mistake. But how? Okay, so now rook b3 obvious. So rook That's pretty b3, obvious. queen c7 is forced. Otherwise, I have rook b8 check. But now queen d1. We saw this, no? Queen d1. Queen d1, queen b1. हाँ, यही तो हम डिस्कस कर रहे थे. हाँ, we saw this.
So what's the defense of the queen d1? Has he seen something we haven't seen, Sahaj? Because बार भी बहुत खेलकूद कर रहा है ऊपर नीचे. It's not clear to the bar even. But I don't understand. I can just go queen b1 and rook b7 and आपका king बाहर ही नहीं आएगा ना? Ooh. Prag is not at the board. Come on, भाई washroom break के लिए गलत time है ये भाई. हाँ, he has like 13. No, we should just remind everyone he has 13 minutes for 10 more moves. And कोई increment नहीं है guys, पर 40 moves के बाद 10 second का increment है. Sahaj, it's Magnus Carlsen we are talking about. You know, it's Miss Cooper we are talking about. Instant का dialogue मारने लग गया हूँ मैं भाई. कुछ ना कुछ तो सोचा होगा इन्होंने. कुछ ना कुछ तो सोचा होगा. But as of now, it looks completely winning for Prag chat. Oof. Important moment. We might be like Give me 5 1 moves. second, I'll just be right back. Chat, we might be 5 moves away from Carlsen resigning. भाई ये क्या गए 2 सेकंड में बैठ गए यार. उठे और बैठ गए. I just had to switch the light on. अच्छा, got it. पहली बार किसी बंदे ने कहा है be right back in 1 second and he actually came back in 1 second. Exactly, punctual है भाई, ऐसी बात नहीं है. It's me, Cypher is saying, I don't want him to make a mistake. You and me, brother, you and me. Both. But queen d1 is the only move apparently. But it's an obvious one. Like it makes sense. Yeah, it makes sense. Queen d1, queen b1, yeah. Queen d1, queen d5. Sahaj, we have 5,200 people watching right now. Magnus Carlsen versus Praggnanandhaa. Praggnanandhaa is winning against the GOAT, the champion, the legend, the crazy chess player, Sahaj Grover. I mean, Magnus Carlsen, crazy. Let's go. Let's go. Also, we have 1,100 on the chess.com channel as well. That's great. Yup, that's insane. Close to like 7,000 people watching overall. Man, Carlsen दोनों हाथ सर के ऊपर. हिकारू घूमते हुए बोर्ड के आसपास एंजॉय करते हुए Carlsen की हार. Wait, isn't Hikaru in an Armageddon game? भाई Carlsen की हार भी तो एंजॉय करनी है. हाँ, वो भी है. He's actually completely winning in that game also. Oh, queen, please, queen chew. And he has played queen d1. Prag finds the only move. He's completely winning now, chat. Completely winning for Praggnanandhaa. He looks at Carlsen. He's staring at Carlsen right now. The stare is on. The stare game is on. Carlsen knows he's busted. Man, classical game. Game. Isn't he just losing a queen? Honestly, queen b1, rook b7, अब रोक कैसे रहे हो? So this is where, we have to take the help of the engine, see what is the best defense. Apparently, g6 is the best defense. Queen b1? Queen b1. And now queen to c6. But I don't see how you survive this. ये क्या है? Rook b7 तो अभी भी खेल लिया. Yeah, rook b7 is over. I mean, there's no defense. There is no defense. This is lost. Rook g8 कह रहे हैं भाई. Rook g8 क्या move है भाई? कौन? Rook g8, okay. Queen b3, rook g7 maybe. हाँ, but then rook b8 check है ना, then आपकी queen मर रही है. नहीं, queen b3 पे queen c1 check है साहिल भाई. Oh. Queen c back rank के बारे में नहीं भूलना चाहिए. Oh, so that's why king h2 maybe is the best move. Oh, yes. I like king h2. King h2 is a beautiful move. Wow. Going back. Chat, I think we might be 3 or 4 moves away. If Prag finds the next 4 moves, the best moves, the game is over. It's over. I would say so, yeah. I would say so. Completely agreed. Chat, Prag की rating I think कम से कम 6 point बढ़ेगी. He will cross Vishy Anand in the ratings, and also Carlsen will drop down to 2822. That's his lowest rating for a long while. In fact, I'm going to check. Ever, yeah. I'll check क्योंकि last time इतनी rating कितनी थी. I'm going to check that immediately. Let me just check his rating graph. So 28. Let me check. So he was 2822 into September 2011. Oh. 2823. No, he was 2822 once in 2017 August. I can see it. And 1 point नीचे अगर आप जाते हो, 2821 अगर आप जाते हो, that was in 2011. So Sahaj, this is the lowest rating. Let's assume he loses 1 point for now.
This is the lowest rating Carlsen has had since 2011, and he wasn't even a world champion then. Wow. 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 People are saying Fabi can overtake Maggie, and that is actually could be possible because Fabi is also winning Yeah. his game against Yeah. Ding Liren. Yeah. So he would be like 2808 or something like that. तो उनके बीच में 15 पॉइंट का फर्क होगा, something like that. Yeah. I agree. I think थोड़ा ज़्यादा होगा, but yeah. नहीं, 15 actually थोड़ा उतना ही होगा. ज़्यादा है. You're right. You're But right. he was in 28004 or something So like that. So he yeah, would he win 3-4 defeats points. Ding and he gets like 4.5 points. He goes to 2808, 2809. वो 13 पॉइंट का डिफरेंस है बस. Exactly. मैं कह भाई रहा था ना आपको साहब. ये by the way, I was having this discussion with Sahil before, before the start of the day one. It's possible that Fabi can, increase his rating in this event. Yeah. This is crazy, chat. Why? The chess world, the chess order of the world is changing. Like the world is changing. One number two का भी पता नहीं है. हम तब से इंडिया नंबर 1 इंडिया नंबर 2 कर रहे थे, वर्ल्ड नंबर 1 चेंज हो रहा है. Chat, एक बार ना. Okay, I will not ask. अभी spam नहीं करना. Let's wait for the game to finish. I think now it's close to finishing, so now we can just wait for the moment. But overall, सिर्फ 4 move. I would say even 3 move Pragg ने खेल दी. The game is over. Also Sahil bhai, I know I keep reminding you and I'm sorry about that, but लेकिन वो जो likes वाला counter था ना आपका 1.5 का, it has been completed. So एक काम करते हैं, मैंने कहा था ना 3 महीने की, जैसे ही गेम खत्म होगी मैं सीधा 3 महीने का चैलेंज कर लूंगा, अब 1 महीने का नहीं. सो दैट विल बी द क्रेजी चैलेंज चैट. सो तैयार रहो चैट. 3 महीने का डायमंड मेंबरशिप का चैलेंज इनकमिंग. जैसे ही प्रग जीतता है, इफ वी रीच 2000 लाइक्स तो एक और मेंबरशिप करेंगे. सो टोटली अप टू यू. लेट्स गेट टू 2k लाइक्स चैट जल्दी से. अरे वाह, क्या बात है भाई यार. ऐसे दिन अगर होना यार, मैं तो यार मतलब कितना खुश रहता है. पूरा दिन पे चेहरे पे स्माइल रहती है. घर वाले पूछते हैं इतना क्यों हंस रहा है, पता नहीं. कार्लसन विल विन. शिवा भाई, अगर तुम प्राग ब्लाइंड फोल्ड भी खेलेगा ना ये गेम, ही कैन नॉट लूज दिस. देयर इज नो चांस. इन द वर्स्ट केस सिनेरियो दिस इज अ ड्रॉ. कुछ खतरनाक ब्लाइंड हो जाए, हार तो सकता ही नहीं है. देयर इज नो वे. हारने का चांस तो next to 0 है. And I think he's completely winning now. Yeah. I would say so. Koneru Humpy won, by the way, one update. So that's amazing. She has won her game. Vaishali won. Oh, both won kya women section mein? No, So Vaishali is still playing, but she has a much better position. So Humpy has won. Vaishali is still playing. Also, like in Fabi's game, it also looks like it's completely winning. And also another update is that Hikaru has defeated Alireza in the Armageddon match as well. So Sahaj, that means all the games are finished. Women's section mein sirf Vaishali is playing. That's the only game remaining. Humpy's game is over. Caruana's game will be over soon. And Hikaru's game is over. Oh, G6, he finds the best move. And now chat, let's go. Queen to B1. Let's just go for it. And chat, to be honest, even FG6 is winning. But let's not open the rook. As a general principle, the last thing you want to do is this. Jahan pe, I know white is still winning, but now it's Queen B1 only move. Otherwise, black is back. So let's not open the rook. Let's keep the rook trapped and let's play Queen B1 directly. That's very important, I feel, as a general principle. Here, probably you can also take. It does work, but then you're down to only moves Queen now. B1, na, let's play clinical. Clean game hona chahiye bhai. Any chance C1 F4 perpetual? It is possible. So that's why kuch variations mein King H2 might be a good option just to get out of this check. He finds Queen B1. Sahaj, Pragg is on fire. And accuracy wise, just to put this out there, 97.3 accuracy for Praggnanandhaa and 91.1 for Carlsen. 6.2 ka difference hai. I feel like यहाँ पे Magnus is about to lose the queen. Like in a few moves, I wouldn't be surprised if in the next 5 moves there is a resignation. Man, this is beautiful. This is beautiful. Oh man, मैं tweet तैयार कर रहा हूँ अपना.
Man. Oof, this is historic essay. Like this is not even like not something to be like, this never happens. Never ever happens. Has Pragg ever defeated Carlsen in an offline event? I think he might have in a rapid blitz event, but classical, this has never happened. I can't think of a single moment. If Carlsen साल में एक या दो बार तो हारता है, तो वो Pragg के साथ होगा, it is very unlikely. Just by pure probability. Carlsen will win, yeah. There's a higher chance of RC winning the Queen IPL C5. now than Queen C5 on the board. Oh, Yeah. Carlsen sets a trap, because if you play rook b8 check, king g7, queen b7 check, it looks like you're about to win a rook. But I think black has a perpetual here. Because king h6, rook takes h8. And there is queen c1, queen f4, queen c1, queen It's f4. a draw. And It's a draw. that's a draw. Yeah, So therefore, that's a very, very sneaky trap. Rook b7 chat. The idea is to cut off every piece on the back rank. Rook b7 should be winning on the spot. And it should not take long for Pragg to find this. It's an obvious move at this point. Oh, his hand is going there. He is ready to play the move. I think he will go for rook b7. वही रुक वहीं आगे and he plays rook to b7. Carlsen knows भाई गई भैंस पानी में खत्म भाई, over game. He gave Magnus the stare down again. Oh man. Man, this is beautiful. This is beautiful, yaar. This is art. Because आज की game जो थी ना, it was so flawless. क्या ही chess है. This was one moment I think जहाँ पे he could have like sacked a pawn and not given any chances, but उसके अलावा तो यार amazing. I mean, it was basically a flawless game, yes. Wow. साहज भाई 6000 लोग देख रहे हैं भाई chess 24 पे. And then we also have like, how many people we have? We have 1.13. Oh man, कितने सारे 7500 people almost देख रहे हैं यहाँ पे जीतते हुए उसको. What a moment. Wow. Handshake incoming कह रहे हैं हर्ष. You are correct हर्ष भाई. I think handshake incoming soon. अगर आपको ट्विटर के फॉलोअर बढ़ाने हैं, चैट कंटेंट स्ट्रेटेजी तैयार हो जाओ. Pragg को सपोर्ट करो and followers भी बढ़ाओ. Let's go chat. This is about to be over any second. हाथ बढ़ने वाला है and there is no defense. If rook g8 trying to escape somehow, bring the rook, I would say a simple move would be again king h2, get out of all checks. सारे checks हटा दो. And let's say gf5 यहाँ पे आता है, then there is queen b3 threatening mate. And अगर rook g7 by chance आता है, then rook b8, king e7, queen b7, king e6. He just played. Oh, he took the pawn. Sahaj, I want to play queen b3. I want to avoid queen c1. So king h2 feels like the obvious move here. King h2 is easy. Queen e3 खेला तो. हाँ, हो में क्या था? King h2, what of queen f4? Let's say queen f4, but then there is then rook c7. Rook c7 threatening queen b8 mate. There is no defense. That's simple. There is no defense. Very simple. And check पे king h1 and the queen defends the back rank and it's over. Chat. Do move or and Carlsen will resign. Come on, Pragg. Just play king h2 here. So wait, this actually means the ear gambit never disappoints. Let's go. Yeah. I 100% record ear gambit का भाई. कोई नहीं रोक सकता. Record. Magnus के against भी काम कर गई यार ये तो. ये नहीं सोचा था मैंने. NM Sahil looks like Karan Johar. Let's hope my bank balance also looks like Karan Johar soon. Magnus played my move. अरे भाई आप ही legend है. Gotham Chess got the thumbnail. Dude, he already licking his lips right now. 500k views incoming. साहिल भाई इसमें कुछ सच है क्या? इसमें कुछ तो होगा. I feel like I'm going to use this in my own games now. क्या चीज? मेरी औरों के लिए यूज होगा. What do you think? औरों के लिए क्या चीज यूज होगा? Like with this ear gambit, do you think I should use it in my own games? Because I feel try like try it's working against Magnus यार. Come on. Oh, king h2 played. He found king h2. क्या बात है यार. Dude, Pragg is a legend.
By 97.5 accuracy versus 89.7. Carlsen Unfazed. is one move King away H2 from is just, yeah. why King H2 is one of those moves which just shows that he is completely unfazed. Oh man. This is just pure beauty, man. Pure beauty. Wow. Chat. I was here वाले moment maybe utna candidates itna to nahi hai, of course, but this was But still pretty awesome. Pretty awesome. yeah, I would say so. It's one of those moments, yeah. Uh, let's go. One move away, chat. King H2 ke baad only one move away. All he has to do is find the next move and Carlsen will resign. Only one move away, chat. Prag is the one. Queen कहीं भी जाए, कुछ भी करो यार. Rook G8 एक move है, Queen E3 F2 एक move है. And tomorrow, by the way, chat, just to remind you, do you know who Prag plays tomorrow, Sahaj? You said Ding Liren and then Magnus, and then who is it? Tomorrow, Prag plays Hikaru Nakamura. तो भाई कल, भाई Prag ने ही नॉकआउट किया था हिकारू को वर्ल्ड कप से, if you remember. Yes, I do. That's crazy. Let's have full screen, Ranjan bhai, because this is the moment to capture. Let's go. You're all set. Prag knows it's over. Carlsen knows it's over. He's trying to find some last trick that doesn't exist. Yep, this is lost. He knows it. Oh man, this is what chess is about. Yeah. And Jo bolo, yaar. I mean, we know how strong Carlsen is. He's won like 7 out of the last 8 tournaments he has played. And जो second आया एक में Firouzja के against. Otherwise, he's won 7 out of 8. So this is such a huge victory. Beautiful. Absolutely insane, yeah. Absolutely insane. Beautiful. Just beautiful. He knows he's winning. Of course he does. Update the live board. We have updated the live board. I think this is the live board, yeah. Chat, options क्या क्या है? If Rook G8, that's one move. ठीक है? Then you play Queen B3, trying to enter mate. And if he plays Queen F3 या कुछ ऐसा करके, मान लो यहाँ पे check देने के लिए, then you don't play this. That's, you have to be careful because Queen F4 check. Then you play Rook C7. So yeah, depends on what black plays. You need one extra move and it's over. Carlsen will resign. Yep, this is over. I feel like this is the moment where we can say that he has actually. I think it's very safe to say that he's going to win. 100% guarantee. क्या लगता है? Sahaj, so Prag OP start कर दे क्या? मुझे लग रहा है कि भाई अब तो मुश्किल है. अब तो कोई jinx नहीं हो सकता. अब तो we can go. नहीं बचेगा. Yeah, अब start कर सकते हैं. Let's go chat. Prag OP in the chat भाई. कर दो, start कर दो. अभी धीरे slow motion में start करो भाई. Prag OP space Prag OP. full speed में बाद में करेंगे जब जीतेगा तो. How come Carlsen falters often against Prag? I think that's a skill that Prag has. He is not, scared of Carlsen at all. बाकी लोगों का level down जाता है Carlsen against. Prag का ऊपर जाता है. He rises up to the occasion and he plays his best chess. He handled it so well, yeah, the whole game. Yeah, beauty. Just pure beauty, man. And not to forget, tomorrow, not only does he play against Hikaru, that is Prag, he also plays Carlsen again in this tournament. It's a double round robin, Sahaj. Damn. Prag is just about to defeat Magnus. Who knew this day would come here? Classical, who knew this day would come? Sahaj, the question is, do you think Carlsen will play more classical events now? Because I think he can take it two ways. Either he becomes motivated, then he plays a lot and tries to go back to 2850 and 2900, or he simply says classical खेलना ही नहीं है मैंने. I think I'm more inclined to believe the second part because classical खेलना ही नहीं है ज़्यादा, But then he would finish, on 2-8, stop classical at 2-8, 2-2, which Caruana can overtake. That's true. But I mean, there's still a lot of this event left. Gain overrating वापस gain हो सकती है, True. Prag OP is spamming in the chat.
Let's go. साहिल काजोल, ये क्या है भाई? Prag Queen कैसे C8 chill? is a blunder. Yes, there is rook B8. You're हाँ right. हाँ, Queen C8, Rook B8, and that's over. Mhm. By the way, Prag क्या chill कर रहा है ना भाई, मतलब ऐसे. भाई दिस इज क्या मस्त है. आई मीन इट्स क्रेजी, मतलब कि and Prag is one of like 5 to 10 people we have who could potentially defeat Carlsen in a classical game. We have, first of all, Gokesh, who's already qualified for the World Championship. We have Prag, who's defeating Carlsen right now. We have Arjun, who's in the world top 7 or 8. Then we have Vidit, who also defeated Hikaru twice in the candidates. We have Nihal, who's not played as much, but we know how strong he is. We have S.L. Narayanan. We have Hari Krishna. We have Arvind Chidambaram rising up the ranks. We have Ronak there coming. अबे क्या ही talent है यार. Hmm. Prag is a legend, absolutely. Oh man, what a moment. Someone is saying Magnus will play Queen versus Rook endgame. I don't think so. वो अगर तभी खेलेगा Queen versus Rook हाँ endgame अगर अगर pawns नहीं होते बोर्ड पे. हाँ, then you play on, then you play, because that's a tricky end game, especially अगर defense किसी को करना आता है ना. That's not easy to win in 50 moves, but with the pawns it's a pretty simple win for white. मतलब queen की end game, वो सारे pawn टक 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 करके then you queen one of the pawns. It's pretty simple. Karthik and Murli as well. Yeah, I think बहुत है यार. I mean, India could field like 10 teams for the Olympiad and not even go below 2600. मुझे ऐसा लग रहा है यार. तो मतलब हमें ये भी याद रखना चाहिए कि मतलब कि लास्ट हमें पिछला गेम भी ही लॉस्ट अगेंस्ट कार्तिक एंड मुरली. आई थिंक यू सेड दैट राइट. एंड आफ्टर दैट आई मीन दिस इज सेकंड लॉस इन अ रो अगेंस्ट एन इंडियन. Yeah, yeah. Carlsen definitely. Oh, he played something. Yeah, no, not yet. He wrote about. He picked up his pen but didn't play anything. Sahaj, get a question है मयंक का. Who among Indians will reach 2800 first and by what time? What do you think, Sahaj? Oh, that's a very, very difficult question. I would say, I mean, it has to be between, Gukesh, Prag, Vidit, ya fir, Arjun. Arjun, of course. I think it has to be one of them. It's a matter of कि कौन सबसे पहले जाएगा. Um, who do you think, Sahil bhai? I think If you had it will to be. just I pick think one. it will be most likely Gokesh, because he's playing the World Championship and he will have the maximum time as well as the resources to prepare for it. And he's playing 14 games technically against Ding Liren, who's higher rated than him. So to kind of have No, that no, 14-game Ding match, Liren is not higher rated than Gukesh. Is he? Is he higher rated than? similar rated, like similar rated, let's say. And अच्छा, वो हाँ. अच्छा match है to, let's say, win like 6-2 or 8-3 and then gain a lot of rating there. And he's also playing Grand Chess Tour, by the way, जहाँ पे he will face the same field as candidates, which starts at the end of June. 25th June से start our tournament, so it will be crazy chat. We'll see Ukesh play classical chess after a while, after the candidates the first time. Absolutely right. Carlsen looks dejected. He plays Rook G8. Rook G8 played, putting pressure on G2. And यहाँ पे बस एक ही move निकालनी है chat. Queen to B3. And that should be resigns, because Queen B3 के बाद Queen F7 mate is a threat. There's only one defense, like two defenses. Maybe D5 is one. But now there is Rook B8 check, apparently that wins. But even Rook G7, which looks like the logical move, now check. King here. Let's say E7. Check. King E6. I don't know. Rook E8 E8. mate, yeah. King here. And मैं तो Rook से mate करूंगा भाई. And that is game over. So Queen B3 and Carlsen has But no Sahil, option. if Queen B3, let's say if I go D5, what do you do then? Then there is Rook B8 check, apparently. Rook B8 check, King G. Oh, King G7 with this Queen G3 check. How nice is that? Queen G3 That's and really this is nice, game yeah. over. But the problem is there Rook takes B2 here? मैं ये देख रहा. क्योंकि you don't have any follow-up checks, no, after King G2. No So there is no checks. Queen G2. There's nothing. Yeah, this is No lost. checks. No checks. By the way, another quick update. Fabi has defeated Ding Liren, the current world champion. And actually, this is the first time जहाँ पे दो result आए हैं. I mean, this is the first time जहाँ पे कोई भी result आया है classical में, I think. Yup, and Ding loses. That is not a good sign for Ding and a great sign for Gukesh. And Queen B3 on the board, Sahaj.
This is amazing. क्या conversion किया है प्रग ने यार. This is just a beautiful game. D5 and now rook B8 checks should seal the deal. +10 है valuation chat and +10 मतलब chat, I don't know if you know, कहीं को पता नहीं होगा +1 का मतलब क्या होता है. +1 basically means an extra pawn, right Sahaj? Right. So +10 मतलब 10 extra pawn है white के पास. इतनी बुरी position है. या फिर एक ये queen and 1 pawn. हाँ, एक queen queen and होती 1 है pawn. 9 pawn. हाँ. Oh, he takes on h7. Okay, also logical, I think. And now Pragg queen OP b8. अभी भी स्पैम हो रहा है chess.com वाली chat पे. बिल्कुल chat spam करना start कर दो because queen b8 mate is threatened. Carlsen will resign on this move. I feel it is incoming. So Pragg OP spam kar do chat because he is going to defeat the greatest of all time, Magnus Carlsen, in a very convincing fashion in a classical game. This is just history in the making, and I do think it. And Carlsen has resigned. Praggnanandhaa defeats Magnus Carlsen in an epic classical battle. Carlsen cannot believe it. Flawless performance by Pragg. And man, Carlsen is not happy at all. He's dejected. He cannot believe he lost this. And it's like he never had a hope, never had a chance, Saj. Yeah, in this game he didn't have. I mean, I'm so happy to see that he's not. I mean, clearly he's upset, but he's happy to analyze the game. It is so nice to see that, isn't it? Yeah, it is. And you know what? Carlsen has huge respect for Pragg. He understands how strong he is, and they're trying to analyze where did the position go wrong. Honestly, I think it was when he sat down opposite Pragg, because Pragg will always be a challenge. Hey, nice. Nice to game hai Sahaj bhai, and that is it. Praggnanandhaa defeats Magnus Carlsen. What a moment this is. Beautiful. भाई Pragg OP spam करते रहो यार जब तक के लिए Pragg स्क्रीन पे है. He deserves it. What a moment, man. Beautiful. 1500 लोग chess.com पे, almost 7,000 लोग देख रहे हैं almost chess24 पे. This is an epic moment, and Pragg has converted the game very efficiently as he comfortably folds his score sheet and goes. And yeah, probably time to celebrate for today. Maybe a good meal, as he will come back tomorrow to play Hikaru, Sahaj. Yes, definitely. And what a moment this must be for him. No, I mean, imagine defeating literally the GOAT in a classical format, which is like his format. In Norway. Yeah, अपने in his hometown tournament. Wow. के घर पे आके भाई क्या बात है. Crazy. And chat, इसके साथ ही सारे रिजल्ट्स अपडेट करते हैं, फिर वुमेन सेक्शन में देखते हैं क्या हुआ. So open section में chat round 3, we have first of all Hikaru Nakamura winning against Alireza Firouzja in the rapid section, the tiebreak section. We have Caruana defeating Ding in the classical section with the brilliant sacrifice rook takes e6, and इसके बाद अगर वो f takes मारते queen e7, king h6 for example, rook e6, and that is over. So Caruana has a welcome win after his loss yesterday. And finally the brilliant result, Pragg defeats Magnus Carlsen with the white pieces. Carlsen को बदले का मौका मिलेगा pretty soon in this tournament because double round robin है. But tomorrow Pragg plays against Hikaru Nakamura. And women section में हम देखते हैं एक बार. So women section में we have Humpy defeating Tingjili. That's a great result. Armageddon में जीते वो. And Vaishali is still playing apparently, क्या? Yeah, it looks like she's still playing and she's still trying to push in this position. Although position I think equal सी ही लग रही है मुझे. Now that I think about it. But yeah, because उसके पास एक bishop है, there can be some chances here and there. But already we are at move 36 and time भी थोड़ा बहुत balanced है. It doesn't feel like there is it's going to be that hard to kind of hold this position. Chat, two things. First of all, 8:30 p.m. tomorrow, we will have Pragg against Hikaru. So he has a golden opportunity to win 2 in a row against the two legends of the game, the world number 1 and world number 3. And then he plays world number 2. So he plays world number 1, world number 3, world number 2 in 3, continuous games. And he could win all 3. That's crazy. And time for the 3-month membership because Pragg won, chat. Are you ready? मैं सवाल पूछूंगा अगले 4 मिनट में, कभी भी पूछ सकता हूं. Stay ready. Google खोल के जो खोलना है. This question might be a bit tricky because 3 महीने की membership में थोड़ा difficult होना चाहिए. साज क्या बोलते हो? बिल्कुल. Has to be.
Prag, my goat, absolutely, he's India's goat. By kya hi khela hai. And Saj, in this position, do you think it's a dead draw? I do have a pass edge pawn, but yeah, the bishop is good against the knight, right? I feel this is just a dead draw. Right? The bishop versus knight is an imbalance, or edge pawn is छोटा सा imbalance. But I feel like at the end of the day, this is going into the Armageddon match. I feel like, and that will be exciting to see. Saj bhai, maybe we can we have the camera just randomly भाई ब्रक का बोर्ड का लगा दो और बोर्ड ऐसे लगा दो. हाँ ये बढ़िया भाई, ठीक है, चाहे कोई है नहीं, बट विशाली का कुछ कैमरा का कुछ चक्कर है, तो वी कांट हैव द कैमरा, बट वी कैन हैव द बोर्ड एट लीस्ट. अच्छा. So we can't actually see the thing. Oh, I see. हाँ, बट वी कैन स्टिल हैव द कैमरा भाई. अच्छा लगता है भाई, क्या वो वाइट किंग ऐसे पड़ा है ना, इट लुक्स नाइस. आई वुड प्रेफर दिस वन. लेफ्ट साइड में दिख. Someone also reminded me, भाई. Cha-ching. अरे यार Cha-ching. भाई, Thank you 55 guys. मैगी हो गई क्या? 55 हो गई है guys. 55. We just crossed 50. मैगी OPP होना चाहिए चैट में. आई किडनी कहाँ बिकती है? डार्क वेब पे जाना पड़ेगा क्या मुझे? बड़ा गोपी इंडीड चैट. मतलब आपको आपकी मैगी के लिए मैग्नस भी हार गया. हाँ यार, बताओ यार भाई, सहज भाई किस्मत लेके पैदा हुए हैं. किस्मत नहीं, मैगी लेके. वो भी 55. तो चैट, मेरा सवाल रेडी है, ठीक है? आर यू रेडी चैट फॉर द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज, इट्स अ नॉन चेस क्वेश्चन, ठीक है? दिल्ली में आज पीक टेम्परेचर कितना था? द फर्स्ट पर्सन टू आंसर विंस अ 3 month मेंबरशिप. you're horrible. क्या बात है? डॉट डेसिमल के साथ. What is the answer? मेरे को भी बता दो. 52.3 is the correct answer. And उदय यादव जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. You are the first person, big fast sandwich, Mrs. Decimal नहीं था. You get a diamond membership for 3 months because Parag defeated Carlsen. So do tag me on Twitter and send me your username and I will add your membership. Bhai, please do make sure कि you prove कि you are Uday Yadav, वरना मैं नहीं दूंगा भाई. Then it's your fault. So you have to prove that to me somehow. And congrats Uday bhai, you have won. या फिर यही मेंबरशिप लिख दो यार, यहीं पे लिख, ताकि इट्स इजियर. क्या बात इससे पहले कोई उदय यादव अपना यूजर नेम रख ले. मेरे को लगा पाओगे कोई क्वेश्चन, कि प्रग का पहला 2700 विन कौन था. And that is like दिल्ली में वेदर क्या है. भाई मतलब आज हिस्टोरिक था भाई. 52.3, वी आर ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स एवरीवेयर. अच्छी बात है. अच्छा 50. अच्छा हाँ, I didn't think about that. That's true. हाँ, it was a record. Yeah, wow. नहीं चैट, कई बार यू टाइप द मैसेज एंड बाय द टाइम इट रीचेस द सर्वर्स इट्स लेट. सो आपको लगेगा यू सेड इट फर्स्ट, बट एक्चुअली इट्स नॉट फर्स्ट. सो बिकॉज आई हैव द बैक एंड एक्सेस, आई कैन सी हु एक्चुअली रोट इट फर्स्ट भाई. सो डिले होता है कई बार. अच्छा, ओके. टैग कर देना भाई यार, उधर भाई प्लीज टैग कर देना ट्विटर मुझे एंड यूज द यूजर नेम एंड आई विल गिव यू द 3 month membership. Bye. 52.9, 52.3 यार. I think 52.3 is the article that I read, so 52.3 is one that I had in mind. So even if it's wrong, that's the answer, bhai. Because किसी को 0.6 extra गर्मी लग रही है तो मैं क्या करूं? Chat, we have the board here. वैशाली कितना टाइम है उनके पास? 7 minutes to 8 minutes. I think कहीं ना कहीं पे Vaishali should draw this comfortably. We have 4 pawns for white, 4 pawns for black. Black has a pass pawn, white has a pass pawn, black has a bishop. So I would even say कि black technically should be absolutely fine here. Yep. I think this is more or less holdable, but I think Vaishali के side से she's still trying to play for a win. उदय भाई, अब यहाँ पे बहुत उदय आ चुके हैं, तो यहाँ मत लिखो कंट्रोल उदय, कंट्रोल, एंड ट्विटर पे लिख दो भाई. Also, Vaishali के गेम में कुछ अपडेट्स हुए हैं. I'm not sure if it shows here. Bishop D4 is the only move. Bishop D4 has been played, yeah. Also, we should have mentioned probably because just मैंने गेम खोला ना, I could see it. Just in the last move, Vaishali ने थोड़ा सा error किया to play when she played King F4. Apparently, there was some A5 move which was kind of A5 better. with the idea of sacking the pawn, maybe even getting 2 connected pass pawns. I guess that's the concept. That would be amazing if possible at some point. Yes. But yeah, I think अब king pass आ चुका है, तो now maybe it doesn't work. Knight h6 played. Chat, ये गेम भी 5 मिनट खत्म हो जाएगी. And can we have the standings? तो तक के लिए लोग सोच रहे हैं, एक बार standings दिखा दो दिनेश भाई open section की. Would love to see कि Prag is on top. Sahaj, that looks amazing. Carlsen is in 5th place. Wow.
Wow. Now that's something you don't see a lot. The world champion and the GOAT are number 6 and number 5. This tournament is just crazy. इतना ही Hmm. बोल सकता हूँ मैं. Completely. Yeah. So glad कि ऊपर है, and tomorrow Prag plays Hikaru. So that will be a crazy match. And day after rest day, उसके बाद he plays Caruana. So world number 3 and world number 2 to come. 1 करा दिया, 2 3 आसान होना चाहिए. Let's go back to the board, नीरज भाई, and see क्या होता है. Okay, so And we are, F5 on the board. yep. ये हम पिया क्रैमलिंग वर्सेस जू एंजुन देख रहे हैं ना अभी. Is this a armageddon match or is this a classical match? I think this looks, it must be Armageddon. No, classical तो अब तक मुश्किल ही चल रहा है. नहीं, this is नहीं, ये classical. This is classical classical. ही है भाई. Classical है. And even Vaishali's match is classical. So if this will draw, we'll actually have Armageddon after this. Yeah. So I prefer winning the classical by 3 point पूरे ले लो. हाँ, of Time course. हमारी time भी side से बचे, तो of course. time भी I think बचेगा, she's point भी trying. मिलेंगे. हाँ. Hmm. But Saj, I do think Black has some chances here, no? Knight is a bit awkward. Yeah. Low sound. अरे भाई, low sound किसकी है रोशन भाई? Will Magnus take revenge back on Prag in this event? He will try to. He will have the white pieces in round number 7. This is round number 3. Wait. There was a blunder in some game. There was a blunder. Wait, what? साहिल भाई क्या थोड़ा हुआ? पहले जाना. हाँ. जू एंजुन पिया क्रैमलिंग वर्सेस जू एंजुन में जाओ एक बार. Okay. I can't believe both of them missed it. Go one move before. Rook c4 here. Oh, Both of they them missed both it. missed it. Wow, knight f5 check would have won on the spot. Oh, they didn't expect it. And she sees it. She sees it now, I think. She missed knight f5 check. She missed that. She's pointing towards the f5 square. Yes. She completely missed it. Oh, Pia Kremlin would have won on the spot. Wow. That is crazy. Chess. That is crazy. Last moment tak you have to be very, very careful. Yeah, chess is really hard. भाई ये लो साउंड क्यों बोल रहे हैं इतना? किसकी लो साउंड है? पता नहीं. भाई मस्त रैप लग रहा है यार. Yeah, Pia क्रैमलिंग is not happy. I think she sees the knight f5 check. Yeah. सर गूगल बोल रहा है 52.9, 52.3 भी बोल रहा है गूगल यार. गूगल बहुत चीजें बोल रहा है, बट जो मैंने देखा भाई, जो मैंने पढ़ा था कहीं न्यूज आर्टिकल में, आई विल गो विद दैट वन. तो क्योंकि आंसर 2 है तो भाई फिर तो हम कर ही नहीं सकते. तो या भाई खाली कैमरा ही दिखाना है तो भाई लेट्स हैव कार्लसन्स कैमरा भाई, कम से कम. So we won't be able to see the Armageddon match between Vaishali wala, na? Because we don't have the cams there. Or will it be fine? I don't know actually. I'm really hoping कि फिर Armageddon होगा तो फिर किसी और बोर्ड पे हो ताकि we can see it. फिलहाल के लिए तो हम hoping कि हो ही ना. That would be the ideal case scenario. But it does look likely कि होगा. Okay, for the timing, they both have 5 minutes on the clock. Sahaj, by the way, Increment भी अभी नहीं आया. By the way, as we wait for this game, Olympiad आने वाला है अब. It's not far away because June आ गया. July, August, September. So it's 3 months away. ठीक है? Right. If you were Gukesh, और chat तुमसे पूछना चाहूंगा, if you were Gukesh, do you play the Olympiad? It's good for your team, yeah. It's good for the team, but it's not good for yourself, I feel, because like World Championship का मौका कितनी बार आता है, you know? So I feel like you should. I mean, you're also giving up your preparation. You're also doing all of that. I feel like it may not be the best. क्योंकि अगर आप खेलोगे भी ना तो भी आप अपनी best preparation नहीं खेल पाओगे, because you have to keep something for World Championship. So I feel like with that it may not be the best. That's but my maybe, personal opinion. I agree. I think preparation point of view, it will be difficult, but he has to play something. No, I think around that time. And kahin na kahin pe, if he plays the Olympiad, then that's great practice because could be on board 1 like last time, and he could face some incredible, you know, competition, and it would be great training. And with 2 months remaining after that for the World Championship, like he could analyze those games and learn a lot from that. No. He could, but I think it also gives away a lot of stuff to his opponent. Question is, Ding Liren खेलेगा क्या नहीं? Ding Liren खेलेगा क्या नहीं? That's another question, yeah.
डिपेंड्स चाइना खेल रहा है कि नहीं, उसमें भी डिपेंड करता है ना, वी डोंट नो दैट येट. तो Saj, what do you do? Job, study, or pursue professional chess? I'm trying to be a professional chess player, but it hasn't worked out very well. But yeah. भाई आई वुड से प्रोफेशनल जैसे आजकल 27 रेटिंग भी इनफ नहीं है फॉर द ओलंपियाड टीम. Exactly. Exactly. सो 2700 रेटिंग में आप चेन्नई में नंबर 4 पे आओगे. 4 पे भी कहाँ हो गए 4 है ना अब तो. भाई? तो There is 4 2750 है. Gukesh, Gukesh, I think Prag, हाँ, Vishi सर और क्या कहते हैं. विशी नहीं है, गुकेश, प्रग, अर्जुन, विदित. चेन्नई की बात कर रहा हूँ हाँ अच्छा, हाँ बस 4 है ना. चेन्नई मैं. क्यों? विदित चेन्नई चेन्नई में में क्यों? थोड़ी है. चेन्नई में मतलब? चेन्नई चेन्नई की बात कर हाँ रहा हूँ, बट तमिलनाडु. बट ओलंपियाड तो बुडापेस्ट में ना भाई, चारों आ जाएंगे खेलने. नहीं 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 नहीं, from that angle of course I understand, but I meant like अगर आप, I was trying to emphasize कि 2700 की रेटिंग में अगर आप if you're from चेन्नई और अगर आपकी रेटिंग 2700 है, हाँ then also it like it हाँ makes such a हाँ. big difference. Chad king e5 was the only move saving the pawn, and now I think c5 का time आ चुका है. She should play this move quickly. And time कितना है? 5 minutes to 2.5 minutes. I do feel यहाँ पे blunders हो सकते हैं purely because of the clock. Mm-hmm, 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 mm-hmm. mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Will Vaishali win this match? She can. She can. She has the bishop. Saj, I mean, that'll be Marcus amazing. जब Romania's वो capital, exactly, you're 100% right. भाई Romania capital is clearly, I mean, clearly it is like, a New York. I mean, इतना तो Mm-hmm. obvious होना चाहिए chat. It is Karachi. भाई कराची कहाँ से आ गया? इस्लामाबाद भी नहीं, कराची. Come on, bhai. Let's go King, oh, c5. I think Vishal. we're just heading into a draw now, no? King f4, king e2, king e5, king d3. King f4 में हम knight d5 थोड़ी ना मारोगे. But maybe c5 now. हाँ, c5 भी खेल सकते हो. I'm not sure who is playing for a win here. I assume it's black, no? रमेश बाबू ओपी कह रहे हैं भाई. रमेश बाबू ने तो क्या ही खेला है भाई, आज मजा आ गया यार. मैग्नस डाउन टू 2822.5, एग्जैक्टली व्हाट वी सेड. कारुआना और उनके बीच में 13 पॉइंट का डिफरेंस रह गया यार. Wow. Absolutely crazy. I'm sure on completion of the 10th round, the final winner will be Magnus Carlsen. Devajyoti, I do agree he is still the favorite to win the event, but it's a good start. It's a good start for Prag. Mm-hmm. Why doesn't Nihal play classical match? He did play, I think, the Sharjah Master or something. इतना अच्छा गया नहीं उसका, but I don't know कैसा गया actually, but it was not like amazing. He wasn't like in the top rankings. I remember seeing हाँ. something about that. Yeah. And he did play that event. Camera back. अरे nice. We have the camera for Vaishali. अरे बढ़िया भाई, ये बढ़िया हो गया है. क्या चंगा सी. बात है यार. Nice. ये बढ़िया. चंगा सी. And now we can see Vaishali chat. And you can see king d3 पे है. She has a passed pawn, but white also has one. तो बड़े ध्यान से खेलना है यहाँ पे कि कैसे, how does she confuse Anna Muzichuk, who is a stronger player on paper. This is so nice, na, Sahil bhai? Having this. Having what camera? Yeah, the camera, especially if this is heading into an armageddon. I feel like with the camera, it's going to be so much more like, so much nicer to watch, I think. I agree. Camera के साथ तो ज़्यादा मजा आएगा. What if Prag wins next 2 games? Then, I mean, he would cross like 2760. So he would be in world top like 7, 8. We'll have 3 people above 2760. Bhai. That is crazy. He wins next 2 games. Waiting for Levy's thumbnail. Bhai, ये होगा. Carlsen loses question mark. ऐसी होगा भाई, और क्या? I have seen that thumbnail so many times. You're absolutely right. और एंगल पे होगा ऐसे. Carlsen loses. Oh, knight this is check. Is she offering a repetition here? I think it might be the case. Hey, king f6, knight h4 then maybe. Time नहीं है ना यार लोगों के, मतलब किसी के पास भी ज़्यादा. But this could be a repetition, yaar, Sahaj. I think this is just a repetition, right? Let's see.
Why most teams like Spain? I mean, it's because Spain there are many events. That's why I remember the first time I also went abroad. It was actually in Spain. Okay, the second time I went outside, it was in Spain, and then there were so many open events that happened, you know, back to back. जैसे बुडापेस्ट में ना closed events बहुत होते हैं, but Spain में open events बहुत होते हैं. So that's why it's nice to go there to play chess. आपने बोला सेकंड टाइम आई वेंट आउट, आई लिटरली फेल्ट कि आप कह रहे हो सेकंड टाइम ही वेंट आउट इन लाइफ और इन द ईयर. नहीं, outside of India, I think. Outside of India is what I meant, yeah. क्योंकि कोविड के टाइम से तो मैं घर से ही साल में एक दो बार निकलता हूँ बाहर. Did Norway Chess exist before Carlsen? Yes, it did. It did. It absolutely did. Salve, you should make recaps. Yeah, पता है recaps का प्रॉब्लम क्या है? Recaps die out tomorrow. आज वीडियो हुई, रिकैप किया, tomorrow the video will stop working because the tournament is over. So मैं कंटेंट बनाऊंगा. मैं अभी तो सीक्रेट चैनल पे काम कर रहा हूँ. Once it is stable, then I will start saying, but I have some other ideas in mind, not this one. Recaps is not going to work. It will not grow a channel, I feel. ये हम लोग पता है साज भाई, it's a content strategy कि at the end US में all events finish around lunchtime. Really? Obviously ना, because यहाँ पे अगर रात को इंडिया में 1 बजे खत्म हो रहा है तो वहां पे दिन के 1 बज रहे हैं. अच्छा, हाँ, that's true. So people come back from school and college and whatever, then Levy recap डालता है and they watch it. It's immediately after the tournament. यहाँ पे it ends at 12 or 1 a.m. So by the time you can potentially even post the video, earlier से कितना पोस्ट करोगे? 12 p.m. करोगे अगले दिन, उससे पहले तो करोगे नहीं. तब तक लेवी वीडियो बना चुका, हिकारू बना चुका, ठीक है, 10 लोगों ने बना दी. So it's literally impossible to grow a channel with recaps in India purely because of that reason. By the way, H4 played and White is trying to push past pawns, so it's a race now, chat. It's a race to some extent. People are saying I've seen Sahil in YouTube Shorts. I think I have too. हाँ मतलब I have my own channel, मैंने किया है वहाँ पे, but I don't think videos में recaps में बनाऊंगा. I have some other ideas. I will do it soon. Soon. H5, come on, let's go. Push करो pawn, push करो. This is why I'm European citizen. नहीं, मैं यूरोप मैं रहता हूँ बुडापेस्ट में, but I'm not a citizen here. How are players selected in the event? आज तो मैं कहीं का भी सिटीजन नहीं हूँ. बंदे का पासपोर्ट गुम चुका है, बंदा वीराना है. अगर अभी बंदे को पूछ ले भाई कहाँ के, मेरा पुराना वाला पासपोर्ट है, थैंक गॉड मेरे पास में अभी भी पुराना वाला एज इन जो पहले वाला होता है, बट इट्स लाइक द न्यू वन इज नॉट हियर भाई. बट वो तो एक्सपायर हो गया ना. ओह, योर बैटरी. हाँ, मैं चेंज कर रहा हूँ. पर वो तो एक्सपायर हो गया ना पासपोर्ट. हाँ, बट फिर भी यू नो इट्स गुड टू शो कि हाँ ये है. इस मोमेंट पे सब चलता है. सही बात है. कोई पुलिस ऑफिसर आए उसको एक्सपायर्ड पासपोर्ट दिखाने में बड़ा अच्छा रहता है उसको, राइट? हाँ, एग्जैक्टली, यू हर्ड इट राइट. पाव भाजी कह रहे. अरे यार, मुंह में पानी आ गया यार. मेरा कैमरा ऑन होने वाला है चैट, शर्माओ मत. मैं अपने को कह रहा हूँ ये चीज. Is my camera on? Can we have full screen एक बार chat just to check? Oh, मैं सहज हो गया. That is awesome. मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा अभी भी. अरे यार, मैं 2 सेकंड के लिए GM हो गया था मैं यार 2 सेकंड के लिए. चलो बढ़िया है. आज के दिन में बहुत चमत्कार हो ना. प्रग ने कार्लसन को हरा दिया, मैं GM बन गया. I didn't say it. I didn't do it, Raju. By the way, ये pawn, you know, ये घोड़ा अटक, ये तो literally अब अटक गया ना. तो फोर्ट्रेस ही है ना. This cannot move. खेलोगे ना आप king e3 95 खेलोगे आप. Oh, that's the idea. तो king e3 king e6 95. आप king को टच नहीं कर सकते. king f3 जाओगे तो knight d7, king d6 जाओगे तो knight f7. But there are still tactics. For example, let's say king ऐसे नहीं है, वैसी बात नहीं है. हाँ, कंट्रोलिंग E5 नाउ, वो भी रोक दिया. निंजा राइट नहीं कह रहे Prag 1. यस, एग्जैक्टली. आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से चैट कर रहे हो ना. Vishali, by the way, won yesterday. So if she wins today, she's already in the tournament lead, and if she wins today as well, so she will be way ahead in the standings.
बहुत बढ़िया मौका है उनके पास. And she's already India number 2, Sahaj. We saw this yesterday. She's already Yep. India number 2. जलेबी जलेबी खाने का बड़ा मन कर रहा है यार, ये बात तो है. आई लव जलेबी. वॉचिंग फ्रॉम भैया. यार बेट पे बेट. वॉचिंग फ्रॉम कराची. अच्छा, आपका वेट नाम थोड़ा करते हैं सा. ना लोग ना, मतलब सही टाइम का वेट करते हैं. चैट एकदम मतलब तैयार रहती है एकदम, हर हर दिन शार्प रहती है एकदम. ये नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा है यार. इज दिस द कैपिटल ऑफ रोमानिया? हाँ, बट ये बंदा रोमानिया से नहीं है भाई. दैट्स द इशू. साहिल सर, आप करण लग रहे हो भाई. करण जौहर लगना इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट भाई. आई डोंट थिंक सो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट इन एनी वे. भाई करण नाम ही कुछ प्रॉब्लम है उसमें. But they are repeating moves, by the way. They have repeated moves, chat. And have they shaken hands? I think they have. Yep. They have Yeah, agreed to a they draw, have. chat. So that means we'll have Armageddon in just a few minutes. And Vaishali will be fighting with the black pieces. And she will have 10 minutes. And she will have what? 7 10 minutes. So, minutes. No, she will have no, she will have 10 minutes, and Anna Muzichuk will have 7. ऐसे होता ना भाई. Sorry. No, no, पक्का she's black will. black. Yeah, she's black. हाँ, Sorry, वही sorry, तो. sorry. That's where I mistake. We हाँ, made a mistake. हाँ. So Anna Muzichuk will have 10 minutes, and Vaishali will have 7 minutes. And of course, Yep. if Vaishali draws the game, then it's counted as a win for Vaishali. Yep. 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 So this is the final game remaining, chat. Armageddon में बड़ा मजा आएगा, कहीं जाना नहीं. Nakamura was laughing. He's always laughing भाई. Are you streaming for India or Norway? Neither, पवन भाई. अच्छा भाई, वो दोनों स्ट्रीमर, ये क्या है भाई? Magnus Carlsen starting भाई. He already won. संकेत भाई, he already won भाई. चिड़िया चुग गई खेत. आप नहीं, अभी नो, कल की बात कर रहा होगा शायद. भाई कल क्या, कल तो हिकारू के साथ है भाई. राइट, राइट, राइट. इस जीसीडी क्लासिकल रैपिड और ब्लिट्स. तो जीसीडी के दो इवेंट आ रहे हैं. वन इज क्लासिकल एंड वन इज रैपिड एंड ब्लिट्स. सो इट्स गोइंग टू बी बोथ. भाई क्या मस्त है यार. हाँ यार, अभी समय होना चाहिए था 5 मिनट के लिए ना. लाइक मस्त मोमेंट था यार. प्रग ने कार्लसन करा दिया तो. बिल्कुल, बिल्कुल. What a day. What a day. भाई साहिल का ये क्या है भाई. कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स गो. फाइनल गेम तो नीरज भाई स्टार्टिंग. से एक बार पूछ सकते हैं कि what is the update on Pia Cramling versus Juventus, because that game is I think is supposed to begin before. तो कितने टाइम में कोई ये काउंट कहीं कहीं पे हम चेक कर सकते हैं, या फिर when does this game begin? Because I feel like when this game is halfway like starting, फिर उसके साथ साथ वैशाली का गेम भी स्टार्ट हो जाएगा, right? Yeah, so I think Ninja Bhai can update us, especially कि वैशाली गेम में कितना टाइम है. I think that's also important कि कितनी देर में स्टार्ट होगा. Of course. And yeah, that's pretty much it. Cramling game starts in 5 minutes, and I'm assuming कि उसके थोड़ी देर बाद अपनी स्टार्ट हो जाएगी. So Vaishali was, you said 15-minute breaks in between, right? I would say like about 14 minutes or so, because if 1 minute पहले game खत्म हुआ. So yeah, I think like halfway through the first game, I think the second one will start. Yeah, yeah. Can we have full वो वाला with our cameras, Ninja भाई? यहाँ पे तो खाली कुर्सियां हैं. And Prag, yeah, leading the event. Caruana in second place, and surprisingly, Carlsen in 5th place in this event. That is a rare sight. Screenshot ले लो भाई लोग. बाद में कभी देखने को नहीं मिलेगा. समय जर्मनी में है. रियली? कहाँ पे जर्मनी में यार? AI क्या है ये देखो भाई. अनिंद्या जी, आप लगता है नो 2019 के बाद आज जागे. आई एम एक्चुअली फ्रॉम कराची. लोल, क्या बात कर रहे हो भाई. भाई डर लग रहा है मुझे. नहीं, 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 I feel like ये बेट है फिर से. इन बिटवीन यू कैन टीच अस बेसिक चेस. भाई बेसिक चेस पता है. एडवांस चेस सीखो भाई. बेसिक चेस क्या करना है. क्यों साहब भाई? I mean, if you have any chess related questions, you can always ask, especially during breaks, because यही तो time है where we can, Chill. talk about these things. If you have any questions, you can definitely ask. भाई समय को वॉइस नोट भेजूं कि प्लग ने हरा दिया, क्या पता रिप्लाई कर दे. Who knows? बिल्कुल. मेरे को मैं भेजता हूँ.
क्या पता भाई, अगर वेला होगा तो रिप्लाई कर देगा। नो, ही इज इन स्विट्जरलैंड राइट नाउ। मैंने भी उसकी एक वीडियो देखी थी। ही इज विद हिज पेरेंट्स। भाई स्विट्जरलैंड मुझे भी जाना है यार। अच्छा, बहुत यू हैवंट बीन? आप गए बहुत नहीं अभी तक? महंगा है भाई स्विट्जरलैंड। पता है द अरे फर्स्ट टाइम अगले अगले हाँ। साल ना, देयर इज एन इवेंट दैट्स हैपनिंग। इट्स लाइक इट्स बिटवीन लाइक फ्रेंच एंड स्विस बॉर्डर। तो एकदम फ्रांस में होता है वो, और वहाँ पे एक हम्म टूर्नामेंट होता है हर साल। एक्चुअली लास्ट ईयर पहला एडिशन था। वहाँ पे हम्म। चले जाना। जिनीवा इज लाइक 1 hour लाइक अवे फ्रॉम देयर। कहाँ पे क्या इट्स लोकेशन है? वेरी वेरी नाम भूल गया मैं आपको बाद में बता दूंगा। पर लेकिन वो एक टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ पे। अगले साल भी होगा, बिकॉज वो भाई ऑर्गेनाइजर स्विट्जरलैंड ने जाऊंगा बताया तो था। टूर्नामेंट थोड़ी खेलूंगा भाई। वो तो नहीं घूमने नहीं, वाली आप चीज। फ्रांस में जा सकते हो ना। फ्रांस में मतलब टूर्नामेंट खेल लेना, फिर उसके बाद आप स्विट्जरलैंड में यू कैन गो फॉर अ भाई वेकेशन। डायरेक्ट जर्मनी से तो डायरेक्ट चला जाऊंगा ना यार, डायरेक्ट स्विट्जरलैंड की टिकट है। फ्रांस से क्या करना है? हाँ, वो भी है, वो भी रुको है। मैं इसको बताऊं। भाई समय भाई सुना है यूरोप में घूम रहे हो भाई। भाई प्रग ने कार्लसन को क्लासिकल में हरा दिया, कुछ शब्द होंगे तो बताना भाई, मैं स्ट्रीम पे डाल दूंगा। भाई पूरी तरह आउटप्ले कर दिया भाई कार्लसन को प्रग ने, कंप्लीटली वाइट वॉश। भाई भेज दिया भाई समय को मैंने, अगर अगर बंदा होगा फ्री तो सुनेगा भाई। Yes, I think the game will be starting any second now. जो पिया क्रैमलिन वर्सेस जो इंजन है। लेवी और And अगार्ड, योर फेवरेट यूट्यूबर? विनोद भाई आस्किंग। sorry, विनोद भाई आस्किंग लेवी और अगार्ड, हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर? लेवी और आगार्ड? अगार्ड मेटर भाई, अगार्ड मेटर। अगार्ड मत और ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को लगा आप जेकब आगार्ड की बात कर रहे हो। अच्छा आई नहीं नहीं वाज नहीं। लाइक ये कैसा क्वेश्चन है? गुड। I watched a lot of Agad Mathur जब before Levy became famous. I would say still Levy. Levy just वो एक energy लाता है chess में, which is really really cool. And Agad Mathur is more chilled with, and I also like both. I mean I like both, but I think it's just a personal preference at the end of the day. आपके लिए क्या हम्म। है? आई थिंक आई वुड से लेवी प्योरली बिकॉज अगामेटर जब स्टार्ट किया था तब थोड़ा आसान था यूट्यूब, लाइक एट दैट पॉइंट इट वाज इजी। एंड आल्सो अगामेटर का कंटेंट इज गेम्स एंड लेवी इज अ बिट मोर एंटरटेनिंग, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, बट बोथ आर अमेजिंग ऑफ कोर्स। आई मीन I अगामेटर ने used to like his older videos है। जब वो I remember वो सोफे पे कुछ तो वो उसका हाँ उसका डॉग सो रहा होता था, and then he हाँ would be doing it. That was epic. हाँ। गिव समय नंबर, वी विल स्पैम हिम, ठीक है? फॉर एवरी 100 likes आई विल टेल यू वन डिजिट। ठीक है। चलो भाई लेट्स गो, एवरी 100 likes वन डिजिट आई विल रिवील। Agamemnon is niche and Levy is more funny. Yeah, Levy is more fun. Levy I can watch even without the chess content. वो चीज है. Is Bong Cloud Yes. a good opening? Excellent opening. I would say कि 10 on 10 and Anish Giri approved, Hikaru approved, Carlsen approved opening है तो yeah. The only opening better is the London system. उसके अलावा तो कोई भी नहीं है दुनिया में. Stuck in rapid at 1500. Any strategy to bump to 1700? Us rating पे, I mean puzzles, and I think you should try to do more openings. Like you should learn a little bit more opening theory. मेरे को किसी ने कुछ टाइम पहले बताया था कि chess.com पे ना एक 1900 के बाद एक बैरियर बन जाता है। Was it you? Just जिसने मुझे बताया था, like, or it was someone else, maybe I can't remember, but they said कि chess.com में rating improve करना is relatively easy, like when you're like 400 500, पर 1900 Hmm. के बाद एक barrier बन जाता है, and they said lots of people Hmm. feel this way. So I thought that's Hmm. pretty cool. So until you reach that barrier, I think you should just continue doing puzzles and just redo Hmm. your opening theory. When 1900 के बाद you can start getting a coach and all of those other things. Yep, yep, yep. Chad, by the way, we are some 80 likes away from the next diamond membership. तो भाई let's go chat, तुम्हारे हाथ में है. क्या India बात is है यार. set to propose Delhi as host in its bid for the World Championship. भाई दिल्ली में वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी तो क्या मजे है ना मेरे घर के पे. मैं लिटरली गाड़ी उबर करके जाऊंगा भाई वर्ल्ड But Delhi चैंपियनशिप में. क्यों? Why Delhi? आई डोंट नो व्हाई दिल्ली बट आई प्रेफर इट एक्चुअली, मतलब घर के पास ही है कैब लेके, तो आप भी यार लिटरली वहां पे. मैं यहाँ आ गया हूँ। हाँ चलो वो तो है. कोई नहीं, नवंबर के टाइम में मैं उस सहज टाइम पे फिर मैं घर चला जाऊंगा। ओलंपियाड आपके एक घर पे है और वर्ल्ड चैंपियनशिप एक घर पे, आपके हिसाब से ही चल बिल्कुल रहा है सब. बिल्कुल, अरे मैं तो घर चला जाऊंगा ना उस टाइम पे। I'll just हाँ. leave it. होपफुली मेरा पासपोर्ट मिल जाएगा मुझे तब तक। होपफुली।
उम्मीद पे साहिल दुनिया भाई कायम टैग है। कर दिया ट्विटर पे, इफ यू आर द बढ़िया दो भाई, मेरे को मैसेज भी कर दो डीएम अपना यूजर नेम भाई। आपका यूजर नेम, ट्विटर यूजर नेम क्या है भाई? मेरा यूजर नेम कंफर्म्ड नहीं, मैं उससे पूछा उद्धव यादव से। ओके। देन वुड बी नेशनल एम्बैरेसमेंट ड्यू टू लॉजिस्टिक इश्यूज। यार दो लोगों ने खेलना है, दो लोगों ने खेलना है। रुको, समय का मैसेज आया कुछ। So Vaishali's game is starting in 8 minutes. By the way, we just heard. जयेश भाई कहाँ गया पासवर्ड? इट्स अ भाई लॉन्ग समय का स्टोरी। मैसेज सुनना है क्या? हाँ सुनाओ। भाई समय उसको लिखा था समय नहीं नहीं नहीं, उसे देखा होगा हम स्ट्रीम पे भाई। नाइस, वो कुछ और अच्छा। भेज रहा है, उसे डिलीट कुछ और भेज रहा है, कुछ और भेज रहा है, कुछ और भेज रहा है। उसको ध्यान आया स्ट्रीम पे भाई। ओ अच्छा 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 अच्छा। नहीं मस्त था, नहीं नॉर्मली था, कुछ नथिंग क्रेजी, नॉर्मली था, हम्म। नथिंग क्रेजी। By the way, Sahad sir, recommend any book to learn chess? 50 Shades, or I mean, क्या बुक थी यार 50 साज भाई? Shades of Opening Theory. या दैट्स अ ग्रेट बुक। उनके Love it. ऑथर, ऑथर उनके पता नहीं कौन है मुझे, बट अरे यार ये बुक लिखते हैं भाई साज, 50 शेड्स ऑफ ओपनिंग, ओपनिंग थ्योरी। 25 शेड्स आप चलो बताओ, 25 शेड मैं बताता हूँ। ठीक है। या फिर श्रीनाथ लंदन भाई को ले लंदन लेते हैं। मेरी, लेकिन लंदन मेरी। यार श्रीनाथ भाई को ले लेते हैं, राकेश भाई को, निधि भाई को, 10 शेड्स ऑफ ईच हम ला लेते हैं बुक भाई, मस्त चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। that's a good plan. यही तो होता है कंटेंट। भाई समय भाई ने एक मैसेज भेजा है, चलो प्ले करते हैं भाई, रुको। सो मैंने लिखा था भाई, प्रग ने क्रश किया कार्लसन को, पूरा आउट प्ले उन्होंने कहा है। सुनाई दिया क्या? नहीं। ओके, समझ आया क्या? और भाई टियर लिस्ट समझा नहीं मैं। भाई जिसको समझना था वो समझ गया भाई। मुझे भी समझा दो यार, मुझे भी समझा दो। ऑफ कोर्स ही यार, ही इज जोकिंग, ही कार्लसन उसका दोस्त है समय का खुद लिटरली। बट इट्स हाँ। अमेजिंग यार, मतलब प्रग इज क्रेजी यार, मतलब पेल दिया यार, मतलब इट वाज फ्लॉलेस, फ्लॉलेस गेम, फ्लॉलेस मुझे गेम, अभी भी समझ क्लासिकल। नहीं मुझे अभी भी समझ नहीं आया, बट इट्स ओके, मैं बाद में पूछता हूँ भाई चैट समझाएगी आपसे। आपको। कोई नहीं, चैट समझा देगी, कोई नहीं कोई नहीं। वेंजुंजू गेम स्टार्टेड हो रहा है, वेंजुंजू की गेम देखते हैं अरे भाई। हाँ बिग लगाओ फैन ना ऑफ यार। वेंजुंजू, बिग फैन ऑफ वेंजुंजू। अरे ये तो खत्म होने को आ गई भाई। ड्रॉ भाई ड्रॉ। तो ब्लैक जीता, वेंजुंजू विंस। भाई लेकिन वेंजुंजू ओ कुर्सी पे क्यों नहीं है? ओ ओ ओ थैंक यू चैट, थैंक यू चैट। क्या समझ बात है, गए क्या भाई। क्या। हाँ आप समझ गया, मैं समझ गया। या सॉरी साज भाई, सो 50 शेड्स ऑफ चेस थ्योरी करते हैं या कुछ और करते हैं? 50 शेड्स ऑफ चेस, ठीक है? तो 10 शेड हो गए ओपनिंग के, 10 शेड हो गए मिडिल गेम के, 10 शेड हो गए एंड गेम के, 10 शेड हो गए टैक्टिक्स के, 10 शेड हो गए भाई। स्ट्रैटेजी। मैं तो कुछ और कह रहा था, बट ठीक है चलो, वो अपना अपना। I थोड़ा। feel like, पहले से I have become faster, but I feel like I'm still slacking so much. नहीं, maybe we can have like non chess advice also, it doesn't have to be only chess advice, no? Chess तो plus life advice। उसको And 50 shades of opening theory क्यों कह रहे हैं हम? नहीं, 50 शेड्स ऑफ चेस। ओके। सो बुक निकालते हैं एंड कॉपीराइट को, यार कैन वी डू, कोई कॉपीराइट एक्सपर्ट है क्या? कैन वी पुट आउट अ बुक 50 शेड्स ऑफ चेस, या फिर कुछ कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट होगा भाई, क्या लगता है? कर सकते हैं, क्यों नहीं। बिल्कुल। बताओ भाई, चैट बताओ यार, कैन वी पुट आउट अ बुक? मैं तो रेडी हूँ भाई। श्रीनाथ को पकड़ लेते हैं, यू मी श्रीनाथ राकेश और नीति भाई। 50 शेड्स ऑफ चेस, बढ़िया बुक लग रही ठीक है है भाई। डन। Oh, that's so cool. It's been the Indian National Conventions and Expo Center Yashobhumi in Dwarka on the Delhi भाई मैं Gurgaon border एड्रेस, is been considered as a likely venue. That's so cool. मैं ओ, ओ, मैं डिस्टेंस देखता हूँ अपने घर से भाई, पैरोडी इज प्रोटेक्टेड भाई, बट असली बुक है ना भाई, खाली पैरोडी नहीं है, असली हाँ बुक हाँ, है। उसमें असली एडवाइस भी होगी। ये भाई अब उन्होंने बोला ना कि एक एक चैप्टर मेरा होगा जिसमें असली एडवाइस होगी, फिर उसमें ये भी है यू नो आई एम अ लॉयर एंड इस पे कीपिंग कॉपीराइट आएगा, कॉन। सच में लॉयर हो गया भाई? क्या बात कर रहे हो भाई? पता है ये मस्त चीज है स्ट्रीमिंग की ना साहब, आई एम नॉट किडिंग। चैट में ना लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर सब होते हैं। सो एक बार लिटरली अच्छा। बीमार था, मुझे सुपर चैट आई कि भाई ये दवाई ले लो।
अच्छा, तो भाई इट्स सीरियसली क्रेजी. क्या हाँ, बात है. स्ट्रीमिंग के बेनिफिट लाइक दे एक्सटेंड बियॉन्ड द चेस फियर. आप बीमार हो, हम्म. आपको दवाई भी मिल जाती है भाई, घर बैठे बैठे ये दवाई खानी है. और मैंने सचिन भाई खाई पूछ भी. रहे व्हाट्स द टाइम कंट्रोल. देखो सचिन भाई, टाइम कंट्रोल इज व्हाइट के पास 10 मिनट होंगे और ब्लैक के पास 7 मिनट. और अगर मैच ड्रॉ होता है तो ब्लैक विंस टेक्निकली स्पीकिंग, क्योंकि व्हाइट को 3 मिनट का एडवांटेज है. दैट्स व्हाई या इस या गेम में तो ये गेम बेसिकली तो खत्म ही है, बिकॉज ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि ब्लैक ऑलरेडी एक पॉन अप है इस पोजीशन में. तो अगर ब्लैक ड्रॉ भी करता है तो इट्स स्टिल कंसिडर्ड एज अ विन. आई इसी को एम अ जज. आर्मागेडन कहते हैं. आई एम अ जज एंड इट वुड बी अ कॉपीराइट. भाई कौन से जज है आप, हाई कोर्ट के आई कि फील लाइक रियलिटी? अब लोग मजाक कर रहे हैं. नहीं, ये हाई कोर्ट के जज के है कि रियलिटी शो के जज? भाई बहुत डिपेंड लॉ करता है. देखो, लॉयर तो मैं मान लूंगा, जज नहीं मानता मैं. जजेस नहीं भाई ये देखते जी. बाबू की अदालत के जज हो गए यार. अरे पर जजेस वो थोड़ी देखेंगे. नहीं एक्चुअली ये पता है, बाप. सोच के I was gonna do a course on 4 night Spanish, and this हाँ. was one of the titles that I was actually really pushing for. एंड यूल बी फाइन फॉर $10,000. अरे क्या है भाई, श्रीनाथ भाई के लिए वो हाथ का महल है भाई, कोई चक्कर नहीं, श्रीनाथ भाई हैंडल कर लेंगे. हम्म. एक फोन घुमाएंगे गवर्नमेंट को, सारे कॉपीराइट निकल जाएंगे भाई. पता है श्रीनाथ का बर्थडे कब आता है? चैट बताओ भाई. चैट, श्रीनाथ का श्रीनाथ का बर्थडे बर्थडे आता है. किस दिन आता है? वेट होल्ड अप. चैट बताओ आपको पता है वेट. मुझे. हाँ बताओ, चैट बताओ, श्रीनाथ भाई का बर्थडे कब आता है? किसी को पता है? बताओ भाई, तुम बताओ. नहीं, आई कांट रिमेम्बर. उनके पास पैदाइशी राइट्स है भाई 50 शेड्स ऑफ बुक के. Oh, oh, I knew that. I knew that actually. नहीं Not नहीं शुभम भाई, मैंने भी वही सोचा था शुरुआत में, बट ही मीन्स इट इन अ डिफरेंट वे. 14th Feb एग्जैक्टली वैलेंटाइंस डे के दिन पैदा हुए हैं भाई वो. तो ये तो उनका जन्म से अधिकार है भाई, ये किताब लिखना इस टाइटल पे. भाई 700 से 100 कैसे है? हार हार के आई गेस, और कैसे? Guys, focus on the game. Yes, we are focusing on the game, but this game is pretty much, I think, over because, as I said, black is already black just needs a draw here. Or agar I mean, she's already a pawn up, if I'm not mistaken. And I think यहाँ पे जीतने के chances बिल्कुल कम है, unless black कोई time पे हार जाए तो, which is unbelievable. यार इट्स क्रेजी मैन, कितना मूड बढ़िया होता है जब इंडियन प्लेयर जीतता है. आई डोंट नो हाउ इट इज लिंक्ड, बट व्हेन एन इंडियन प्लेयर विंस, डिफीट्स सम स्ट्रांग प्लेयर और विंस लाइक अ टूर्नामेंट लाइक द कैंडिडेट्स, पूरा मूड ही चंगा हो जाता है यार. इट्स नाइस. 50 shades of control. बाय द वे गेम स्टार्ट्स. ओ बाय द वे, पराग 8 साल पहले इसी दिन आईएम बने थे. 8 साल पहले. कौन? टुडे. प्रग प्रग. अच्छा, इस दिन आयम बने थे. Yeah. क्या बात And by the way, this is not a draw anymore. Rook e6 and black is actually winning. So, Wenjunju है. by. That's what I meant. I think, okay, let's just go through it. Oh, chess game started. Oh, it started finally, bhai. Finally, let's go. Final game chat starting. Vaishali against Wenjunju. Armageddon. Sahaj bhai, please take us through the opening moves. Let's go. Okay, this is the Royal Lopez exchange. Castle Queen f6 on the board. अब d4 आएगा board पे guys. इसके बाद e takes d4 is forced, and then white plays bishop to g5 and then queen to d6. Come on, move after move after move. Let's go. अब क्या queen d4 या knight d4 साहिल भाई? भाई 90 को खेलना पड़ेगा if you want to win. Draw black के फेवर में. Yes, that is true. Okay, bishop e7. अभी ये position है बहुत equal. It's very strange to me कि must win situation में they are playing Royal Lopez exchange, an opening that has a reputation of being a draw variation, नहीं? But as you said यार कल कि Vaishali likes dynamic play. So maybe she saw the stream. She Good wants to point. keep it extremely strategic and the कुछ positional play पे जाओ जहां पे वैशाली को आउटप्ले किया जा सकता है. Tactically तो वैशाली is just a monster and she doesn't want to mess there at all. No, absolutely. That's really good observation. Bishop e7, knight e7 on the board. Ab knight c3 आएगा and Vaishali can just castle. I think she has gotten a very comfortable position out of the opening, right, Sahil bhai? Absolutely. Sare piece developed and everything looks awesome यार. Everything looks awesome. And I would say वैशाली जीत जाएगी तो बहुत बढ़िया दिन. दोनों भाई बहन जीत जाएंगे and they will be leading the tournament. Open में Prag lead कर रहा है, women से वैशाली lead कर रही है. I would say यार
एट वन पॉइंट इट इज जेन्युइनली पॉसिबल कि दोनों के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल है एंड दोनों चेन्नई में घर पे बैठे हैं, तो यू कुड एक्सक्लूड द एंटायर वर्ल्ड एंड द एंटायर यूनिवर्स एंड स्टिल लाइक एक छोटे से घर में दोनों मस्त. Legends. Both are legends. यार भाई एक सवाल है यार, इफ यू कुड एवर सी लाई डिटेक्टर चेस बिटवीन टू पीपल, कौन होंगे वो, किसके साथ आप देखना चाहोगे? आई एम वेरी क्यूरियस. ये वाला ऐसे आजकल बहुत बढ़िया चल रहा है वो वीडियो, ऐसे देखा था हमने डेविड हावल और कार्लसन का, इट वाज अमेजिंग. दैट्स प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट वीडियो आई एवर सीन. तो चल अगर किसी दो लोगों को देखना हो, सो हु वुड यू लाइक टू वॉच? Is it बताओ alive भाई. or dead? या दोनों? साहिल भाई. साज भाई ये क्या सवाल है भाई, अगर हम वो पोटेंशियली कर सकते हो तो मुर्दे को जिंदा थोड़ी करेंगे भाई I बाद में. mean, like in a पहले way कि आप उनको like if they can come back to life and they could do it, is that also considered? भाई Come on, बंदा मर that's a fair question. बंदा मर चुका है, पहले तो बोल सच की झूठ. But it's a fair question. Na? They also say like if you could have dinner with a chess player, alive or dead, who would it be? अब अगर वो if he's dead, then how can you have dinner with them? But people still say that, no? हाँ हाँ हाँ, In जो that way. कॉन्टेक्स्ट. विदित अनीश वुड बी अमेजिंग एक्चुअली. विशी आनंद एक ही इंसान है भाई, विशी आनंद दो लोगों का होगा ना. हिकारू Vishy मैग्नस, Radhakrishnan. आई थिंक मैग्नस का हो चुका. सो फिशर एंड कस्पारोव, ये देखो भाई, ये देखो इन बंदों को, वैशाली जी को. एक वैशाली है जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, एक वैशाली है जो फिशर की स्पेलिंग सही नहीं लिख रहे. I would say Karpov and Korchuna actually. That would be very fun. भाई मरे हुए लोगों का क्यों बोल रहे हो भाई, जिंदा लोगों को बताओ ना, जो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी दिन. It's still interesting, I think. Sahil bhai's soul left his body. I know. क्या क्या साहिल भाई, सोल लेफ्ट इज बर्न. मैं कहने वाला जस्ट लाइक फिशर, बट मैं नहीं बोलूंगा ऐसा क्योंकि मेरी भी जानी है एक दिन, हर किसी की जानी है एक बार. सो लाइफ इज हार्ड भाई, लाइफ इज हार्ड अनलेस यू आर इलॉन मस्क, तो कुछ तो रोबो बना लोगे अपना आप. बाय द वे क्रैमनिक जोस्टम, ये तो नहीं होने वाला. यार लोग यार मतलब मेरे सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया था करामने का कुछ we भी. are entering viewer territory, so let's remove the question and let's look at the position now. साज Yes. भाई क्या लग रहा है, ब्लैक का डबल पॉन है, व्हाइट के पास बढ़िया सेंटर है, लेकिन ब्लैक सॉलिड भी है. नाइट c6 आएगा, नाइट d4 आएगा, रुक e8 आएगा, पुटिंग प्रेशर ऑन दिस पॉन, एंड आई कैन ऑलवेज ब्रेक विद f6 एट द करेक्ट मोमेंट. सो क्या लग रहा है भाई, who's better and why? I feel like the position is still quite balanced. You know, black के पास like white के पास एक better pawn structure है क्योंकि कुछ भी doubled नहीं है. And black के पास on the other hand, black has a bishop, which is better when pawns are on both sides of the board. तो हल्का सा compensation है, which I think is good. Oh, maybe isn't there bishop b5 here? Yeah, bishop b5, bring the pawn That's such a towards the center. Bishop b5 just I think it immediately gives Vaishali a very good advantage here because knight b5 ab5 के बाद I think white is she misses it. She goes bishop e6, but I think she's still quite fine. Yep, also decent. नाइट को अटैक किया, घोड़े को हिलना पड़ेगा, घोड़े को हिलना पसंद नहीं है यार, बहुत धीरे चलता है बेचारा. साहिल वैसे अमन हैमिल्टन नहीं नहीं यार. मैं लाइट क्या, मैं वैसे ही सच बोल देता हूँ यार, मेरे को उसके लिए वो स्ट्रैप करने की जरूरत नहीं है. ये ना जो लोग ये ना सब लोग यही बोलते हैं, बता रहा हूँ साहिल भाई. Would you do नहीं a lie यार, detector with me? हाँ किसी के साथ भी हम रेडी, चलो मेरे को ठीक कोई है. स्ट्रेस नहीं है भाई. मतलब पता क्या, मैं ऐसी सच चीजें पहले डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली बोल ही देता हूँ भाई. सो आई हैव नो इश्यू डूइंग इट. इनडायरेक्टली तो सब बोल देते हैं बट लाइट डायरेक्टर में आपको डायरेक्टली बोलना होगा ना. हाँ वो तो, हाँ वो बोल दूंगा भाई, आई एम रेडी टू डू इट विद एनीबॉडी. Okay, so all Would pieces, be but it. this is okay. So white is hoping for a win in the end game, which I don't think exists, to be honest. Oh, rook d4, clever move. मारेंगे Oh, तो very fork. nice move, I think. You have to play king f2. Yeah. Maybe something like a5 just to like make your pawn structure look nice. b5 भी खेल सकते हो. b5 I think looks better. Yeah, b5 incoming with the idea of b4, and then the e4 pawn would be hanging, chat. That's why you have to do something here. Samay versus Levy would be amazing, but नहीं, but सुल्तान समय का खा जाएगा उसे. समय खा जाएगा उसे. I think. बट हाँ वो तो है, बट लेवी भी क्रेजी है यार, ऐसा नहीं है. नहीं, समय खा जाएगा उसे. That's come on यार, you can't. But imagine the views. Imagine the views, बाप रे. Views would be crazy, yeah. भाई मेरे जूम पे ऐसे हाथ क्यों लगा हुआ है भाई, रंजन भाई कुछ चक्कर है क्या? ये हाथ क्यों लगा हुआ है भाई? मैं तो किसी के लिए भी वोट नहीं किया. Seriously? What? देखो जूम पे मेरे यहाँ पे हाथ लगा हुआ है फॉर सम रीजन है जूम पे ऐसे.
Oh, that's because you raised your hand to speak. ये मैंने पहले कभी भाई लेसन में भी देखा हुआ मैंने पहले. कैसे अपना हाथ नीचे करूं भाई, मैं पॉलिटिकल हुई नहीं भाई। Mm-hmm. चलो भाई, हाथ रहेगा अभी थोड़ी देर। नहीं नहीं, वो the person who has who's like the moderator of the call, उनको नीचे करना होगा. ओके सो मोदी जी, आई मीन निरंजन भाई, फिलहाल के लिए बाय द वे नाइट C6 प्लेड। सो H3 G4 यहाँ पे खेल सकते हैं हम लोग। एंड नाइट के पास एक बहुत चंगा स्क्वायर है E5 पे, एंड सारे पॉन रोक दिए भाई। आई थिंक ब्लैक शुड बी बेटर हियर। नाइट टू E5 वो तो सिंपल है यार. यार दिस इज आप सिंपल क्या ड्रॉ. डीजे बनाते थे क्या लाइफ में यार? मैं हाँ। actually, funny that you mention it, I'm actually trying to learn that. भाई Not a DJ, but the music, like to produce music. I'm बहुत actually trying to. कर रहे हो भाई, लग रहा है ट्यून I'm पकड़ actually रहे हो trying यार। to learn that. Yeah. नाइस। No, I like doing it. भाई It's a lot of खुद fun. से ट्राई किया है कि किसी कोई बोल रहा है ट्राई करने के लिए? मेरा बहुत एक डिफरेंस। फ्रेंड भी है. नहीं नहीं, मेरा एक फ्रेंड है who is a music producer and he's helping me. अरे भाई भाई लॉन्च कर दो यार मुझे भी कहीं। बिल्कुल. आप अगर गाना गाओगे तो अगर मेरे तो गाने पे. हमारी वॉचिंग 5 की रह जाएगी, सो लेट्स नॉट डू दैट। बाय द वे C6 प्लेड, कंट्रोलिंग D5 वेरी इंपॉर्टेंट, एंड Sahaj वेरी कंफर्टेबल फॉर वैशाली हियर। I can't imagine her losing this. King आएगा D6 पे बैठ जाएगा at some point after the rook 7 traded off. The Neither knight can I. is Yeah. knight is C6 के untouchable. बाद there is no knight D5 and there is no like weaknesses in black's position. I feel like Yeah, everything is completely fine, yeah, stable. yeah, yeah. Why don't you guys play chess live stream? भाई लाइव स्ट्रीम तो है ही, और चेस ये लोग खेल रहे हैं। हमने डिवाइड एंड कॉन्कर कहने वाला था, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करी हुई है भाई। वो लोग खेलेंगे, हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे भाई। H5 trying to break the structure here? Question mark Mhm. though. I'm not sure it's a question mark though. It's very logical. White can have rook D1, but okay, rook D2 है हमारे पास, ठीक है। Okay, Vishali looking very confident. Anna Muzichuk is a very strong player, chat. Mm-hmm. Chat 50 like pending a chat for the membership. Let's go. G5. So now if you take, then bishop takes and E4 will be weak. If you don't take, then the king is stopped. You cannot move any further, and ये weakness हमेशा के लिए fix हो चुकी है. Mm-hmm. Oh, she takes. She wants the Takes king and का now रास्ता. bishop takes G6 and I think now king F4. Yeah, मतलब कहते हैं king को active रखना चाहिए end game में. बिल्कुल That's भाई. a good way to do that. Maybe you can go something like rook D1 and C4 just to like materialize on like equal क्या कहते हैं उसको, just liquidate on the queen side ताकि वो double pawn मेरा चला जाए तो उसके बाद I'm happy. Wish Torrent Mukesh play next. यार अगला मुकेश का मैच आई थिंक इट्स सो इसके बाद हम बुलेट चेस चैंपियनशिप कवर करेंगे वहां पे। आई थिंक गुकेश इज नॉट देयर। उसके बाद है हमारा ग्रैंड चेस टूर रोमानिया क्लासिक। So that's the event where Gukesh will be playing. That's in, I think, the last week of June. So exactly, let's say 25 days from now, Gukesh plays, and there'll be Prag, there'll be Caruana, फिर वो सारे नेपो फिरूजा, सारे वही कैंडिडेट्स के प्लेयर्स होंगे। सो सब बदला लेने की कोशिश करेंगे, अगेंस्ट गुकेश, फॉर डिफीटिंग देम इन द कैंडिडेट्स। बिल्कुल बिल्कुल, तो बनता भी है तो. Oh, king e6. So she has allowed knight g6 now. But okay, I don't think that makes a big difference. क्योंकि अगर वो knight g6 मार भी देती है तो knight g6 के बाद black का king e5 पे आ जाएगा. And that's an easy way to equalize. साज भाई, डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और मेरे टाइटल के इनिशियल सेम है? वाओ, नहीं ना? आप कैसे सोचते हो ये चीजें? भाई चैट में किसी ने लिखा था यार। अच्छा, इससे आइडिया लगा मुझे। I was thinking of आपको वो वाला मीम पता है क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? इसलिए नहीं हो रही पढ़ाई. यार ये तो ड्रॉ ही है यार, ये तो ड्रॉ ही है। नाइट चेक चेक g4 चेक यार, चेक, नाइट e5 हो गया ड्रॉ. बस चेक चेक चेक। एंड वैशाली विल विन द मैच अगेंस्ट आना मुजिचुक। आई डोंट सी एनी प्ले व्हाटसोएवर हियर. Absolutely. And also, just to give a quick update, the match between Pia Kramling and Ju Wenjun also ended in a draw. So that means Ju Wenjun technically defeated
And Kramnik Pia in Kramnik their was so match. close. Yeah, one move away, by the way. And One move away. Venice is going to play. उसके बाद जो अगला इवेंट है, that is Rapid and Blitz Grand Chess Tour, that is in Zagreb, I think. तो वो वाले में विदित खेलेगा, and there'll be Gukesh as well. So Prag निकल जाएगा, गुकेश विदित आ जाएगा. एंड कार्लसन भी खेल रहा है वो वाला, तो वही बड़ा मजा आया. कार्लसन अगेंस्ट विदित, कार्लसन अगेंस्ट गुकेश. That'll be crazy. By the way, A4 played. Honestly, now you can even trade rooks and just go for Rook C4. D1, Knight D1 and just C4. Yeah, game खत्म. Yeah, this should be pretty इसके easy. बाद अब I think black ही खेल सकता है यहाँ पे. नहीं? Yep. Black seems to be better because king का सस्ता है यहाँ पे आने के लिए. So वैशाली को थोड़ा टाइम का ध्यान रखना चाहिए because she has 1.5 minutes on her clock, but there is no increment. I mean, you do get increment, but it's only 1 second, which is not a lot. She's still giving these checks. अनीश भी होगा वहां पे, अनीश भी होगा जागरेब में. सो विदित भी होगा, अनीश भी होगा. आई थिंक ये साथ में प्लान करते हैं, है ना? अनीश भाई तू खेल रहा है क्या? मैं भी खेल रहा हूँ भाई. ठीक है भाई, मैं भी आ रहा हूँ. चलो भाई, आज का दिन काफी सेटिस्फाइंग था. अंदर की रूह को थोड़ा चैन मिला कि यार अपना प्रग जीत गया. एंड कल अब हिकारू को बेलना है यार. भाई मजा आ गया. टाइम, यस यू आर राइट, टाइम थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है. 42 सेकेंड्स. अरे कोई स्ट्रेस नहीं है यार, 2 सेकंड पे भी कर लेंगे यार, कोई स्ट्रेस नहीं, आराम से ड्रॉ हो 2 सेकंड जाएगा. पे नहीं कर लेंगे. 2 कर सेकंड पे लेंगे कोई नहीं यार, कर ले, कुछ नहीं कर लेंगे 2 कर सेकंड लेंगे पे. यार, कर लेंगे यार, कर लेंगे. रुके देखो आ गया C4 रुके. बढ़िया. अच्छा C4 बढ़िया चाल है. हाँ, ओ रुक कहाँ जाएगा भाई? रुक D7. हाँ, रुक H7 चेक. किंग D6. कुछ नहीं हो रहा उससे. रुक H6. नहीं, रुक H6 पे नाइट G4 चेक है भाई. रुक H6 पे नाइट G4 चेक. ये तो नीचे खत्म हो जाएगी भाई. ओ किंग C5 आ रहा है भाई. दिस इज कमिंग क्लोजर टू अ बैक विन नाउ. नहीं, दिस इज गुड, दिस इज गुड. रुक H8 खेलना आना के लिए फोर्स्ड है. बाय द वे, रुक D7 इज द ओनली मूव. ओनली मूव और इट्स लॉस्ट. 47 seconds, but I think she is definitely in time now. She's playing a bit faster now, so this is good. इवेंट गुकेश वाला क्लासिकल या रैपिड? गुकेश दोनों खेल रहा है. सो ही इज प्लेइंग क्लासिकल फर्स्ट एंड देन रैपिड एंड ब्लिस. तो तीनों देखने को मिलेंगे हमें. सो गुकेश का पूरा वो टेस्ट हो जाएगा भाई, बिकॉज क्लासिकल ही कैन रैपिड ब्लिस वी आर नॉट सो वरीड बिकॉज इट्स नॉट हिज टाइप ऑफ टाइम कंट्रोल, बट क्लासिकल में तो वी वांट हिम टू प्ले वेल. दैट्स सच एन इंपॉर्टेंट इवेंट. Okay, now it's an easy draw. Do you think she will play C5 with the Mati khelo na? Knight F7, Knight F3 check, Knight E5, just keep it. Okay, don't spend too much time, just play fast. यार मेरा पेन कहाँ है? हाँ मिल गया. आपका क्या है? पेन ढूंढ रहा था भाई. क्यों? कुछ पॉइंट लिखना था भाई, इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो. एनीवेज, सो नाइट F4 बाय द वे, लेट्स गो. नाइट E4, नाइट F4. खत्म. King D4, Knight F3, and I think they can just agree for a draw. क्योंकि एक कोई weakness नहीं है black के camp पे. Nothing you can do here. मतलब flag कर सकते हो, पर लेकिन अब खत्म. इसीलिए फिनिश 1 सेकंड का increment is ओवर. important. क्या कह रहे हो? खत्म, फिनिश ओवर. खत्म. Easy. चैट बाय द वे, यार प्रेडिक्शन बताओ यार, कल के लिए हिकारू से क्या होगा यार? डू यू थिंक प्रग विल विन टुमारो? ड्रॉ या हिकारू विन? ड्रॉ तो होता ही नहीं है. सो डस प्रग विन और डस हिकारू विन? कम ऑन चैट. Does Magnus still have chance of winning the tournament? Yes, of course he does. Of course he does. भी 3 ही राउंड हुए हैं अभी. I think there's 5 more remaining. So 7 more remaining. 7 more remaining. Sorry, 7 more remaining. B5, good move, exchanging pawns. Okay, knight D7, yeah, simple move. Knight C5 भी आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना वाइट को. Magnus will bounce back. Prag जीतेगा कह रहे हैं against Hikaru. Likes are not. Abhishek is saying the likes are completed. If you want to quickly do the 2462 bhai, 2462 still remaining, 38 likes. Oh. Okay, C5. Okay, king E5 now. Oh, king C4 bhi actually.
E4 this मर रहा है is ना अब तो. हाँ, this is turning into a race to be honest, and draw ही होगा तब भी. मैग्नस किसके साथ है देखना पड़ेगा यार. Who's Magnus playing? No, this is this winning for her? Yeah, is this a draw? Should be a draw, Vaishali's no? on 1 second, यार. What? She's on 4 seconds. भाई खेलो यार, ड्रॉ कर लो जल्दी से यार. पॉन मारो आखिरी उसका, खत्म करो बात. She has 4 seconds. A5. अगर वो इसका एक pawn बच जाता, then it's counted as a draw, right? ओ नाइट विसेस फोक था ना. अरे फोक क्यों नहीं लिया? फोक पे मार देने का था पॉन. ओ 1 सेकंड भाई, मारो 1 पॉन. second. वो pawn मार भी देंगे तो भी it's technically, legally speaking, it's winning. नहीं, हाउस विनिंग. पॉन मार दिया तो कैसे विनिंग है भाई? She's actually trying to flag her in a no TV game. dude? This is crazy. If Vaishali loses Actually, this, I will she's lose. actually flagging her यार. ये सब हमें TT में देख, मतलब टाइटल ट्यूजडे में देखने को मिलता है. Over the board कभी नहीं देख पाते हम. I will lose my mind if she loses this on time. A6, okay. 94, 94. Okay, knight b8, knight b8, a7. Okay, Knight it's F3. over. It's over. It's over. Knight b8. Knight b8 is a draw immediately. मार दो मार दो मार दो, बढ़िया. F3 now and it's over. बच गए बच गए भाई, बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए. चलो, it's a draw and Vaishali wins the match against Anna Muzichuk. What a brilliant game. So both Vaishali and Prag win their respective matches. निरंजन भाई, एक बार स्टैंडिंग्स दिखा दो दोनों की, ओपन एंड वुमेन सेक्शन की, ताकि हम देख पाए कैसे दोनों brother and sister are on top. So let's go and have the standings. And there is Prag on top, above Caruana, above Hikaru, above Firouzja, above Carlsen, above Ding. What a brilliant start to the Norway Chess tournament for Prag. So एक win and एक हारे भी Ding से, but I think he came back spectacularly. Classical जीतने का benefit है सहज, I think. Yeah, definitely. Classical का एक, I mean, Fabi के साथ भी it's the same thing. It's just one win in the classical makes all the difference. And it's the same we can see in the women's section as well. Vaishali ka ek win, in the classical has just completely turned it upside down, which was against Humpy G yesterday. Yep, and Vaishali on top as well, and Humpy in 5th place. So looking forward to her comeback as well. Sahaj, this was an amazing day. Prag defeated Magnus Carlsen. इससे better हम कुछ expect नहीं कर सकते थे. Dream scenario, classical में ही हराया for the first time in his life, and this is a game to remember because completely outplay किया उन्होंने. Absolutely, yeah. I mean, and that too in the Sicilian Khan variation. Let's not forget that. Yeah. So I feel like it was a fantastic day for all of us, and let's hope Prag keeps his momentum. Sahaj bhai कुछ भी बोलो ना, absolutely. भाई Sahaj bhai मस्त है यार. Why? That's my go-to word. What can I say? बिल्कुल मेरा go-to word भाई है. I don't know why. Anyways, आप बोलते so आप thanks बोलते a lot बिल्कुल. chat for joining today. मेरा कैमरा क्यों अटक गया है? हाँ, absolutely chat. Thanks a lot, chat. We will see you tomorrow. Maggie counter is 55 and the real Maggie Carlsen counter is 5th place. So we'll see you tomorrow 8:30 p.m. Indian Standard Time with Praggnanandhaa against Hikaru Nakamura, and it's going to be fire on the board because today Prag has literally lit the entire board, an entire nation on fire by defeating Magnus Carlsen. So see you tomorrow, chat. Thanks a lot, Sahaj bhai, for joining. Thanks a lot, Niri bhai, for the amazing broadcast on point. And we'll see you tomorrow. Take care. Good night. See you, chat. Bye-bye.